बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी। राजी दिल तो रजामंदम क्यों नहीं, नई टापी पिल गाने लिखे ये शऊर भाई, आज है बागी इसको कहते हम गुरूर नहीं, दिले मगरूर तू भी खूब तो आराम देना सूद फिर, I'm just a text away, इतना भी दूर नहीं, feels like yesterday, सच का सबूत नहीं, तू ही सवाल मेरा तू ही है उरूज, ए लोगों से पूछे कलम लिखता झूठ नहीं, गम देकर फिर दिला से कैसे, मुंह पे तसल्लियां तो दुनिया में तमाशे कैसे, हम आज भी कहते ना कोई रकीब ना हरीफ, हम थे गरीब न जाने काटी हैं वो रातें कैसे, कलम छोड़ या कलम तोड़ा वजन तोल, नहीं हजम शोर ये हजम खोज, तू सुरंग खोद तराजू ही नहीं जो तोलेगा ये डजन बोल, तू रकम सोच इन लफ्जों की आजा जख्म तोल, ए इंसान भी क्या चीज है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है, इंसान भी क्या चीज है, झूठ की सजा नहीं तो तोहमतें लगाने पे यार ढील है, तू जैसे रहमत तू ही हूर तू ही नूर कोई नूर, तू ही साया तू ही धूप तू फितूर ये फतूर, तू इतनी खूबसूरत के मैं लिखने पे मजबूर, बादल सिराना क्योंकि दूर तूने तो आना नहीं, खुद कुछ जमाना ये एक गाना कोई फसाना नहीं, लिख दे अफसाने तुझ पे लेकिन आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, आज फिर तू एक गुमान, आज फिर तू शायरी, सोचा था तू आएगी तोड़। Hello everyone, welcome to the stream. We are live on YouTube watch partying Gen.G versus PRX VCT kickoff finals. You jump over the showstopper. Yeah, that's what I would Just like, whoa, whoops, sorry, I'm good. Monyet's coming. Like that, just Chalo. jump over it. Mario jump in. Now it's a really interesting All interview. set. We mentioned this a bit yesterday. Alex said in his interview before that देखो भाई, लग जीतेंगे तो वेजी भाई, ठीक है? अरे भाई, वेजी भाई की तबीयत ठीक होगी उतना ही बहुत है, अभी जीतने की बात कल से सोचेंगे। He used to study everything they did, so I imagine he's going to be studying everything that they've been doing. काश एक बीन बैग या सोफा कुछ होता मेरे पास, उस पे बैठ के वॉच पार्टी करता, कितना मजा आता है यार। seems to have found a good balance with this team of some level of kind of that static क्राउड जैसे discipline, करता था ना Korean पहले। style, some good वेजी भाई तबीयत execution, but कैसी they है? seem मैंने a भाई little ठीक more हो गई free-flowing काफी। as well. ओके Like, तन्मय, there's a lot of वेलकम टू द moments स्ट्रीम, where it हैप्पी seems संडे टू like यू they're टू, pretty good off the अपूर्व cuff, मिश्रा, and मार्क, that's वेलकम maybe टू द just स्ट्रीम because, एवरीवन। you know, they haven't had that much time with बस solo, अब थोड़ा सा they have थोड़ी to kind of सर्दी rely है on their और own individual skills, बाकी those वो kind of things, but वीकनेस है when तो थोड़ी against स्ट्रेंथ आ Messi, जाए, वापस so तो हो जाएगा far, सब कुछ Gen.G has been पहले really, जैसा। really good, and it's been on the backs of players like Texture, like Karan. Laki has had a couple great clutch moments as well. So, you know, these players have all been there, done that for the most part, except for a couple new ones. And therefore, you can kind of get down and dirty with that PRX style, and I think they're going to hang very, very well, and that's something that PRX has to be concerned about. Yeah, I think they do. Now, just when we were looking at our talent predictions, Kilio said this, like nothing has happened the way it should have happened, and I completely agree. A lot of our predictions were actually, you know, there were serious predictions, and a lot of teams have surprised us, and this is actually very different right now. Today's prediction, we're actually split between PRX and Gen.G, and this is very different than the very first time these two teams faced off. Yeah, it definitely does not feel the same way. It feels like anything can happen right now because we could do all of our analysis. We can base all of our predictions based off of games that we've seen before in the past. Yesterday but once I you was in get down hospital, into that serious server, fever. once you get on that stage playing with, you know, a whole crowd watching Yesterday you, did I stream? feeling everything Yes, that's yes, I happening did. at once. I feel sad. It's okay राहुल भाई, it's all right. कल Everything is DRX को different, and I think Solo had a को really बुरा good point पेला about जिन हाँ उन्होंने Karan's थ्रो भी किया confidence बाइंड as वाला well, मैच तो so, यार। you know, राहुल भाई कैसी है PRX तबीयत has आपकी? to be the मेरे right को मुझे भी mindset, सीरियस and हो they गया, gotta feel good, they मैं gotta मुझे भी feel फीवर हो ready, गया था, and, well, if not, सीरियस they're a नहीं little था bit बट shaky. फीवर हो गया था मुझे भी, Let's ठीक see हो what गया हूँ लेकिन happens, right? Yeah, कैसे हो आप? I think we all don't know. This is even split. I do want to chat with you on your भाई prediction for 5 Gen.G मैप after this, but I hear बेस्ट the ऑफ 5 है players ना? are अरे ready आपको to enter हाँ the हो गया stage. था So यार, let's मुझे see भी who's तो gonna take their shot at getting इसीलिए तो closer मैंने to परसों champions स्ट्रीम नहीं किया था जब qualifications. Is फनाटिक it का gonna मैच be था, Gen.G तभी तो हम or वॉच पार्टी PRX? डिस्कॉर्ड पे कर रहे थे
और मैं इतने दिन से खेल भी तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फीवर होने के 1-2 दिन पहले से मुझे फ़ील होने लग गया था कि बस मेरे को अब फीवर होने वाला है। याद है 3 दिन पहले वाली स्ट्रीम पे जब भैया आए थे खाना बनाने, तो मैं उनको बोल रहा था कि भैया मुझे लग रहा है फीवर होने वाला है। भैया भी हंस रहे, कह रहे फीवर है, बोल के गया है क्या रास्ते में वो आ रहा हूँ। मैंने बोला भाई अब इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि समझ आ जाता है भाई कि बीमार होने वाला हूँ। बॉडी साइन, बॉडी थोड़ा सा इंडिकेट कर देती है ना भाई। अब डिस्कॉर्ड पे आया था मैं, हाँ मुझे पता है आप आए थे डिस्कॉर्ड पे। चलो स्ट्रीम लाइक कर दो और अपन आज का डब्ल्यू गेमिंग स्टार्ट करते हैं। मैं डिस्कॉर्ड वगैरह सब जगह मैसेज कर देता हूँ कि आने से पहले पता चल जाता है अब ठीक हो रहा मैं। हाँ मतलब अगर पहले से ही वो थोड़ी सी मतलब आपकी बॉडी में वीकनेस और बॉडी पेन वगैरह हो जाता है ना, तो पता लग जाता है ना कि हाँ ये फीवर के सिम्टम्स आ गए। And we just lost because he जो just भी diffused बोलो with the 200 IQ always W gaming, so I think it doesn't matter for us. मेरा भी गले में इशू है कुछ, पर I think they're कुछ खा looking really नहीं पा strong with रहा। the new member. हाँ मैं भी ज़्यादा नहीं खा Player पा that रहा, I मतलब watch थोड़ा out थोड़ा ही for खा the रहा most हूँ, in वही Gen.G is दिक्कत हो रही है। Texture. Because he play really well and he show us that his duelist is really crazy. I mean, like on fire. So, yeah. Even though we play small number of games, but we reach grand final means we still one of the strongest team. Hope we get better soon. Yes I'm sir. really excited for Hello Rahul bhai, welcome. Hello Rohit Sharma, welcome to the stream. For what we can कैसे हो show रोहित to you guys भाई? in Madrid, and I think I hope you guys just keep supporting PRX all the time until we can bring trophy for this year. 안녕하세요. 젠지에서 활동 중인 메테오 김태호입니다. 1경기 끝나고 이제 2경기 들어가기 전에는 진짜 한 걸음 남았다 मैं 얘들아 WatchParty 이런 का सब 얘기 कुछ 많이 बराबर किया है 오갔고 ना। 두 번째 맵에서 로터스를 했는데 저희가 세계에서 가장 잘한다고 자부할 수 있고 스크림 때 또 성적이 좋았어가지고 연습해온 대로 했던 것 같습니다. 썸띵 선수 Hello Jugal bhai, good morning. 가장 견제되는 것 같고 항상 썸띵 선수의 플레이를 보고 있으면은 감탄밖에 나오지 않아서 썸띵 선수만 조심한다면 저희가 충분히 이길 거라고 생각합니다. 단 한 경기 결승전만을 남기고 있는데 페이퍼렉스를 이기게 되면 킥오프 우승에다가 그리고 1시드로 진출하는 걸로 알고 있는데 그 점도 저희에겐 유리하게 작용할 것 같아서 페이퍼렉스를 꼭 이기고 저희가 마드리드에 1시드로 올라가겠습니다. The defending Kings of Pacific are looking to retain their sovereignty. Please welcome their captain, Forsaken. The master of mind games, a mind freak. The Sultan of Clutch Dubai. The king of flick shots, something. And the final piece of this chaotic puzzle, Moniette. They are PRX. मैप V2 हो गया, V2 नहीं हुआ है, अब होगा शायद। फाइनल देना तो थोड़ा अभी स्टार्ट होने में ये भी थोड़ी प्री क्या बोलते हैं इसको, प्री सेरेमनी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज तो फिर समथिंग को सपोर्ट करोगे क्या जी भाई? आईपीएल का कैमरा मैंने इधर कैसे आ गया? एक पुच्ची दे देते तो मैं मेंबरशिप ले लेता। नहीं। थॉमस भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। PRX विंस, पता नहीं यार, क्योंकि मोनिया उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है भाई जितना जिंग डालता था ना, तो बाकी प्लेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ रहा है ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैचेस क्लोज भी जा रहे हैं PRX के, उतना कन्विंसिंगली नहीं जीत रही पे जितना पहले करती थी। तो मोनिया खेलेगा तो इजीली जीत जाएगी, बाकी पता नहीं यार। Gen.G भी अच्छा खेल रही है, गेम है भाई, गेम में पता नहीं लगता यार, कोई भी जीत जाता है। सब लोग इक्वली स्किल्ड है, किसी दिन आपका दिन चल गया, किसी दिन आपके IGL ने कॉल दे दी बढ़िया, और किसी दिन आपके IGL की किस्मत चल रही है, वो जो बोल रहा है सब सही हो रहा है, तो आप जीत भी जाओ। आज 5 मैच होंगे, यस बेस्ट ऑफ 5।
Race to 3. Whoever wins 3 maps first will take the series. The pillar of Gen.G Meteor, leading the team there, IGL and Captain Munchkin. Opening the ceremony. highlight maker, Lakia, and the ace up their sleeve, वैसे आप जिंक्स ना कर देना. Please अरे कुछ नहीं होता है भाई. जिंक्स Gen.G. जी का एग्जांपल दे दिया आईजीएल वाला. भाई थ्रोमोस्टेट टॉप जी कौन है? कौन है मतलब क्या पता? इंसान है भाई. अभी कोई मुझे आके पूछेगा आपकी चैट में डेविल है, वो कौन है? कौन है क्या पता भाई. Monia told me yesterday that he was just supporting his team. But you can't play support while playing Raze, no? Raze is super explosive and aggressive agent. You need to have that impact. Maybe because they were playing triple duelist, so he might have played support Raze. But yeah, on Ascent also he was not really performing well because that time he was playing solo duelist. I don't know. Till they win, we can't point out many mistakes. The moment they start losing, all of it, comes into place that, oh my god, Monia made this mistake. Monia could have done that. Monia could have done that. आज टेक्सचर सबकी गुस्सी भरेगा. आज 5 मैच होंगे. मैच तो एक ही होगा, मैप 5 होंगे. मेरी भाई चाइनीज प्लेयर को दिखता. ये कॉलेज स्टूडेंट्स ना इंटरनेट पे बैठ के ना अपने आप को डैंग समझने लग गए. मुझे लगता है आज Gen.G जीतेगी. कोई भी जीत सकता है. आई एम सो बैड. हाँ, आई एम सो बैड भी लिख दिया, उसका इमोजी डाल दी भाई. एब्सोल्यूट Gen.G. एवरेज Gen.G भाई, एवरेज Gen.G. कॉलेज में बैक लगेगी ना तब पता चलेगा कौन बैड है कौन नहीं. थैंक यू राहुल फॉर द सपोर्ट. Gen.G बोल दिया तो आप तो हो ही बिल्कुल Gen.G हो भाई. As PRX and Gen.G go through their Thank you for the membership, Rahul bhai. Wonder about Breeze. Gen.G supporting Gen.G. Off between these two teams last time, and it was really close. It was close, but it did favor जुगल भाई birth year कौन सा है? want to think twice about playing that same map again, but then again, बैग कैसे लगेगी? after कम्युनिकेशन seeing डिजाइन पड़ everything रहा. play out, we've seen Gen.G's improvements all across the board. जुगल भाई कौन सा बर्थ ईयर है आपका? 2000 के बाद वाला है तो मत ही बताना, क्योंकि 2000 से बाद वालों को मैं सीरियसली नहीं लेता भाई. जेन अल्फा जेन एक्स कुछ में आ गए ना अब तो. कल इंग्लिश का बोर्ड है. आ गई मेरी मेंबरशिप. लेट्स गो. So, kind of curious if that's something that Gen.G is going to lean into. They were able to get over DRX. It was an overtime, a map that DRX has widely been very good on Bind. Talked about it yesterday. 2000 के बाद वाले अपना बर्थ ईयर ना बताएं, उनको मैं सीरियसली नहीं लेता. 2007 Again, slightly different roster, but it is what it is. So my eyes are really on 2007 भाई, ये कोई बर्थ ईयर होता है क्या भाई? Oh yeah. मैं तो 2007 को तो ये से काउंट करता कि उस साल कोई पिक्चर रिलीज हुई थी भाई. बस उसके अलावा कोई काम नहीं आता मेरा 2007 का. 2007 बर्थ ईयर भी होता है क्या? हेलो जी भाई, आज आई एम फीलिंग नमन इन 10. It happens on Ascent as well. So interestingly enough, that Gen.G picks it against PRX because that was the map that PRX had. योकाई भाई मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे? काफी बेटर फील कर रहा हूँ. Forsaken Fade and his Odin. A little bit. Yeah, a little bit. 13-6, a little bit. I mean, it's interesting. Both teams kind of maybe leading into the maps I didn't expect initially. So Gen.G goes for Lotus. They lost to PRX on this the first time around. Naman in 10th. Oh, I mean, they do look a lot better on this map. 2001 नहीं. 2001 is still acceptable. 2006 2007 तो भाई. तुम लोग पैदा ही क्यों हुए हो भाई? PRX hasn't shown their bind in the longest time. But we also did see Ascent पहला है split Lotus bind breeze. Sunset और Icebox band गया. Okay. Which again is something that PRX could do, but हाँ यार, PRX को कभी Icebox खेलते देखा नहीं ज़्यादा.
So I think we might see ISO Yeah. there. oh, ISO. Look, there's like 4 agents Forsaken hasn't played yet. So Deadlock. Deadlock, ISO, Sage. So far this, the last couple of seasons. Gotta collect them all. Get out of here. Yeah, exactly. He's busy making his Pokedex full. वॉइस अलग सी लग रही होगी, सर्दी है थोड़ी सी और गले में थोड़ा सा कफ है और थोड़ा सा बुखार भी था कल तक। आप बहुत बड़े हो गए। शादी तो कर लूंगा, अभी रहने दो मनन भाई, कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से। मेरी तबीयत ठीक होगी ना, मेरे अंदर का भी डैंक इंसान वापस जाग गया है। अब मैं कल की तरह चुप नहीं बैठूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो गई है भाई। अब इतना हेट के 2016 से को हमने क्या गलती कर दी, पैदा क्यों हुए भाई? हेलो आयु, एज का क्या है, बढ़ती रहेगी? अरे दिव्यम भाई को बुलाऊं क्या, किधर है? Well, the Tiger Nation is facing off the Rexes, facing once again to close out the Pacific kickoffs. Taking us through the action is Achilles and William. Thank you very much. Yes, here we are, another grand final, but this time a very different face on the other side of the arena. PRX punching a ticket. Are you Discord आना है क्या? A lot of us to get to this Means point, for to go winning to they need Madrid. to win 3 maps. Yes, yes, PRX yes, on the yes. other side of the arena, it is a different इनका तो Korean नेट ही बंद है squad. भाई। Gen.G, नॉर्मल कॉल करना पड़ेगा। see if they can take away the throne. Yeah, exactly. Of दिव्यम course, not LFT। entirely unfamiliar faces, right? We've got head coach Solo and Locky on that side. They have succeeded in Deep Gears before, but this squad, a lot of people thought they're going to need a lot more time. Of course, the talent is there, but they're going to need to grow into it. They say, no, we want to get all the experience we can in kickoff and go right into Madrid with a strong force. And today, I mean, last time they matched up, मैच देखने आ रहे हो PRX का? so it could go either way. It very well could. I mean, you're talking about getting फाइनल है, बेस्ट ऑफ 5 आओ ना डिस्कॉर्ड, बकचोदी करते the maximum amount of experience, maximum आ जाओ। maximum matches to get to this point. Their ticket to Madrid is punched, but they आयु आ रहा है क्या? आजा डिस्कॉर्ड। as champions. They want to come back into stage 1 with higher expectations, with a trophy on their backs. Let's see if they're going to be able to earn it. Start things off nicely with a map. आयु अगर here on वो आप Descent. उस पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे ना, मुझसे रोल मांग लेना अगर आप आ रहे हो तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। वेजी भाई की हेलो दिव्यम भाई, कैसे हो? बढ़िया वेजी भाई, आप कैसे हो? यार बुखार अब ठीक हुआ है, मतलब मेरी तो हालत खराब हो गई थी 2-3 दिन से। ये मेरा को भी पता नहीं कैसे खांसी हो गई और हाँ मुझे आपकी आवाज़ से लग ही रहा था वो फ़ोन पे। सेम भाई, सबकी तबीयत खराब हो रही है पता है। अरे पता नहीं कैसे हो गई ये तो। अरे वो मौसम change है। मौसम थोड़ा सा कहीं कहीं बारिश हो रही, फिर धूप भी आ जा रही, सब एक साथ हो जा रहा है। कोई हो रहा है। हेलो वैभव मैं भाई, भी थोड़ा हेलो पीच, धूप की वजह से शॉर्ट्स वॉर्ट्स में बैठने लगा तो अब वो थोड़ी फट सी गई है। आपको शर्म नहीं आती शॉर्ट्स में इतनी बड़ी बड़ी जांघें लेके? नहीं वेजी भाई, बाहर थोड़ी जा रहा हूँ, घर पे ही तो। फिर ठीक है। Ghost in hand takes down मैं वैसे बाहर भी चला ही जाता हूँ। Spear taken out. Meteor as well being tracked over in towards main. The door's going to be broken down. The turret offering up a bit मेरे of को damage देखने here. वाले को शर्म आनी चाहिए ना। Classic. Swinging out, doesn't manage to find a buy, but a quick peek ये भी from सही बात Forsaken है। gets the one tap. Meteor goes down. It's something Let's finds the go। second kills. Munchkin will fall. A bit of a timing mismatch there. I mean, Meteor, he did his best to hold on to main. ओ, and even बच up गया! the start before he went off, as you see. A lot of मैच damage स्टार्ट हो still गया? quite doable हाँ here हाँ, for फर्स्ट Gen.G मैच considering the फर्स्ट मैप का फर्स्ट राउंड चल रहा है एसेंट का। आप भाई पूरा स्ट्रीम चला ली। पूरा नहीं नहीं, आप अलग से खोलो ना ट्विच पे। Position this time. No rifle in hand. Can't get the win. भाई साहब देख लो यार, PRX अगर कोई इस दुनिया में PRX को हेट करता है ना भाई, फिर वो इंसान नहीं है भाई। भले आप PRX से प्यार ना करो, बट आप हेट तो नहीं कर सकते हो PRX से। हर मैप में अलग कॉम खेलते हैं भाई, कन्वेंशनल से अलग ही खेलेंगे भाई। You can't love them, but you can't hate them. Yes। PRX को You don't love them, sorry, गलत बोला मैं। जो भी है, हम समझ गए आपकी भावनाओं को। हाँ। और हर मैप वेजी भाई में ना कौन जीतेगा बताओ, Gen.G या PRX? यार PRX को हराना थोड़ा मुश्किल है यार। Tempo TP up. Try to catch somebody off guard. मेरे को भी लगता है ऐसा। Swing the corner instantly and he is taken और down. सारे ऐसे पांचों क्रेजी एमर्स हैं ना इनमें कि साला कोई भी एजेंट खेले वो मार तो लेते ही हैं। लेकिन ये जेन का टेक्सचर बहुत अच्छा मारता है। अरे कुछ नहीं, ठीक ठाक है भाई, Prowler in. इको फ्रैग करता है आधे से ज्यादा तो। Dash back, trying to get some headshots through. Wilbon pulling his attention. मूवमेंट तो ये होती है इन लोगों की। जी में था, पता है पहले आपको टेक्सचर? और हाँ पता है मेरे को। ये मोनियट भी तो उसमें था। हाँ हाँ, मोनियट भी उसमें। अगर आज मोनियट चल गया ना तो फिर ये लोग वन साइडेड निकालेंगे।
his goal is to just create क्या that RNG कर space, रहा है भाई? create those angles, create those trades for his teammates, and no better teammates to have for that other than this ये squad लोग of नहीं खेलते PRX. साइफर वाइफर। Of course, भाई always good ट्रिपल एक्स for है भाई, that उस दिन bubble of अभी killing. पता है को कल Saving ट्रिपल Motor लोलिस right खेले for हैं round लोग। 3. हाँ देखा मैंने वो। Lucky as well. Gonna be looking to try to 2020 utilize में that. खेलते थे It's ट्रिपल gonna be लोलिस a लोग। top as they do get ready to spray each किसी other की up. औकात नहीं है, हाँ पता है? हेवन पे। किसी की औकात नहीं है ट्रिपल डोलिस खेलने की, कसम से बता रहा हूँ, औकात भी नहीं है, मतलब सोचता भी नहीं है कोई Eating some damage there. ई स्पोर्ट्स में तो ट्रिपल Lucky डोलिस। is gonna be sitting on the boom bot. No one's got situated there in एक wide. एक विमेंस टीम है, One step closer वो लोग to that 5 डोलिस crash. 5 सेंटिनल ऐसा खेलते हैं, पता है आपको? Try to bring अरे that एक back वो भी over तो to बताओ this कौन सी B टीम side का था, as उन्होंने well. 5 PRX डोलिस ले already लिए थे मजाक मजाक में और वो accomplished जीत the गए mission थे here कमबैक for the करके। round. Disrupt A main control. That keeps them guessing on the A वो side. लड़कियों की And टीम should थी be या फिर लड़कों की focused. थी ये नहीं याद मुझे। लड़कियों की होगी, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, वो लोग मतलब बेस्ट विमेंस टीम उनकी ही है। Good opening हाँ kill तो we found here for the बड़ी side of क्यूट Gen.G. क्यूट They सी did लड़कियां हैं themselves उसमें। forward this bonus हाँ, round. सब क्यूट ही लगेंगी आपको तो। Clock running down below a है minute जी now. भाई सिस्टम है। Seems like ultimately अब PRX इसमें is क्या, just मर्द going हैं तो to लड़कियां तो end up क्यूट लगेंगी ना हमें overcoming भाई, the site. हाँ वही। गलत क्या है इसमें? Early warning here. Yeah, without the SMG ना, bullseye, slow SMG down हाँ, just a bit, trying to set up for the pinch उनका from नाम A. हमेशा भूल जाता हूँ यार। Prowler, wingman, वो लोग steps out. Lock वो in. लोग क्या करते हैं पता है, अगर डिफेंस आ गए तो 5 On the B सेंटिनल ले side लेते, here as well. अटैक आ गया तो 5 डोलिस ले लेते, Mania will fall. He manages to find और जीतते भी है भाई। Patience, spiked down. Can be retrieved, but now finds himself in a position. मुझे याद है जब जी के अगेंस्ट 5 सेंटिनल लिए तो मेरे को बहुत बुरा लगा था भाई जी के लिए। He's So that is not held. Yeah, he's more focused on taking down weapons rather than the गेम slaying. प्ले देखना, क्यूटीज को देखना। Something to get closer. He doesn't मीटर show भाई sign दिखा of दो it. PRX को हम भी। अरे ओहो Munchkin will be able to take him down. So गजी two भाई players आपकी lost. एज Gen.G क्या है? will take बाय द three वे weapons and जस्ट get आस्किंग। themselves on the 36। Yeah, one of those rounds where it doesn't feel so bad for either side. Lakia playing heroics there with the Odin, just making Hello sure Dhruv, that welcome to the PRX stream. can't play their classic W gaming style. Meteor with good coverage. आयु too, दल्ला कहाँ all गया? the आयु way को from बोला डिस्कॉर्ड आ जा backside, तो or स्ट्रीम से ही rather भाग गया। towards their spawn, able to create that crossfire. Of course, a lot of delay on the nanoswarm, even picking up the kill onto something. आयु का कल तो Quite गेम प्ले sure हो रहा what था जी happened भाई। there. But this बुरा मेरे is साथ all खेला the एक गेम एक paranoia किल as एक गेम well. 3 Knowing किल that एक गेम they have 7 Crossfire किल। ready to अच्छा तो जो ये मैं अच्छा जो तो मैं ये कर रहा था वो ये कर रहा था। तो ये पीच की आईडी मुझे लगता है उसने ही लॉगिन करी होगी। पीच की आईडी पे मेरा फुल मैच एमवीपी का स्ट्रीक चल रहा था, उसने पूरा लाल लाल कर दिया भाई। हाँ वो खेला मेरे साथ, वो इतना हगा आयु ने, फिर कहता मुझे दिव्य भाई मैं सोच रहा हूँ ना खेलूँ ना, मैं थोड़ा खाना वाना खा के आता। He's over it. कहता है आपने बोला नहीं, बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया आपने ये। He didn't quite catch the fact that the Jet had flown कहता है right दिव्य over भाई the थोड़ी crash. देर बाद आता हूँ। This seems to be कि something ठीक कल है का भाई मैच बात क्या है। सेक्सी था, एनर्जी वजह सीन। हेलो आदित्य भाई कैसे हो? एनर्जी सीन की भी मुझे मैच देखना है यार। ये वाला मैप पिक किसका है? ये देखो आप लेफ्ट में ऊपर देखो ना, दिखाएगा असेंट के पास में जेनजी का लोगो है। हाँ जेनजी का, हाँ तो प्लेट है उनका PRX का और लोटस है उनका। ओ भाई टेक्सचर अच्छा मारा यार उसने, टेक्सचर ने अच्छा मार। ओहो हो क्लीन राउंड भाई, टेक्सचर शीश भाई, वेरी क्लीन राउंड ब्रो, वेरी क्लीन राउंड। गैको को जो अल्ट पे मारा है वो बढ़िया था काफी, बहुत अच्छा मारा है टेक्सचर ने। वेजी भाई फाइनली मेरे को 5 बंदे, क्या बात कर रहे हो इसी बार, चलो बढ़िया यार। आई विल ऑलवेज रूट फॉर यू माय लिटिल ब्रदर, डू गुड। क्या हो गया सीबर्ट का? मतलब वो ये कर रहा है ना, ट्राई कर रहा है मैच टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स वगैरह, तो वो अच्छी टीम मिल गई उसको फाइनली। अच्छा खेलता है वो, हाँ अच्छा खेलता है। एक दिन आया था मेरे अगेंस्ट में, साले ने कमबैक कर लिया था। PRX कब जीतेगी? PRX कब जीतेगी? ये मैच देखते रहो पता लग जाएगा। कल तो G2 वर्सेस EG का मैच था, वही बोलना चाह रहे होंगे शायद फिर आदित्य भाई, ऐसा लगता है मुझे। Yeah, this, I mean, it really has to be considered a bit of a force here on this 5th round. Don't win this one out, you're gonna have to reconsider some of those broken buys in the future. And my ideal is cooking with me. That's your point. Going to be very nicely timed to find. 3 स्पॉट कर लिए इसने नाइफ में। गया फुट से और आपको पता है मतलब असेंट में कोई भी पहले अटैक नहीं लेता है, ये PRX वालों ने अटैक लिया है पहले। अजीब ही लोग हैं भाई, पता नहीं। मैंने कहा ना टेक्सचर लेगा। He just won't stop. I mean, he just knows that he's meant to be. टेक्सचर मुझे लगता है अगले साल PRX के लिए ट्राई आउट दे रहा है अभी शायद। ये PRX का रेज्यूमे बिल्ड कर रहा है अभी अटैक करके, इतना फुल मस्ती कर रहा है भाई। अरे लास्ट ईयर के VCT में आपने वो वाला शॉट आपको याद है जो समथिंग ने ऑप से मारा था एसेंट पे बी साइड पे फ्लिक करके, बहुत ही ज्यादा फेमस है वो शॉट। ऊपर उड़ा था वो अपड्राफ्ट कर दी थी जेट और चप्पल मार दी थी। I'm not surprised, especially with the buy that we just had, but Munchkin just spraying through the smoke. I love that because we're seeing this change where teams are trying यार to मेरे get जैसा as जेट close खेल as रहा है। possible into these sites before आपके they जैसा ही start तो their खेल रहा actual है। execute.
So really denying the possibility. क्या मार रहा है? After the first one, he's like, "Oh yeah, this feels common enough." Just ओ भाई PRX की तो बुस्सी कर दी, टाइम आउट ले लिया भाई। बहुत Demon जल्दी ले 1 को लिया। ही मारा था ना वो शॉट तो समथिंग ने, रिस्ट ब्रेकिंग फ्लिक मारा था समथिंग ने। आदित्य वही तो भाई कुछ भी मारता है यार वो बंदा। हेलो शेप शिफ्टर, वेलकम टू द स्ट्रीम। Coaches talk about it time and time again. Alex has showcased ये it टाइम आउट time and प्लेयर time मांगता है, कोच अपने आप ले लेगा। एक सेकंड रुकना, एक कॉल आ रहा है। आपको कितने कॉल आते हैं भाई? यार वेजी भाई थोड़ा एक They've been on the सेकंड। receiving end of this against multiple teams even throughout this kickoff. And given the energy they showed on stage, I don't know if it's going to be enough to What's up? cool off Everything good brother? primary What's duelist up with you? attention. Hello Shubham bhai, welcome to the stream. Thank you for joining boys. Like कर दो जल्दी से। So consistent. I mean, maybe a handful of times those first couple matches that we were seeing from Gen.G, where when it did go to that map 3, he and Meteor would slouch a little bit, but the rest of the team was rising to the occasion to kind of try and compensate. वेजी भाई मैं मम्मी को पिक करके आया। आ जाओ आ ठीक जाओ। है 5-10 मिनट में आता हूँ। वेजी भाई Demon 1 और समथिंग। यार इम्पैक्ट वाइज मैं तो Demon 1 बोलूँगा यार अभी। मुझे समथिंग का उतना समथिंग ऑन डुएलिस्ट आई डोंट लाइक यार। अच्छा अभी ये इस पे गेको बढ़िया खेलता है इस मैप पे। 4 सेकंड ने क्या दिया? क्लीन। और सेकंड है भाई वो तो देता ही है। आप होके जा रहे हो अभी? हूँ 1 मिनट बाद जाऊंगा ना राउंड देख के। ये Gen.G में जो लाकिया है ना, हाँ बहुत क्रेजी प्लेयर है ये। थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बट ये फर्स्ट VCT से ओपी एकदम। अच्छा ये राउंड बहुत गंदा कन्वर्ट कर रहे हैं। 5v वो अच्छा था वर्ल्ड 4 कर और रहे हैं एकदम वो। से इन्होंने बदल के इन्हें 4v2 पे कर दिया। क्या ऐड आ जाती है बार बार यार। आप उस पे ब्रेव पे चला लो ना, उस पे नहीं आएगा ऐड। ब्रेव पे लगा लो। पता नहीं मेरे पे तो नहीं आ रहा। मैंने एड ब्लॉकर हटा दिया है क्योंकि इसलिए। This is the trouble that PRX is going to have Oh, throughout this oh. match. As much क्लीन राउंड कन्वर्ट कर देते हैं 1 सेकंड में, मजा आ जाता है। अच्छा राउंड निकालता है। He was just ready for it. He's just ready for a चलो reaction. मैं आया, मैं with these VC में free हूँ ठीक है, fires. बस I mean, म्यूट this is हूँ। where that AFK experience जा रहा comes in हूँ। for someone like Bye. Munchkin. Genrex hello brother, Gen.G, Fox Active there here. are no Welcome to slouches the when it comes stream. down to these 1v1 Yo duels. yo So PRX yo can't bhai just what get up? away Hello Abhiram, with welcome to trying the to create stream. a distraction one side and then just push as one force step by step into another area. They're going to get craftier. They're going to have the aim to fire back. I mean, Meteor hiding from that Prowler was everything. Just big enough. मेरे जैसा स्पैम कर रहा है भाई एकदम। Some wondered, including myself. क्या जुगल भाई? The players would kind of इमोजी डालोगे कि कुछ बोलोगे भी? कि कम्युनिकेशन स्किल्स ही इमोजी तक रह गए? एकदम टिपिकल Gen.Z हाँ? कोई बात नहीं जुगल भाई। 2007 बॉर्न हो तो क्या ही ब्लेम करूँ मैं आपको। Would have spotted him just yet. Mind Freak still does get tagged down to 25 HP. He's gonna rotate back around towards Gelato, joining with the rest of the squad, and potentially we'll have to hand off that Guardian to somebody that's a bit sturdier on the HP bar. वही कहता है बेटी। हाँ उनका भाई काफी ठीक है मतलब अब। कोल्ड थोड़ा सा है, कोल्ड ठीक हो जाए तो। He does get in, but he's get dizzy, but now he backs away and the kills start flowing. Kara goes down 3. All they can get so far is just the one kill onto the enemy killjoy. Mind Freak, the player getting tagged up right off the rip by the operator. Last one standing. भाई राइट बड़ी मिल गया, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मुझे तो नहीं मिला दोस्त अभी तक। 25 HP and a Guardian. You have to imagine he has to save for the next 40 seconds, at which point, Gen.G, there's nothing stopping him from going on the hunt, especially for Lakia. I mean, toss that Odin to someone else, go and make this Hunter's Fury happen for the next round. 30 seconds left. Karan could pull a divide, he could just go TPing forward and try to scout him, but Mind Freak will swing in, Texture will get the shot, and Gen.G will continue upward, 5-2 now. It's impressive how many moments like this that Karan has in his very first VCT tournament. Yeah, he played one event in the offseason at Convergence, but even there, it took a little bit to warm up. Yeah, he had some individual moments, but it was a very short-lived event for the squad of Gen.G. And head coach Solo talks about it, how he thinks, all these maps that they had to play really benefited someone like Karan, and he is भाई आपको पता है ना PRX थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगाते हैं, फिर एकदम से अभी ऐसा अभी 5-2 है, अभी 5-13 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। छपा एक्सा ही बोला अभिराम भाई। एक टीम PRX के अगेंस्ट छपा। It worked before during this week. I mean, even PRX might be in the game, but this isn't like a T-Rex where we're ओहो दवाई का तो खाता ही नहीं खोला है। हेलो दवाई भाई।
So it is in fact going to be a tech pause, much to the chagrin of literally everyone. Yes, yeah. But we've been able to sort these out a little bit quicker here, so hopefully we'll be able to get right back into the game. But listen, things like this happen, and what's important at this point is going to be keeping up that energy for the side of Gen.G, right? I mean, no matter what the reason is, it happens now and then. It's part of a real tournament. And for Gen.G, it's about keeping that energy up. And for PRX, it's about... फिर से ऑडियो इशू यार, वही दिक्कत यार फिर से. You can't discuss any of the actual gameplay here during this part of the tech pause. वो क्या कर रहा था यार? Well, looks like audio issue. मेरे ऐसा खेल रहा है वो. Real by real. All right, well, we'll see if it gets sorted out quick enough. Talk about the match so far, though. 5-2. यार एक बात बताऊं, मैं तो भूल ही गया कि आज संडे और भैया खाना बनाने नहीं आएंगे और मैंने अभी तक खाना ऑर्डर नहीं किया. तो मैं क्या खाऊंगा? What did you make of it, right? You got the 2 rounds that you're supposed to get if you win the pistol. Obviously, the pistol won off the back of some nice shots and really fast tempo, as PRX often does. But then, माइक कौन सा है आपका? Gen.G, they just fire right back. माइक डिस्क्रिप्शन में देखो. It's just incredibly impressive, but again, I mean, for Texture to just kind of start things off, not really be present in those first couple rounds, and then just slingshot his way to the top of the standings. चलो गए अब 2-3 घंटे. काश ना जाए भाई. मेरे से बैठा नहीं जाएगा यार उतनी देर. वैसे ही बेस्ट ऑफ 5 है आज. Since there's been any kind of real belief in Gen.G, you know, not since the 4-0 start and then the डोनर एंड जायरो से मंगा लो. ये क्या है भाई? Last year, it was just like, oh, okay, this team peaked early. Yeah. And there's no hope. Okay, now they're bringing in Solo. He wasn't able to get much done when he was coaching over on Damwon, Lakia. He wasn't able to get through some of the matches. चलो भाई. 2-3 मिनट लगे बस. Is this going to work? They have Karon. Who is this guy? But I mean, they have made their names known. Yes, and I was part of that group that was doubting this team. I mean, sure, a story of redemption sounds great, but that's all on paper. I felt like maybe all of them had enough chances, and now I'm proven wrong, and I couldn't be happier about it. PRX. See if they can get themselves back into this game here in round number 8. Operator, of course, still in the hands of Textures. He is just aggro pushing out. एक अच्छा वायरलेस कीबोर्ड बताओ. Quite get the connection though. This time, Mind Freak getting away unscathed. चेक करना पड़ेगा यार. इंटरनेट पे देख लो मिल जाएगा चेक ट्यूटोरियल तो. Really flush him out of this position. Are they ready for the Odin backup though? Prowler comes out. Prowler coming in, and yep, Lock. Nice. Not able to find the kill. Gets a good amount of damage out, but otherwise will still be standing. Haunt going up into. भाई उसको बुली कर दिया. अरे भाई इसने कवर दे दिया फुल. अरे कोई उस टेक्सचर को मारो पहले. डिटेन्ड है वो. अरे भाई अब वो एक बंदा ले आएगा फिर ऑफ से. मार दिया ना. ठीक है. समथिंग भाई क्या आपका ट्रैश वापस आ सकता है क्या? ऊपर चढ़ो चढ़ो चढ़ो. ले लो ले लो ले लो ले लो. ट्रैश ट्रैश. Something is low, and considering that op might be picked up, Munchkin surely goes for this. I mean, you look at the creds and everything you have. ऑफ भी ले ली दवाई ने. मुझे नहीं लगता ये भाई आईडी का पास चेंज कर दूंगा. क्यों क्या हुआ? Going out to interrupt, and it does. Just in time as well. Stops it in its tracks before the dive can come in. Flash sent. Waiting for a peek out. ये तो भाई गड़बड़ कर रहे हैं लोग. दवाई भाई तुम रहने दो, तुमसे ऑफ नहीं होगी. भाई धक धक कर लिया था. साइकोलॉजी वाली इंस्टा से भी अच्छी लगा. कीबोर्ड माउस हेडफोन ये जरूरी ऐसे जैसे देखने में अच्छी होती है. परफॉर्मेंस में पीछे जाते हैं. मैं जो वायरलेस में पीछे प्राइस डिफरेंस बहुत रहता. कुछ तो बोला है जुगल भाई ने, सही बोला होगा. Onto the jet, and Karon's just there for backup. What a guy to have as a bodyguard for the side of Texture. And Meteor, I don't mind the timing. He's trying to just make sure Texture can stay alive for just a bit longer. Both these teams are obviously the kill just fast enough, already but he's going to dwindling the numbers Matrexx, down for yes. potential clutch. But as a first seed and second seed, they have to fight for the for that position. बहुत सही भाई, बहुत सही. Two ults already invested. Still is a 2-for-1 trade up here for Gen.G. They can still win the round. They have Viper's ult. Surely you have to know, PRX, they've been lurking so much this entire tournament. Veggie also sick. Yes. I mean, he's just shoulder to shoulder basically with Munchkin. He was just sat there top mid. Mind Freak slides his way in towards Street. Very well might think that this सरकारी आईडी बना रखी है बहन की. यार मैंने यूज कर ली तो मतलब सरकारी बोल दिया पीछा. ओहो लाकिया भाई. मैंने एक दिन गेम खेल लिया तो सरकारी बोल दिया उसको. ठीक है भाई, परसों खेला था. परसों भी नहीं, उसके एक दिन पहले. ठीक है पीछ, ठीक है.
Mindfreak's timing as well. I mean, Mindfreak, I think, waited to get the info, but this was good. We've seen that move time and time again, but the fast 180 from Texture for the anti-flash from his teammate. What a start for the team, and that should be the next timeout coming out right off the bat for PRX. I mean, we saw this just yesterday, you know, on that opening game, a split, PRX needing to use both timeouts in the first half. And yeah, they went on to win the map, but I mean, it was multiple overtime resets, and it was damn close. This is सरकारी नहीं सार्वजनिक है कैरन इज रुकी राइट यस अरे रे रे VRX गई आज तो मैं इंजेक्शन ले आया भाई ओके राहुल भाई गाइस स्ट्रीम लाइक करो जल्दी से स्ट्रीम लाइक करो मेरे को नहीं बोल रहा है तो फिर बाकियों को पासवर्ड क्यों देती है पासवर्ड मत दो ना The real question is Gen.G. Their timeouts have been quite successful this tournament as well. I had my doubts on the coordination between Solo and HSK. Of course, Solo. भाई अपना रैंक कैसे देखूं लाइव चैट में? Exclamation mark my rank, your ID / your hashtag. Exclamation mark टॉप नहीं है जुअल भाई अपना राइट का रैंक भी देख सकते हो आप अपना मतलब Valorant का भी इनमें से एक ही मेरिट नहीं ये दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं ऑलरेडी बस हो गया राउंड निकल गया यार फिर वही यार ये कैरन फिर से यार Where does he decide to go? For now, just staying sat here in market. Texture swung around to alley. And if he tries to push out, he's going to be giving them line of sight. Yeah, he has all the time in the world, though. Still a full minute, so playing for this mind game to try to get them to search for him first. I like it. That and waiting for the haunt timing, which he now has back online, but swing around. Karen eventually will find him a 3K. It's Gen.G moving up 7-3. Great effort, you know, still here from the side of PRX, considering the buy that they had. It's looking dangerously close. But Gen.G have proven in this tournament they are the kings of the thrifty. Oh, absolutely. I mean, that's how they shut down the entire team of PRX. And Lakia just dwindling down 2 is enough. It slows him down, gives an opportunity for Karen to find these 1v1s. And how many rounds is that where Karen's had a multi-kill? I gotta say, I think probably all of his kills coming from 2 or 3 Ks back-to-back as well. Never mind, lol. Keeping pace with Texture. And is effectively a brand new player. VCT, that is always a good sign. Something, however, showing a better sign. My rank Peach वो space डालो उसमें. My rank और Peach उसके बीच में. Something gets taken out by the nano swarm. Second time today. Right here. Bit of a brutal kill to be found. Trying to jump up there onto the half box. Narrowly avoids getting sprayed down by the Odin through the wall. Hit going to be invested. That's actually just to cut off that alley access, but as we can see, Gen.G, they're not going anywhere near it right now. This is good news. Taking turns from it, managing to find one. Munchkin picking up the kill, but Monyet lurking, finding one. Monyet, please मार दे भाई. इसको मार दे ओमन. अरे ये कैरन भाई. Suddenly it's the 2v2, the spike uncovered by this pit. Karen falls. Mindfreak able to find it. The spray coming in, but those tracer rounds just lead Mindfreak to his target. Locky goes down. PRX looking to rescue this half. Potential 7-5. Yeah, a little bit of an unfortunate round there for Gen.G. Her Streamlabs high on current. अरे नहीं वो आप डॉट डालते हो ना तो इसलिए आता है वैसे. देखो अभिराम भाई का रैंक आ गया. आयरन. सॉरी यार मेरे मुंह से हंसी निकल गई. सॉरी अभिराम भाई. इंटेंशनल नहीं था कसम से. Don't judge me. Sorry. I don't play Valorant. Sorry. See if Gen.G's ready for it. It's all right, man. Well, last time it was used, we just didn't see much value coming through. Something getting caught, and then rush play outside of A. वैभव भाई आप क्यों हंस रहे हो यार? Again, eyes set on B. मुझे वैलो नहीं खेलना आता. हाँ वो तो पता लग गया था उज्जवल भाई मुझे पहले. Thrash is going to be coming in. Recon does get destroyed, and the Thrash not going to be able to make the jump. He's connecting. Monyet jumping forward. भाई वो डीकेड है उसको मार दो अभी. अरे यार मीटियोर भी बैक साइड बैठा है. दोनों में से एक भी नहीं मरा. वो ऑलरेडी 10 HP है.
इसको भी मार देगा अभी उतने में, वहां से टेक्सचर आके ऑफ से कवर दे देगा। कितना टाइम बाय कर लिया भाई। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट्स गो PRX, लेट्स गो 5-7। गुड ऑफ भाई, गुड ऑफ। I feel like Lockheed and Meteor did everything they ये कौन है भाई? possibly could in the आयरन entire multiverse to stay alive there. आयरन 2 कौन है भाई? Bought a lot of time. Yeah, and yet, as the backup arrives, it's PRX who are able to actually just flood the site and then hold all the trade angles, all the crossfire. भाई तबीयत खराब है, ज्यादा हंसाओ मत भाई प्लीज। They know how to adapt into it. They know how to Just really say you don't play thrive in those situations. And हंसना नहीं था now भाई। suddenly a 5-7 Welcome to the half. club. This is not what Gen.G thought they'd have going into the second half. Of course, getting 5 in a row, starting with their first buy round. They still do have that. अरे मैं अनरेटेड खेलता हूँ। फिर ठीक है, फिर ठीक। Sure. But we know how difficult it can be. कोई आयरन 1 वाला आओ प्लीज अब। Stringing together those rounds, if they start getting streaky, and even the timeouts. I can proudly say my freak is bronze man. Gen.G going to be looking to come out here with that pistol, tie up that score line, and get that much closer to closing out this first map. And something Gen.G will have to keep an eye on is, of course, some of these retakes that PRX has planned. यार तबीयत खराब है, प्लीज मत करो ऐसा। ना बाल ठीक से बन रहे, चेहरा उतरा हुआ सा है, और हंसाओ मत भाई ऐसे। On top of that, the toxic screen, if you watch back to their gameplay, the toxic screen really does give a lot of tells on what their retake setup is going to be. So we'll see if Gen.G is able to keep tabs on that round to round. For now, just in a wall cutting off mid. Little bit of that catwalk access as well as B main. Yeah, just trying to really funnel them in to the A site, really, if things go their way for the side of PRX. And if it is a B hit, still a lot of options to delay, even without something तबीयत like खराब है, फिर भी गुड लुकिंग तो just उतना ही हो with the पहले fact that जितना you ही। have to go through थोड़ा सा toxic मतलब screen ऐसा 2-3 times. डाउन सा लग रहा हूँ, बट स्टिल स्मार्ट। Third sent out, Texture pushing down. Spotted in mid so far, and something hanging back avoids that 0 point with the drone over the top. Will be able to spot him. Is he getting ready to come through? And drone should have seen Forsaken as well. Texture gonna come on. Yes, the flashes are in. Texture gonna be able to भाई ये find two. टेक्सचर को आज क्या हो गया है यार? Very much open at the moment. So break the window, try to fake somebody going up. Meteor. हेलो मंदर भाई। Back, lurk there within tree. Pulls all the way back, actually over to short. So far, I don't believe he's been spotted. शादी की उम्र के Still लिए the numbers advantage in the site as well, so they're just trying to buy enough time, but Mind Freak. Great check for Forsaken as well off screen, getting the shots through the box to be able to take him down. Munchkin now looking to try to hold the side. Dizzy up over the top, does manage to get the flash out. No one's in main. Blinded up, swing around the back. Munchkin actually able to steady the aim, finds the headshot there on a Forsaken, and now something with everything to do. He's been spotted. Shock dart, a little bit of a box there from the side of Lakia. Is the wingman now going out to try कर दे to something, कर दे fight versus Karan, but he can't quite get it done. इसको मार देता ना, GG द राउंड। Gen.G will tie up the pistol round count and now move up by 3. I mean, we know that the devs over at Riot were just waiting for that wingman to finish that defuse just to showcase what Gecko is possible of here at the pro level. Something, of course, someone who's capable of it. But what a great fake sell from Gen.G, sending both of your initiator in all that utility all the way up through mid. You send the 0 point, you send the drone, really selling that you want to go for a B pinch, and then it's just the forces barreling through A link. PRX just bit right onto it. Nothing more than that. No force ups again. We saw them, going for that force buy, which is uncharacteristic of PRX overall yesterday, and finding great success with it. This time, just going to be sticking with these classics. One sheriff in the hands of Mind Freak. And this is a nice play by PRX, because this is that screen that they often like to use for a retake onto B. They'll pinch in from both main and defender spawn. Try to utilize that toxic screen for a nice pinch. Just trying to sell the fact that they're not here, but no info now. They want to start dwindling it down. They're swinging out, but Meteor still managing to come up with 2. Despite the fact that he only has a ghost, and he also puts the buy down to 44, Mind Freak at 76. Couldn't ask for much more than that. Your Killjoy player हेलो प्रसन्न भाई, गुड इवनिंग। Now Spike can get planted. And if it wasn't for the Sheriff and the Ghost, you have to imagine this is one of those rounds where you just call for the save right away, go down to the Spike, but they're not even in a good position to do that. Looks like they will try to wait for it. Just trying to pick off some early kills, trying to bait them out with the audio. Seems like Gen.G just have
such a strong read on it. 0 point to go check towards heaven. Now Munchkin is going to be spotting over towards trees. They reopen the door. And as they see nothing, very much assessing it. Everybody's going to be on this side of the map. Mind Freak will be able to take मेरे को मोनिया के किल्स देखने कितने हैं। उसने 2 राउंड में 5 किल किए थे, ठीक है? वेजी भाई आ गया मैं। हेलो। मैंने कहा था ना वेजी भाई टेक्सचर मारेगा। टेक्सचर तो मारता ही है यार, ये पर मोनिया मार नहीं रहा ना, वहाँ दिक्कत हो रही। देखो आप गए तब उसके 5 किल थे, अब 9 है। 2 राउंड में 5 कर लिए थे उसने। हाँ वो पिस्टल में और इको में। हेलो माधव सिंह, वेलकम टू द स्ट्रीम। दवाई क्या 4 किल कैसे समझ नहीं आ रहा। ये लोग भी हाफ शील्ड स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं। स्ट्रेटेजी तो क्या, पैसा ही नहीं है तो क्या ही, कहाँ से लेंगे फुल शील्ड। शरीफ वगैरह ली थी ना अभी। लीड नहीं करा इसने, 2 किल मिलते। That's going to hurt a lot. The paranoia down. You know that you scratched up a lot of members if you were a Gen.G player. So you know that the A site should be weak overall. Meteor going back to try to just disrupt the default just a bit from PRX. Make sure they have to spread out once again. मोनेट को नीड नहीं करना चाहिए था वेजी भाई इसके फ्लैश पे। करना तो चाहिए था पर वो और इसे पता भी था राइट में 2 बंदे हैं। Peeking back out, smoke comes down. Gen.G just going to be cutting noise and starting to drift away. Wingman not spotting anything. Potentially recoverable here for the side of something, but still considers it to be a great risk, and now it certainly is one. See if he's wise to this. A little wary of the catwalk push, but not quite down on the grass. Oh, the timing jumps away. Munchkin's gonna try to sell fake. On to B once again. He's gonna do his damnedest. Moniette in position here. Just waiting a little bit more. Just cutting off the backup should be enough here for Munchkin. अरे अभिराम भाई स्पैम ना कर दो यार, बता दूंगा कौन है वो। Who is the guy in VC with you? PRX का ओनर है भाई। He could just be able to shut this down, depending on when he decides to swing out. The time's so very limited, but now he's turning his sights away so the spike can get planted. Moniette, what a shot from Munchkin! Mind Freak now the last one standing on this side of the map. He's going to come up with 3. Something getting ready to join in, pushing his way in through market texture on his lonesome. कर लेगा ये, समथिंग तो फ्री के लिए। बस बहुत सही किया इसने। बोला ना कर लेगा, इजी क्लच था। 1v2 मार दिया। The clutch coming through. Gen.G now moving up to double digits. This is beautiful. This is beautiful from Gen.G. You have an incredible call from your IGL who puts himself at risk to not only sell the fake, but you are still looking at the clock to say that we have time to rotate. If I hear 3 बंदे मारे मुझकिन ने, मां कसम। और इसको मोनेट को बहुत क्रेजी डिलीट करा इसने। मजा आ गया ये मैच में। बस हमारी टीम हार गई, वो बुरा लगा, पर टेक्सचर का गेम प्ले अच्छा है काफी। ठीक है यार, ठीक है रोहित भाई। Beautifully serving that one up. आज लेजेंड मार रहा है टेक्सचर, आज इको फ्रैग नहीं कर रहा। समथिंग डिलीट करा है टेक्सचर को। पर जिंदगी में पहली बार उसने साइड स्क्रीन लिया फॉल बैक। Saken as well. Trying to push this. He does have a bulldog and Meteor at 11 HP. Severely disadvantaged here. Sorry. They're gonna back away and miss each other there in the end, but Karen pushing up ये into तो bench. कीड़ा है इसमें, तभी मेरे को पसंद है। Giving that advantage back over to Gen.G as Lakia is here sat outside of Gelato, and this time Moniette not gonna be able to win the fight right around that ult orb. Yeah, they should be able to go over to B. Meteor heard the exit from B main. You got the kill in mid as well, so you know that Forsaken was pretty pressured on the B side. Thank God. Great timing from Devi, swinging out right before that ping would come down, catches Lakia completely off guard. तो जीत सकते हैं Meteor, एक HP है। पर इधर कोई है नहीं ना, पोस्ट प्लांट सही ले लिया तो फिर निकालने नहीं देंगे लोग। ऊपर से ये ओमन जिंदा है अभी साला। ये मैप तो गया है भाई, ये मैप तो गया है। ये मैप तो हार गया है, लो Forsaken मर गया। देखो आ गया पीछे से। Forsaken मर गया। Karen finding the kill, leaving out Devi on his lonesome. Cover going out. Find a quick pick on the Meteor would bring it into a 1v2. He still holds onto a paranoia as well as 1 TP. बेचारा तो ऐसा सैड सा लग रहा है। ऐसे ही बैठता है ये। सैड नहीं लग रहा है। कांस्टेंट फेस है भाई उसका ऐसा ही। इसे पोकर खिलाओ। Let's go for a shadow step here.
I love that Munchkin enters that smoke right away. Doesn't want to take any risks. Flash into the back, but now they're very well aware. Flash लेके बैठा है देखो. Swing out. Meteor. बिल्कुल तैयार just बैठे हैं remain लोग. standing at the end of it. 11 HP and 11 round wins. Gen.G. रोहित भाई wait for the comeback. Dominant fashion. And finally an operator comes Next plate है ना, next plate में 4 second आएगा योरू लेके फिर बताएगा तुम्हें. What Gen.G's been doing here is really just shutting down the possible compositional advantages that PRX is looking for. I mean, they have so many ways where they could really initiate this attrition of all that utility. And they just have, I mean, PRX का IGL कौन है? Gen.G 4 just has the second. counters to it. Obviously, this composition, the class 4 second composition, IGL is good for a आज reason. चला. Texture up अभी and तो मेरा over, favorite driving है. his way in towards the B side, but no one there. आपको बताया था ना उस दिन मैंने लास्ट सीजन कितने एजेंट खेले पता है उसने? Snakebite now the free entry coming 17. through. Spike will get planted. इसमें And as Meteor इसमें plants कॉम this, में that's also going to give him a lockdown. इसने e-sports में. e-sports में 17. So many हाँ ultimates भाई. here for the side of PRX that they're just Crazy one player है. away from things 4 being second है very भाई, नहीं well नहीं 4 second करता है utilized. IGL. Would love to have to try to get this retake going, but now it's just going to be that जब typical से बैंका ही गया है ना तब से 4 second ने अपना लेवल अप इतना ज़्यादा कर दिया है ना भाई. Break this one down. The Dizzy is there. God Now भाई coming God. back through though. Locky with the covering Brilliant fire, able to extend. take out Monya. They got the जी ये lockdown, मैच but अब they've होप lost करके भी the अब फायदा नहीं है कोई. Mind freaking something last one Something standing. ने अपनी गाली पर मार The दिया. rush and the right click. Texture takes him down, draws up the सही weapon, डिसीजन भी सही ले रहे हैं, finds एक एक the फाइट का kill. डिसीजन भी सही ले रहे Gen.G. हैं लोग. They don't have a dedicated IGL. I know, but 4 second he usually would come up with stuff even off the game as well. Even the high कोच के six, साथ वही taking डिस्कस करते हैं there. सब. कोच ने खुद ही बोला है, एलेक्स नहीं बोला था लास्ट My सीजन gosh. And I think one of the things that might be, I mean, sure कि they face कौन against करता each है ऐसे other डेडिकेटेड in आईजीएल group नहीं C, है, but one बट thing that really मेन काम सब वही is करता है. keeping people कैप्टन scratching their head is बोल सकते हो you अभी just आप 4 haven't सेकंड seen को. a आईजीएल Korean बोलो ना squad बोलो play भाई. for contact like ये this. फाइनल्स में जीतने हारने से They कोई just फर्क breathe पड़ता है. for हाँ these होता है duels, होता and है. they're not लाइक backing क्वालिफाइड away दोनों है, बट सीड 1 सीड 2 होता है. वो आप जब Confidence right now मास्टर्स is मैड्रिड स्टार्ट होगा तो so अकॉर्डिंग टू dangerous that वीएलआर. PRX has to deal with, but breaking the confidence of Gen.G वीएलआर through क्या, to be वीएलआर के right अकॉर्डिंग look दवाई आईजीएल है at क्या? every single वो team that तो has faced them thus far. दिखाते हैं वहाँ बस, कुछ नहीं. Oh, they Full would, they push. just, wow, Three they want to players send a up mid. message. Try to take down this pit. Another corner. Something dead. Top flash up over the back of the wall. Gets the full बढ़िया catch flash on दिया था. Forsaken. Another one in hand. Monya will नहीं find वीएलआर the पे kill. कोई भी आईजीएल मेंशन नहीं किया हुआ, देखो Showstopper ना. at the ready, spotting Lakia dead. फाइनली मोनिया विद सम इम्पैक्ट, In this one. Also But way too finding late. Spike. Texture, however, around the back. कर देगा Gets his टेक्सचर audio. पूरा अभी वो Textures भी away as इम्पैक्ट. Boombot unable to find the kill. 7 bullets remaining here. Meteor ने And निकाल Meteor, दिया. the covering fire out in mid. Finds चलो out, जी. and it's a one tap to देखो finish ना the map. इस पे तो नहीं मेंशन किया हुआ 13 है to कुछ. 5. Gen.G showing up to play. 3 Last पॉइंट मिलेंगे shot जीत. इसने हाँ finish जो कर जीते. दिया. आई एम सो हैप्पी फॉर टेक्सचर ही गॉट आउट ऑफ द. Off against each other in the groups. कोई नहीं Took जीजी each other's नेक्स्ट map 2 and went to पीआरसी that map देगा. 3, where PRX Yes, brought Gaurav this bhai. unconventional no duelist competition at Sunset. That's what shut them down. But Gen.G comes back and says, "Now we've got some tape on ya. We've got all the warm up we need. Even Karon has now gotten used to the stage." And immediately, Coach Alex wanting to make sure he मारेगा, doesn't Monet forget मारेगा all the next things game. he saw that they need to fix if they want to extend this best of 5 in the finals of this बोथ kickoff आर क्वालिफाइड tournament. अकॉर्डिंग टू वीएलआर. An incredible हेलो ऑन कोड VLR का क्या है ये जस्ट लफड़ा? मेरे को तो VLR का ही नहीं पता. scoreboard. मतलब VLR होता क्या है ये? अरे VLR.gg वैलोरेंट की मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है. सब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस पे, रोस्टर से लेके टूर्नामेंट से लेके सब कुछ मतलब. अच्छा वो और- है क्या ये लफड़ा? और बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएगी, मतलब बहुत अच्छी वेबसाइट है. एक दिन एक बंदा कह रहा था मेरा VLR अकाउंट चेक कर ले. अरे गेम में आया था क्या कोई? हाँ अरे टिपिकल इगोइस्टिक प्लेयर्स. मतलब आप भी बनवा सकते हो VLR अकाउंट चाहिए तो. कल अपन एक टीम बनाते हैं डिसेंट सी, हाँ फिर जो टूर्नामेंट होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. और आपको ही पता है कि इंडिया में टॉप 4 के बाद सब एक जैसा ही है. सही बताऊं तो इंडिया में अगर आप ऊपर की 8 टीम हटा दोगे ना, सब उसके बाद सब एक जैसा है. तो किसी आज तक मैंने VLR देखा नहीं. सर्च करूँ क्या सर्च करूँ? Valorant VLR.gg वेबसाइट डालो ना सीधी, VLR.gg. .gg. हेलो लव, वेलकम टू द स्ट्रीम. तो मतलब आप भी एक टूर्नामेंट खेल लो, आपका भी VLR पे आ जाएगा प्रोफाइल, क्योंकि वहाँ पे हर टूर्नामेंट के स्टैट्स रहते हैं ना उस पे. तो इसमें स्पेसिफिक इंडिया का देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आपको क्या देखना है आपको बताओ. मैं बताता हूँ. वैसे सर्च करो मिलेगा. आप सर्च बार में प्लेयर का नाम लिखोगे तो प्लेयर का नाम आ जाएगा, टीम का नाम लिखोगे तो टीम का नाम आ जाएगा. टीम पे क्लिक कर. देखो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे लाइव करूँ क्या?
हाँ करो करो। ये लो। फिर को वैसे देखना कि इंडिया की टॉप टीम्स जो आप बोल रहे हो वो कहाँ से देख सकता हूँ, मैचेस, वो इवेंट्स, वो रैंकिंग, भी देख स्टैट्स। सकते हो बट शायद वो इंडिया का नहीं आता उसमें कुछ, वो भी आता है ये स्टैट्स में जाओ एक बार, रैंकिंग्स और स्टैट्स ये जो लिखा है उसमें उसमें सब आएगा। ये तो अप्लाई फिल्टर, ये तो रीजन या प्लेयर्स, रीजन, एशिया, एशिया पैसिफिक। साउथ एशिया आता है क्या, देखो ज़रा। हाँ देखो एशिया पैसिफिक में देखो वो एन के ऊपर आ रहा है सबसे, वो अपना इंडियन टीम का प्लेयर है बाहर का, बट वो रेकनिंग में। क्या फायदा बाहर बट का। स्टैट्स स्टैट्स मत देखा करो, ये जो फुद्दू चीज़ें हैं सब ये। नहीं नहीं, स्टैट्स नहीं, डेथ मेकर भी है, वीलर टेक्नो है राउंड देखो, जीरो। रॉसी भी है ऊपर देखो, इसके पैराडॉक्स है। एसके रॉसी। ये सब ई स्पोर्ट्स के मैचेस का ही होता है क्या? हाँ हाँ सारा ई स्पोर्ट्स का, यहाँ पे कुछ भी रैंक का कुछ नहीं है। यहाँ और पे ये तो जो रैंक एजेंट्स दिखा रहे हैं ना वो भी वही स्किल्स वो। भी है। हाँ हाँ ये जो एजेंट्स दिखा रहे हैं वो कौन से एजेंट्स ये लोग खेलते मैचेस में, वो है। हाँ, रॉसी का कौन सा एजेंट है? रॉसी रॉसी स्काई और सोवा। अर्निंग चेक करने के लिए यूज़ करते थे बंदे, अरे वो सब कुछ नहीं है। अरे वो कौन सी टीम्स है, हाँ भाई वही PRX तो। वाले क्या हुआ, जेनजी ने क्या कर दिया। ओवेस भाई एक मैच हुआ है, ख़त्म थोड़ी कर दिया है अभी। मैं भी होऊंगा देखना, मेरा चेक करना ज़रा। अरे वो बातें चोदने वालों। ये एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। पैराडॉक्स कौन है? ये मैंने पहली बार, रेमिनेंट का है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पैराडॉक्स, मेरा अभी इंडिया में वन ऑफ द रेमिनेंट फेवरेट प्लेयर्स। पैराडॉक्स। क्योंकि ये भी बहुत सारे एजेंट खेलता है, मतलब अभी पहले ये बहुत क्रेजी गॉड लाइक। डुएलिस्ट खेलता था। सब मेडल में था। हाँ ये जब इसमें था ना और RNT में, पहले जब था RNT में, हाँ, ये जो रेमिनेंट में। अभी भी रेवन में ही नहीं, जब पहले था ना RNT में, तब ये योरू वोरू सब खेलता था, और क्या क्रेजी योरू खेलता था पर्ल पे। यार अब वेजी भाई, अब मैं शिफ्ट मेरे हो साथ गया क्या डुएलिस्ट हुआ, से मैं ये। तो हग रहा था। तो टीम ने 3 डॉलर्स लिए, मैंने भी यूरो ले लिया, और मैं यूरो लेके मैच MVP बहुत क्रेजी खेला। कुछ भी फ्लैशेस कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे, जो होता है ना ये लोग नहीं करते दीवार पे वन मार के 1 वे फ्लैशेस, ये हम्म। वो कर रहा था मैं, मेरे को अच्छा मजा आ गया। अच्छा। एसेंट तो हो गया, अब स्प्लिट है ना। हाँ ये लोग, मुझे देखना है कि आज भी ये ट्रिपल डुएलिस्ट खेलेंगे कि नहीं। ये नहीं, आयन पैराडॉक्स अलग है शायद, और ये पैराडॉक्स अलग है। जी भाई आपका भी होगा नहीं, मेरा क्यों होगा, मैं नहीं करता भाई कुछ। दीवार पे वो फ्लैश। इसकी वो नहीं कर रहा क्या, वॉच पार्टी? कौन? वो टैरिक। डायरेक्ट तो अब NA की करता है ना, अपने यहाँ की क्यों करेगा। अच्छा। VCT अमेरिका की करता है वो। वेजी भाई पहल वर्ल्ड नहीं खेला ना आपने उसके बाद? नहीं। अब अभी भी खेल रहे हो एडिक्टिव क्या? गेम है, एडिक्टिव गेम है काफी। हाँ वो एक तो पता बार है मुझे। खेलता हूँ, हफ्ते में 1 दिन खेलता हूँ, जब अपना दिन पूरा खराब करता हूँ, खेलते ही रहता हूँ। भाई 50 वोट है और 30 लाइक है, ये क्या बकचोदी है। लाइक करो। लाइक तो मैंने आपकी कर दी थी स्ट्रीम जो भी। आपसे नहीं कह रहा, बाकियों से कह रहा हूँ, आप तो यार जी भाई, जॉड हो भाई। आपका नाम ऊपर ही आता है यार, और सिस्टम है देखो, लाइक एक बार VLR.GG पे जाओ ना, वेजी बॉय सर्च करो, आता है क्या कुछ। है। ऐसा आपने बनाया क्या कभी? अपन थोड़ी बनाते अकाउंट इस पे। वेजी स्ट्रॉज VEGGIEBUOY। आ रहा था, कौन है ज़रा देखो, वेजी स्ट्रॉज क्या था ये, स्ट्रॉ बना दिया है क्या मुझे अब। इनएक्टिव। UK का USA का कोई तो कुछ है। अरे नहीं आएगा भाई। कोई भी नहीं, तो नाम से भी कोई नहीं है। शिट वेजी भाई, अभी हम लोग इतने बड़े प्लेट नहीं बने। बस करना पड़ेगा LFT दिव्यम और LFT वेजी बॉय का कुछ तो। LFT तो मैंने नाम से हटा दिया। LFT नाम पे बड़ी गालियां पड़ रही थी वेजी भाई। मैं तो एक अभी दिन भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिव्यम LFT सेव कर रखा है। एक दिन मैंने एक बंदे को कॉल करा, ये मैच में था, मैच हम हार गए, मैं हग रहा था बहुत गंदा। मैच के बाद वो मेरी पार्टी में आया, हंसी मजाक वाला बंदा था, मैंने बोला हाँ भाई बताओ। कहता भाई जैसा तू खेलता है ना, तू LFT रह। मैंने बोला, साले। कहता नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, तेरे को जल्दी टीम मिलेगी सपनों में। बहुत बेइज्जती हुई मेरी उस ये दिन। खोला ना मैसिव की स्ट्रीम को ना, आजकल बहुत लंबी लंबी स्ट्रीम कर रहा है, ये देख रहा था मैं। हाँ, बहुत लंबी मार रहा है। अरे अच्छा, ये अभी वापस लाइव आ गया है, कल रात को भी लेट तक लाइव था। इसका कल नेट नहीं था।
कैसा खेलता है ये? ठीक है, बढ़िया। ऑनेस्ट ओपिनियन दो ना, कोई बुरा नहीं लगेगा उसको। मैं ऑनेस्ट मेरी थोड़ी नहीं, स्ट्रीम वो देख तो रहा मुझे है वो। पता है, मेरा तो दोस्त है। अब ये पता है क्या, मैं सिर्फ बढ़िया बंदा, बस इससे कोई टॉक्सिक लेना ये भी बहुत हो जाता है। अरे वो खेलता सब ठीक है, चलता है खेलता भाई, अच्छा सब है, चलता है, टॉक्सिक वॉक्सिक सब खेलता चलता अच्छा है। है। बढ़िया खेलता है क्या? वही है यार, इंडियन प्लेयर्स का किसी में भी कंसिस्टेंसी नहीं है ओहो वैसे भाई, हो। मैं मानता हूँ। कोई भी प्लेयर ऐसा कंसिस्टेंट नहीं है। अपने में देख लो क्या होता है, एक गेम तो ऐसा होगा 30-40 फ्रैग कर दिए, अगले गेम में होगा कि कंसिस्टेंसी 10 सिर्फ फ्रैग से थोड़ी होती है। फ्रैग्स तो वेज भाई गेम सेंस का तो ठीक है, लेकिन फ्रैग्स की कंसिस्टेंसी मैं थोड़ी मानता हूँ, क्योंकि नॉर्मल कॉप कोई में किसी ऐसा प्लेयर की इवेंट नहीं हो होती फिर, किसी प्लेयर की नहीं होती फिर। आप बाहर के भी देख लो फिर। बहुत की होती है वेज भाई, मेरे बता दो दोस्त मेरे को की है। नाम। कौन? नमन का नमन। नाम मत ले लेना। हाँ, नमन। वेज भाई मैंने उसका हर मैच एमवीपी है, उसका हर मैच उसका केडी पॉजिटिव से ज्यादा होता है, और उसके इम्पैक्ट फ्रैग होते हैं, इको फ्रैग कभी नहीं लेता वो। मतलब मैं तो खेलता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। यार मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक उसका गेम यार। आपको उसका चैनल दिखाया था मैंने, बस उसके साथ आप कभी खेले नहीं हो ना। अरे यार आपके साथ आपकी स्ट्रीम पे भी नहीं देखा मैंने उसे कभी। मैं खेला शाम को, मेरा नेट नहीं चलता ना, 6 से 9 हम खेलते हैं यूजुअली, वो 6 से 9 ही आता है सिर्फ। तो उस टाइम पे मैं 6 से 8 तक खेलता हूँ, क्योंकि मेरा पिंग 150-200 रहता है, दूसरी आईडी से खेलता हूँ, वो कैरी कर देता है, मैं मजे ले लेता हूँ। आप ये समझो ना, मैं आपने कभी मेरे मुंह से किसी प्लेयर की इतनी तारीफ करते सुना है ई हाँ स्पोर्ट्स के हाँ वो प्लेयर तो की मैं भी? समझ रहा हूँ। वो उसका है कुछ, उसका अलग ही है। मैं तो बोलता हूँ भाई, घर वालों को बोल सपोर्ट करें। पर उसने तो फिर स्ट्रीम भी तो ऐसी पकड़ रखी है ना जहाँ पे उसको पढ़ाई भी पेल की करनी पड़ेगी। चाहिए हाँ, वो पढ़ाई में भी तो अच्छा है। ये कुछ ओ, प्रोडिजी वाले बच्चे होते ओवर हैं। अचीवर है क्या? हाँ, पढ़ाई भोसड़े में वाले भी को अच्छा भगाओ यहाँ से, है। भगाओ, अनफ्रेंड कर दो उसको। जी हम पहले पबजी पीसी लाइट खेलते थे। पबजी पीसी लाइट में साले का हमारा 0.00 का केडी था, उसका 2 का केडी चल रहा था, गंदा ही मारता था उसमें भी, हैकर साला। जो गेम खेल लो उसमें पेल देता है। एमुलेटर में भी ऐसी ही था। आपने एमुलेटर नहीं खेला ना वेजी भाई? चलो चलो एमुलेटर, अरे छक्का थोड़ी हूँ। ओ वेजी भाई। मस्ती कर रहा हूँ, चलो चलो बंद करो स्ट्रीम बंद करो, आ जाओ स्ट्रीम पे आ जाओ। एजेंट सिलेक्ट में कब जाएंगे? Thank you very much. Yes, here आओ we ध्रुवन भाई, go क्या again, खेल रहे हैं ladies लोग? and gentlemen, if you weren't tuned फिर से into the ट्रिपल matches डोलेज भाई, ये yesterday, लोग तो नहीं first of रुक all, रहे what भाई। the hell were you doing? What were you Seriously. thinking? Missing out on those overall blowouts that we had. But you missed the triple duelist debut from PRX, but that's okay. They're bringing it out for you once again. The question is, can they get the win here? Yeah, and now starting on the attacking side as well. So Gen.G, they've been banning it मैं तो since चाहता हूँ that रिवर्स स्वीप loss करे against PRX, RQ 11-13 as a 2-0 destination. हारने के बाद Now 3-0 they're कर bringing दे, it back, मतलब and in 3-2 that कर दे। game, their defense was ये तो 4 मिनट by निकल लिए। miles much हाँ इनका फिक्स है stronger. भाई। So trying to just get a head start here on the round. मतलब ये लोग PRX वाले खेलते ही ऐसा है ना कि तुमको भी करना पड़ता है ये सब, आइसोलेट नहीं करोगे ना उनको, मतलब दोनों साइड से पिंच नहीं करोगे। Nice and quiet over कल here. इन्होंने पता है क्या किया अटैक में? They get some 12 के 12 राउंड है। flash held at the moment there from Lockheed as it's interrupted on the plant. भाई जा ही नहीं रहते कहीं और। Able to find one money out with two. Meteor up in heaven. Finding one before getting taken out. मोने भाई पिस्टल में तो आप मारते हो, उसके बाद थोड़ा सा कैजुअल हो जाता। PRX is suddenly Munchkin, the last one standing with just a sheriff in hand. He's looking for some Who kills. needs initiator always? Here, but with another paint यार as well as मुझे भी Anthony कभी कभी now. लगता है ना कि स्प्लिट पे इनिशिएटर नहीं हो तो चल जाता है रैंक में, तो PRX will once again claim an opening स्लो position. खेल के निकाल सकते हो, क्योंकि वैसे ही इतना डिफेंसिव मैप है, आपने 5 राउंड में निकाल लिया तो काम चल जाता है। क्योंकि आपके पास अगर इनिशिएटर है भी ना, अगर आप स्काई से अगर खेल रहे हो स्काई के साथ, वो डॉग में मतलब अर्ली राउंड वैसे ही एंट्री करने में दिक्कत हो जाती है। जितना फास्ट खेलने जाते हो ना स्प्लिट में, उतना ही बीट ही होता है फिर। स्लो खेल खेल के मानता हूँ जी भाई, कोई मैप ना अटैकिंग ना डिफेंसिव, हाँ सामने वाला कॉम्प में तो बंदा कुछ नहीं है भाई। कुछ भी कर देते हैं। You're still going to be picking up एक बंदा एमर आ जाएगा, वो आके भुस्सी बढ़ देगा टीम की और हाँ। मारता चला जाएगा। eco buy from him. अरे कल वो खेल डेडलॉक खेले पता है लोग, आइस बॉक्स पे But something सुकून मिल जाता मेरे को यार, अगर वो मैं मैच देखा नहीं लाइव मैंने। ईजी और swinging quarters with this Vandal. जी ने ईजी Finding वर्सेस the किसका मैच है? headshot G2 था। instantly, so it does हाँ want G2 था। more here. Start off this जॉगिमो round. डेडलॉक खेल रहा था भाई आइस बॉक्स पे Back विदाउट with डुएलिस्ट। damage, but finds the elimination there on the Lakia. Now with Karon making his way over. But- He's going to have to take Lakia's gun because Shorty on the retake probably not going to be the best thing. Yeah,
good backup from Forsaken as well. So we see that Mindfreak's pretty. अरे Forsaken भाई So नहीं Forsaken going down with the Sheriff is fine. You still have 3 rifles that you bought up. Want to try to keep that in play. And Divine hears that. शेरिफ ही ले लेता, इससे बढ़िया फिर वहाँ पड़ी थी. That's 2-0 lead. काम तो आती है. PRX once again. That it is. This is where we saw the turnaround and the streak beginning for Gen.G. So PRX. आज टेक्सचर कैसा, टेक्सचर बहुत अच्छा खेला पहला मैच. टेक्सचर नहीं, पूरी Gen.G अच्छा खेली यार, सिर्फ टेक्सचर अकेला नहीं, पूरी Gen.G बढ़िया खेली. तो टेक्सचर ने बहुत क्लीन 2 राउंड निकाले. अरे उसने भी बहुत अच्छा मारा, कैरन ने भी बहुत सही. Yeah, given the compositions once again and PRX. फर्स्ट टूर्नामेंट है वो कैरन का, रुकी है वो. I gotta imagine they have to be looking to throw जो सामने का ये है ना, अभी एक्स्ट्रा खेल रहा है जो. You want to get as many on the attacking half as possible. भाई 2 राउंड बैक टू बैक मार दिया उसने. नहीं करता. उससे क्यों फाइट क्या? ये समथिंग मैंने देखा हमेशा डिफॉल्ट पे खेलता है. हाँ ये अभी उसने मतलब जब स्टार्ट में नहीं कर रहा, पिछले मास्टर्स में भी बिना स्किन के खेल रहा था. ऑपरेटर भी ब्लैक वाली चला था. हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्यों लेकिन ऐसा पता नहीं, चुल है उसमें. ये भैया पोकर खेल रहे हैं, इनको नहीं फर्क पड़ रहा. अरे ये क्या हुआ, उसको दिखा नहीं था क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ. वो मुझे लगा स्पॉटेड है. अरे रे खराब लगा बेचारे के लिए यार. नाइस वन. अगर उसने मार दिया ना उसको. थैंक गॉड भाई. मोनेट भाई ने वेजीबॉय 3 राउंड मार लिया. भाई ये फोर्सेकन का बहुत हाई सेंसी है. फोर्सेकन तो बहुत ज्यादा हाई सेंसी खेलता है भाई, बहुत ज्यादा हाई सेंसी. मतलब वो लिटरली इतना ही माउस घुमाता है बस इतना ही. जितना लो मैं खेलता हूँ उतना हाई वो खेलता है. अरे दिव्यम भाई वो बहुत ज्यादा ही हाई खेलता है. मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, वो ना माउस लेफ्ट टॉप कॉर्नर में रखता है, पूरा कॉर्नर में. ऐसा लगता है कि माउस पैड से नीचे आ जाएगा माउस. अब इतना ऊपर रखता है वो खोपचे में. मैंने तो वैसे भाई अपनी सेंसी और कम कर दी, 0.2 से 0.18 गिरा दी. मेरे को हाई लगने लगी थी 0.2. बाप रे. 800 DPI पे. ये पता नहीं यार, तो देखो गर्मी आ गई तो मेरा माउस पैड स्मूथ लग रहा है मेरे को तो बहुत ज्यादा. हो सकता है क्लीन कर लो एक बार. मॉइस्चर चला गया इसका. मॉइस्चर थोड़ा सा. हाँ. ये मोनेट के जो राइट हैंड में लड़का बैठा है, ये किसी एक्टर जैसा दिख रहा है. चश्मे वाला. हाँ वही तो समथिंग है. हाँ वही समथिंग है, नाम भूल जाता हूँ ना मैं लोगों का. राम गेमर अल्ट्रा, वेलकम टू द स्ट्रीम. ब्रो यूजुअली सब लो सेंस पर खेलते हैं, फोर्सेकन एक्सेप्शन है. और लोग VCT वालों को देख के अपनी सेंस हाई कर लेते हैं. फोर्सेकन का क्रॉसर भी तो बहुत पॉपुलर है. Easily, for the most part, Forsaken was able to deal with those operators as well. When he was the one going into the dimensional drift, ये तो वो है 5 है, ये 5 भी खड़े हैं वो लोग आराम से. अरे भाई ये लोग खेलते ही ऐसा है, सामने वाले परेशान हो जाते हैं भाई, क्योंकि ये लोग इतना A पे W करते हैं ना. वो मिड में डिकोड डाल दिया साउंड के लिए. अच्छा है बिना यूरो. इन तीनों ने क्या एक एंगल क्लियर करे लेफ्ट राइट. मजा आ गया देख के. स्पाइक मोने से प्लान कराएंगे. सही किया भाई, इनको अब निकालनी पड़ेंगी फाइट्स. पांचों बैक से जज कर लेना चाहिए. Gen.G वालों को PRX पे इनिशिएटर भी नहीं है. So PRX perhaps the idea not really Meteor भाई necessarily सोच रहे going for होंगे kills, क्या right? कर They just रहे want हैं. to see we want to snowball as much as possible. We want to keep the weapons we have. Don't necessarily hunt for kills if they die to the spike. 2 मारने पड़ेंगे माइंडफ्रीक मिनिमम. ठीक है. Off the back of that damage there, gets the nice headshot. Yeah, you're going to want to बढ़िया वो ले रखा है इन लोगों ने. alone could be dangerous. तो इधर है, दो इधर है. Yeah, checking all the way back over towards spawn. Heaven for the time being, not being checked. As Lockett will fall, but Karen with another nice shot picture as well. अरे देखो इसलिए बोल रहा था 2 मारने पड़ेंगे. क्या बिफ करा है उसने. ये तो अच्छा हुआ टाइम नहीं बच रहा था. Gen.G doing some damage, recovering some weapons. This is by far the absolute worst case scenario for PRX on that round. Sure, you're supposed to win the round. Yes, you can buy up to most of your weapons.
but giving over those kills and the free weapon upgrades, that allows for the operator to ये still नहीं be भेज भाई, a इसमें considered कॉम लगा purchaser दिया for 5 Meteor. आ गए. That gives Gen.G a ray of hope to इको get था ना back इसलिए into गैम्बल this कर रहे first थे. half. Potentially, I mean, अभी Meteor 5 आ not गए पर gonna मीटियोर give ने ऑफ लगा the रखी है. 4 opportunity to सेकंड की really अल्ट पे swing पर it. मीटियोर तो खोल देगा ना उसके मुंह पे अल्ट अभी. ये Lockyer to try to अच्छा back मीटियोर जेट खेल रहे हैं. bit, but हाँ. with the dimensional drift, मैंने तो अभी देखा है भाई. back away very swiftly. Now the paranoia as well crashing in. लो ये लो देख, कर दिया. उसने क्या किया पता है आपको? हाँ, उसने उसके ओवन फ्लैश पे उसके पीछे ही वो फ्लैश हाँ, उसके अल्ट पे उसने ओवन फ्लैश करा दिया, मुंह पे अल्ट खोल दी. हाँ, अल्ट खोल दी. बस निपट गया राउंड. ये देखो डब्लू दबा रहा है. भाई ये लोग, अरे मैं आपको जब जिंग खेलता है ना दिव्यम भाई, तब मैं आपको बताऊं कैसे करता है. पता है 2v2 होगा ना, तो साइड पे खड़ा होके सीटी स्पन डबल शटल करके मारने जाता है 2v2 में पोस्ट प्लांट. ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड करता है. तुम ढूंढो मत हमको, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे. भैया तो पोकर फेस खेल रहे हैं. And I was gonna say, overall, this is actually one of the first matches where I felt that Divide had very little impact, but For a second तो भाई beast है भाई, beast है भाई, untouchable भाई. फिर 5 आ गए. Still a purchase coming through, but obviously the operator. मिड पे वेट करेगा और टीपी करके आ जाएगा, देखना अभी. Something just आ gonna गया. limit that damage. As the Trailblazer, nice timing, does get cleared out before it can spot him in this position. Oh! Coming in, Texture on the swing. खराब लगा भाई, खराब लगा टेक्सचर के लिए. Dominance continuing from PRX. इतने राउंड इन्होंने अटैकिंग में निकाल देना. वेगीबॉय डिफेंस इनका बहुत वो होगा. retaking control of ramp, but that's about all you get. You try to push in through the smoke. That spells trouble. जिंग शो टाइम जिंग Of the just lack of sound, they're को drifting off. They're मिड moving सीजन away जाना from this पड़ेगा, A तो site. उसको स्टार्ट से ही नहीं खिला I रहे हैं, don't इसलिए blame ऐसा them, कुछ because सीन है. otherwise you're down to a 2-2 split, right? So I वो guess आर्मी they're just सर्व saying, करना listen, पड़ता है worst ना case इनको. scenario, we go for a 45 retake. You या turn the आर्मी cosmic सर्व क्या नहीं divide, we'll see समझा what मैं. they have cooked up. अरे ये So I इन don't blame कंट्रीज them में for ऐसा है ना it. कि They आपको go for the gamble because they don't hear भले the आप कुछ audio भी कर रहे हो, anymore, and it's going to be once हाँ. again 1 साल या 2 साल आपको another आर्मी में जाना ही reset पड़ता है. for Ramps. I mean, you know, they're happy to fight, but they're ऐसा just saying, क्यों? okay, well, आपको नहीं पता है going क्या? for free with no content, नहीं, we'll take नहीं. that as कोरिया well. में और यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई. Off to Monument. Showstopper now online. इतना अग्रेसिव बैठा है समथिंग. आपको आर्मी के लिए सर्व करना ही पड़ता है, तो वो अपना टाइम पीरियड How far do पूरा you really करने के push बाद to फिर try to वापस get this ई-स्पोर्ट्स retake में going आएगा. before you just have to call it off? Lockyer doesn't फोर have to सेकंड को भी take जाना है this शायद, तो line. सोच रहे दोनों को एक साथ भेजेंगे, ऐसा कुछ तो सीन है. पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता है. Sacrificing for the, you know, chancer to try to clean some kills up. क्या आपको पता है ऑगी ब्लू क्यों है? Don't find much of anything there, and oh man, but aside from out of sky with the shorty, Lockyer will be able to find one. Karen now though, last man standing. Push onto the corner. He's gonna be getting the kill onto something. He was down to no HP. Snappy as all hell though. Finds another kill. Goes into the astral form. Sends it to the cosmic divide. Mind Down freaks तो into निकल the गया चलो. paranoia. नहीं, trying टाइम ही to नहीं swing बच रहा the ना wall, उसके keep बाद. he's in behind him. निकल गया. Karen thinking he was up above. I mean, Oh पर man. बहुत गन्स ले जा रहे हैं ना बार बार ये लोग. अभी तो पैसा है, चलो वही तो बहुत पैसा है. कभी बहुत वो जा रहा था. in that chaotic 1v1 when he was just enshrouded in the darkness, but Mind Freak, I've been seeing it watching these games. I feel like we're getting इन्होंने कैरिन को ज्यादा किल पूरे यूरोप में भी यही चलता है क्या? अच्छा, reminiscent of the performances he had back at Masters Copenhagen. मुझे तब पता लगा था ये एक फुटबॉलर है So many impact. टॉन नाम का, उसको जाना था. We can still look at champions. That's true. अच्छा, और अगर आप उसको मतलब एक फाइट करनी पड़ी थी, अगर वो आपको हटाना है ना सेंटेंस, मतलब वो जो टाइम पीरियड था. अब कैसे सब जगह कैसा होता नहीं पता. वो जो फुटबॉलर था उसको एक फाइट करने के लिए बोला था, बॉक्सिंग फाइट ऐसा कुछ. वो फाइट जीत गया था वो, फिर उसको नहीं जाना पड़ा था. अब वो मेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा. 1 साल की मिलिट्री का ये भी सही रहेगा. ये लोग फिजिकली भी काफी वो हो जाएंगे फिट उससे. हाँ, और मतलब ऐसा नहीं ना, आर्मी में मतलब समझ रहे हो आप कि वो उतने सेट ऑफ लोग ही क्यों अपनी लाइफ रिस्क करे भाई तुम्हारी सबकी सेफ्टी के लिए, तो इसलिए सबको ही जाना पड़ता है. बीटीएस वाले को भी जाना पड़ेगा भाई. वैसे कंट्री अच्छी है सिंगापुर. हाँ हाँ अच्छी है भाई, बहुत डिसिप्लिन्ड होती है भाई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. जापानीज लोगों को देख लो आप वैसे, बट जापानीज लोग तो बहुत डिसिप्लिन्ड. और देख के ना गुस्सा आता है. ये कुछ हो जाए, ये लीवर नाइफ लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट स्किन पे खेलता रहेगा. एक और प्लेयर था बीच में डिफॉल्ट स्किन खेलता था, मैं भूल गया नाम उसका. 4 सेकंड तो आरजीएक्स या फिर सोवरेन यूज करता है. कल तो प्राइम चला रहा था वैंडल. आरजीएक्स का साउंड बहुत क्रिस्प है.
jumping forward, trying to see if he can get somebody out in the open. यार वेजी भाई ऐसी ओपिंग सीख गया ना मजा आ जाएगा आपने देखा क्या पिक्सल पे उसने मार दिया अरे दिव्यम भाई क्यों मैं आपको रीजन बताता हूँ अपन को रैंक में इतनी पिक्सल पीक और इसकी जरूरत नहीं पड़ती इन लोग की प्रैक्टिस ही इस हिसाब से करते हैं ना वो लोग अभी आपको कैसे बताऊँ देखो जैसे कि देखो राउंड के बाद बताता हूँ कुछ चीज़ एकदम अच्छे से याद आने दो कभी कभी ये लोग कोई ऐसा एंगल पीक करते हैं ना तो एम ऊपर रखते हैं क्योंकि आप जंप पीक के लिए रेडी रहते हो ना तो इन लोग फिर खेलते भी उसी तरीके से ना जैसा उनको ज़रूरत है अपन को कौन रैंक में कौन इतना बार बार पिक्सल पीक देता है भाई पूरे टाइम या पूरे टाइम कौन जंप पीक कर रहा है भाई रैंक में तो फिर ये लोग ट्रेन भी अपने आप को वैसे हिसाब से करते हैं मैं तो बोलता हूँ बी पे जाओ और बी पे एक स्पाइक टैप करके फिर एटीपी कर देना छोड़ दे प्लांटी कर देगा हाँ जी क्या बना है क्या बना है चाय के साथ देना चाय के साथ No other util to play with. 40 HP. When does he tap it though? Surely this is a fake. No, down to ARGB. Hold. Get it up to half. He's gonna have to do something here soon. The fake TP coming in, but Karon's just stuck to it. That's unfortunate. Just couldn't find the lineup onto the headshot. Meteor will clean up the kill as well. एस्ट्रा जिंदा था ना बहुत ज़्यादा इसका वो हो गया सामने स्मोक जिंदा हो तो साइड छोड़ने का मतलब नहीं बनता उतना जब आप खुद ऑलरेडी इतना लो Until unless आप रेज वीज जैसा एजेंट हो विद नेड तो छोड़ दो This is where it starts. I mean, Munchkin with the call that we can't Munchkin just ने अच्छा keep मारा getting shaken up. अरे वो आईजेल है उनका बहुत अच्छा मारता है वो भी We have to even out the numbers, and this is how they win a lot of these rounds where they don't get the first kill. 5 मैच का है 3 का ही है बेस्ट ऑफ 5 है That's one step in the right direction here for Gen.G. मैं तो बहुत कम मैच देख रहा हूँ जब आपके साथ उस दिन देखा था फिर नहीं देखा हाँ वो तो मैं समझ गया था मैं Most value from the triple duelist. Understandable. As वो जज लेके बैठा है अभी वैसे बुस्सी भरेगा ना bouncing backward. निकलते ही मौत है Much damage taken here. पर क्या Bot comes in, texture decides that's बुला क्या बोलिया ये राइट क्लिक swings up करके in towards heaven. Finds Lock with the right click. Texture ले a भाई little bit more, but पलट देंगे राउंड अप दवाई के पास अल्ट भी है ये राउंड ये किल बहुत इंपॉर्टेंट है या तो फाइट ही मत ले keeps them in with the man कैरन मरा तो राउंड जीत We गए have वो लोग information on two of the members. I'm pretty sure they should have spotted the jet up in heaven as well. ये 4 सेकंड की बलि चढ़ेगी अब हम मेरे को भी लग रहा see if anybody else comes swinging in, but Forsaken. वो वेट कर रहे थे ना उसके पुश का वो ऊपर नीचे बैठे हैं देखो आ भी गया ये There's the timing. बस हो गया राउंड निकल गया One, then gets taken down. They're gonna wait for the lurk from Devi. They still have so much time. अच्छा वो लर्क कर रहा है उसकी अल्ट करा देंगे तो राउंड निकल जाएगा Oh, फंस गया Munchkin राउंड ready यार for it. Now looking for the push forward, something able to win out versus Meteor. मंचकिन सिटी आ रहा पर मंचकिन का एम अच्छा Munchkin है has the pit. पर एम तो उनका भी अच्छा है But does he commit it here? It's still so risky. If he wins the opening fight, there's something jiggle peeking. Not a weapon, ends up falling. Munchkin still though, completely unaware of Mind Freak's position. सिटी पुश कर Just देते rely हैं on his intuition, but now knows. Time is going to be dwindling. Smoke Nice. coming down. Swings out. चल chill. Mind Freak right in the corner, able to find नाइस the राउंड kill. नाइस राउंड ओके मंदार भाई आ जाओ टेक्सचर इज प्लेइंग गुड टेक्सचर इनका हाफ बाय था ना Becomes worse and worse as force time goes on for Gen.G. Yeah, PRX is going to be happy if they can even just pick up one more round here, which is मोनिक looking भाई की very अल्ट possible भी with the देखी भाई आपने economy of this देखी क्या one. A very ऐसा quick kill and exit जरूरत नहीं पड़ी शायद from अभी तक अब कर something on लेगा that मेरे one. साथ And I टाइम want to फ्री में give props to Munchkin. He reads the jump timings onto the jet over from something, and he peeks out right as he knows the jump is landing because he hears the float. But at the end of the day, it's Mind Freak once again. 10 kills and 3 deaths. What an impressive score line. मोने तो 3 किल हुए अल्टी तो आप एक बार करी शायद इसने अल्ट मेरे हाथ पे It's the full flash. He's going to be taken down by Texture with the nade. Angel's finding फिर one बलि down, चढ़ गई Showstopper. Texture goes leaping forward. Sends it into the corner. Mind Freak TP is actually on the back end of the Showstopper going off. Now gets himself tucked away, but the spike for now getting drifted over towards that B site, rotating Net back बेचारा around through the attacker spawn. एज अ डिकॉय खेल रहा है टीम के Way लिए out ahead. He इसने can hear कॉल these दे दी footsteps. Oh yeah, notwithstanding रहा the है? weapon situation, this is the best round Gen.G's looking at so far. There's the one tap, the Guardian putting him down. निकल गया मीटियोर Doesn't want to continue to hold the angle, showing respect to the opponents that he's facing. He pulls back, also very well aware that that sewer lurk could come through from behind.
And the Seekers are going to give Hanji. him at least one. Oh, Oh, my, what? what a snappy shot. Finds one, looks for another. Hadn't got that on the Mind Freak. I might have lost my damn mind. Paranoia going to be sent out. Meteor pulling back over in towards heaven. But now it is just Divide and Mind Freak to try and see ये if they Veggiebuoy can की somehow मार engineer अच्छा रहा है this बेटी और 2v5 retake. Otherwise, क्रेजी Gen.G, प्लेयर है भाई. it was on the tip of my सही में tongue मार अच्छा रहा है. right as the round started, but मेरे को पता नहीं था pushed the इसको go जेट button भी so खिलाते quickly. हैं These लोग. guys, बहुत they're सही यार. thrifties throughout this tournament have been मैंने इसको impeccable देखा था पहले for शायद another one खेलते now. हुए. That's how they're able to overcome so many of these opponents. And Texture has the lineup. 2 more in B main as well. So even if they get through this race, it's a difficult एक one. ले जाएगा ये भी. So with the Sheriff looking for the shot, this time not going to be able to find it. Gravity पर well. टाइम तो Grab बच well नहीं coming रहा. through, time dwindling, 12 seconds. Divine दो tapping खड़े हैं, the राउंड rope. तो जीत गए. Karon just trying to slow them up. Divine able to find one, but he needs to get the plant down. Taps it, fakes it. The round is already over. He's well aware of it. Won't be able to hold on to the weapons. The Thrifty will वेजीबॉय come 2 राउंड या through. 1 राउंड और निकालेगी ना PRX Get तो themselves टफ कर up to देगी 2 सामने rounds. वालों के लिए. We're going to have to go मेरे back को लग रहा and look at तीनों this निकाल entire देगी अभी. tournament, 'cause it अच्छा wasn't इनका just इको आ गया. yesterday. Gen.G, इनको आया ना. they have been मुझे clawing लग रहा है their ये way वाला back into हार के not 2 just निकाल देगी maps, बचे but हुए. entire matches and stages, phases of this entire kickoff tournament to stay alive off of these Thrifties, off of these 4v5s, 3v5s, things like that. And you wonder just what it is. ये And I लगता है think इको में Karon's a 5-man big push. part of it. Just the shots he can make हाँ, with मैं these डाल दूँ. Sheriffs, with these Guardians, things like that. और सेकंड को किल ना दे स्टार्ट में तो ये राउंड निकल जाएगा Gen.G का. हेलो अभिनव भाई कैसे हो? निकाल ले something तो. Testing the limits there, but coming out on top. Trailblazer going to be cleared. Meteor's got the covering fire. Forsaken thinking he was going to have the jump. Ends up getting punished for it. Gen.G looked to get the 3. Pulling off the angle for a brief little moment. Meteor continuing to have his sights trained in towards mid. दवाई मारेगा. Swinging onto the corner. Will be able to find the follow-up headshot through the corner now. Grabwell goes out. For now, बहुत कम देखा है मैंने दवाई को अपना अल्ट यूज करते हुए. formidable opponents on the other side, even if it's just the पूरे Sheriff's टाइम in लर्क ही hand. कराते रहते हैं उससे Extra कहाँ round अल्ट to defend, करेगा. will be able to take out the Divide. That's the spike now stranded. Mind Freak has no choice but to swing in and try to fight. बचे हुए 2 राउंड I feel I'm not PRX sure if जीतेगी. this was necessarily called out in their comms, but Karon not peeking once more after activating the grab well. It just shows how much experience he's gained throughout this tournament as an entirely new rookie. Because obviously, with the grab well activated, he saw that the Omen was still stuck in that area of effect. He could have gone लाकिया for को it, कह but रहे if थे he क्या आप dies रुकी? there while everyone is नहीं waiting कैरन for that लाकिया extra तो duel, the वेटरन है last भाई. duel in mid, that's a rifle given over. One more chance for PaperX to claw back into the round. So he just says, I won't give it to you. I'll wait for more backup to come. कितने and 2 we'll टाइम swarm आउट you ले for the सकते हैं last नहीं kill. पर हाँ. And we only have the timeout calling being called here from PaperX. So I mean, a bit of a moment to kind of talk about Karon a little bit more and maybe explain to those who don't know लिख रहा what है a royal 80-90 road days is. of waiting for Yes, PRX to because lose I guess for play. Karon, देखा this देखा. is exactly that opportunity. It's when someone obviously just enters into that tournament for the very first time and they're able to go all the way to the very end, winning the title. And for Karon, it's not just this tier of tournament, it's not just this event or this series of VCT. It is just everything in the entire professional Valorant ecosystem. This is going to be his first time playing at an official tournament during a regular season. And for him to win a title of Pacific Kings would be nothing short of miraculous. Yep. It's on a good किसने pace. लिया था टाइम आउट? PRX ने Gen.G ने. PRX ने लिया होगा. Let's say they take the series. Right now, Karon making a damn good argument for MVP of this grand final. See what happens. So there's still plenty more Valorant to be played. PaperX still out in the lead by 4 rounds. Gen.G want to try to claw that back as much as humanly possible. Take back from Divide, anticipating some forward aggression. Keeps that staved off for the time being as majority of PaperX find themselves out here in mid. Lakia, however, snappy with a headshot, takes out Forsaken. Something in Moniette, go rushing forward. They will get some nice trade damage back there on the Lakia. Putting him down to 48, but kill is not found. PaperX, they have good position on the map, but they just have no idea how many more members might be near ramp in the site on A, so they are a little cautious, and that gives time for Lakia to get the information he needs to start the rotate over to A. Lakia back in. Ooh, somehow making it out of there with his life intact. Drop down from Moniette. Cannot find the spray. दिखा दी. Come up with a kill against all odds. भाई प्लीज अल्ट कराओ वाइपर से यार. कर दी. Rest of the team rotating over. Divide ready. The pit now going to be invested. All 4 in the pit, though. I mean, this is a gamble if I've ever seen one. Convict Divide
Not sure how much it's going to be realistically doing here for the side of Gen.G. We'll see how they often play around this one, but something spotted the gun barrel. We'll find the headshot there on a Meteor. Just continue to play around the back of the site. Lock finished off. Something coming up with yet another kill now. Updrafts here on top of the screen. Something going huge, Veggiebuoy. Karan pushing forward is able to find one, finds two. Something will get the fourth. Something ने round निकाल दिया 4K. And stop the potential run back from coming through. Paper फोर नहीं X. 3 के Timeout चार working मारे. for them. They get themselves पहला down तो मॉन ने नहीं up मारा ना for 9. Yeah, I नहीं think नहीं it's where you feel मोनेट ने नहीं okay मारा with it, उसने but मारा 9 would make something it ने very शायद comfortable because then you just win that रुको pistol, देखने and with this दो चार मारे composition, something ने surely मुझे you just पता cook up a little, you know, a couple more options for your pistol rounds. Make sure you secure the 2 free rounds on the half off the back of the pistol. And then try to get it. This third kill is just not fair. Right at अच्छा the end चौथा of भी the इसने ही मारा क्या मुझे लगा मर गया हाँ है before he नहीं dashes नहीं out. But the updraft is नहीं smart. फर्स्ट किल तो मॉन ने नहीं लिया There, था they're not going to हाँ hear it फर्स्ट किल entirely मोनेट ने clearly. लिया बाकी के 4 इसने मारे That's now on Forsaken. Starting off this last round of the half very quickly. Rushing forward, judge in hand. He finds Karan. Meteor swinging around the backside of pillar. Able to find one, but now he's completely surrounded. He's going to get just chopped to bits. Yeah, वही रैम स्लर्क मार रहा है Advantage for now going to be here in the hands of Paper Rex. Off left send. Texture swinging out, trying to get the transfer. Can't make it happen. Lakia arrives with the Odin. Munchkin as well up on the Raptors. Takes down something, and now it is all on divide. हाँ Very long walkabout. चलो 4-8 8-4 ही है सही है Locking out. Giving credence to his potential position. जिंग रहता तो सीन डिफरेंट रहता Yeah, you got to suspect it one way or the other. I'm fine with you refilling the pit, but you know where Devi's been playing in that match yesterday against T1. No, he loves those lurks. Now, 50 seconds. I mean, Devi could clear here, go back up to heaven. He's got all the options he needs. मर गया डिवाई Does, but he's going to be spotted. Checking right. Munchkin finds it. Gen.G will be able to finish the half with 4 rounds. Which is more than it was looking like it was going ये to. पीछे क्यों घूमते रहते हैं भाई अनुदीप भाई नहीं नहीं अभी नहीं कर रहे क्या No, I think the scoreline पीछे itself, क्यों both घूमते teams are रहते हैं लोग probably मतलब okay with it, but मतलब given जैसे how ये it आगे started, खेल रहे ना Gen.G प्लेयर इनके probably पीछे feeling a bit लड़कियां better खड़े हैं going into लड़के the खड़े हैं मॉनिटर करने के लिए भाई chances. हैकर वेकर निकला तो Both कोई teams going to be eyeing that अच्छा ever है so तो लगा precious है pistol round, see if they can chain it in to the 2 free wins that would get Paper X just 3 steps away. अनुदीप दिल्ली from अरे trying मेरे to tie बेटे up क्या the हाल है series तेरे 1-1. बच्चा है ये वेजी भाई 10th का बहुत बढ़िया लड़का है ऐसा है क्या It's great to आप see बहुत some बढ़िया तो players out जबरदस्ती मत here, बोलो not just for Gen.G, नहीं but नहीं of सच course में the मेरे को reigning पापा champions बोलता है अभी लिख भी Pacific देगा as well. चैट I में mean, the fan base that they've created अच्छा, here ऐसा है in क्या? Korea after the ये देखो impressive उनको बोलो उनके performances बेटे last आपके year, चैट में आए including देख the लो finals मैंने of बोला Stadium, लिख दिया has उसने been very, very amazing to see. But now they have to prove it once more, a new start in the 2024 season. It's all about retaining that throne here for Paper X. But yeah, I mean that, you know, just their history and camaraderie with DRX throughout the multiple internationals. That मॉनिटर की स्पेलिंग बहुत अच्छी लगी है राहुल भाई आपने which has basically been every वो international टेक्निकल हेल्प के लिए नहीं है until now. Yes. सब कुछ Yeah, आ गया है it's- भाई it's उसमें crazy to really think about the history that the two teams have created, and now we're already seeing a bit of a shakeup, and maybe a little bit more of it as well. मैच As बढ़िया Paper X है are already down 1 map. Now पहला trying वाला to win बोरिंग their था map ये वाला choice to अच्छा लग रहा है split. देखने The में pistol, this is where it starts. It's going to be a 3-2 split for Paper X. जी भाई ये लोग भी 5 मैन डब्ल्यू कर रहे हैं No gate crash just yet. अडेप्टिंग कर रहे हैं अडेप्टिंग DRX not being at an international. मॉन्य मारेगा तो सब हो जाएगा बाकी अडेप्ट तो होते रहेगा मोनेट का अब जो है याद है शुरू के 3 राउंड में 4 किल हुए थे 2 राउंड में अच्छा Yes. नहीं नहीं 3 थे अभी एक तो सेकंड लास्ट राउंड में गया ना Flash is good. Texture gets the back. बहुत बढ़िया लगा ये पिस्टल ही खिलाओ इसे बाकी राउंड निकल पिस्टल- रहा है पिस्टल ही मार अरे 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 बच गया थैंक गॉड That sheriff, but has बहुत to बढ़िया get बच्चा। crashed back across the opposite side of the map. 2 sheriffs. Paper X are just looking to swing at ये अकेला these पुश कर देगा duels. अभी ओह Trying. Arriving, able to find one, giving them back. Karen ने ले लिया Karan, snappy with the first one, the swing out from that killer. यार रुक जाते हैं फॉर सेकंड के लिए यार Almost all on Forsaken. Low HP bar. आधा था वो भी 70 है Off पर the वो enemy 2 बॉडी तो Astra. लगेंगी Still more work to be done. अच्छा कर रहा है पता है सिटी He's से down जा the रहा है stairs, but this is going to cost him a significant amount of time. Yeah, he's just कर gonna need लेगा to अब swing at the एक्सपेक्ट ना last उसको जब second. थोड़ी Get देर हाँ चलेगी। निकाल दिया राउंड निकाल दिया वेजी भाई लेट्स गो माय Getting up the बॉय headshot seemed like that would have आपने देखा आपके भाई का been रीड such a था वेजी भाई devastating loss, but मेरा भी Paper Hello, अलग content था। room. Gain dominance in these pistol rounds now 3-1. They will get up to 9. Onyet still has a statue in that corner, and you just don't suspect it in the pistol round. Especially after, you know, the guiding light hits, you see one person flash, there's just no reaction, no spray, nothing else.
Gen.G thought they had it all. But the double kill stabilizes just enough. I was afraid that we saw the double team of Divide and something trying to go for the early peaks before Forsaken was able to arrive, but dwindling the numbers down just enough. And now double Outlaw. Yeah. They want to snowball as many rounds as they can, because listen, just one round here and then maybe another with all your ults online. Hello, man. You're close to the win. I think one Outlaw, easy enough to read. Do you expect that there's going to be two? I mean, it's such a commitment too. Forsaken looking for it. The shot. Bhai TP kar le. Hey, he got 2 bullets. Swings further out, finds Karon. And they still don't even know that something has one over in this A site, which is where they're about to start heading. Yeah, the gate crash. कल मेरा पेपर इंग्लिश. अरे इंग्लिश की भी कोई टेंशन होती है क्या? Gets some kind of armor when he tries to gate crash out. Always so good with it. Something now. Sends the shot. Nice. Forward, able to find one, but runs out of bullets. Lakia is able to take him down. वेज भाई आलू के पराठे खाओगे क्या? More damage from here though. अरे यार आज भैया नहीं आया वैसे भी बीटी में दो. मम्मी बना रही है. गाली की क्या बात है इसमें? टॉक्सिक हो रही है. A lot of value off of this new weapon introduced here in 2024. And they can continue with it. Now most people on Gen.G इसीलिए तो मैं आपका स्ट्रीम देख रहा हूं. वैसे मार्च 13 के बाद से अपन खेलेंगे. all bought up to things like marshals and sheriffs, but with the shots that these ये तरह players मनुष्य है जी मेरा अगेंस्ट में आया, मैं हार गया, मेरी टीम हाई रैंक है क्या? फिर भी हार गया. क्या? हाई रैंक प्लेयर है क्या? हाँ ये असेंडेंट 3 मॉडल ही है. ओहो क्या बात है अनूप दिल्ली. मतलब 10 में मतलब ब्रेन डेड ही होगा, सिर्फ एम पे खेलता होगा. अरे बेजी भाई ये मेरा अगेंस्ट में आया, मैं हार गया, मेरी टीम में आया, मैं जब भी हार गया. कुछ लोग होते हैं आपका इलो लेने ही आते. और आप मानोगे नहीं, जब ये मेरे अगेंस्ट में आया फ्रैक्चर था, जबकि बहुत पुरानी बात हो गई, तो बहुत गंदी टीम. देखो 20 एचपी पे निकल भी गया और एक किल भी ले गया. अरे मोनी कर दो जादू, कर दो जादू, कर दे चढ़ाई. जी जी भाई. हाँ बता रहे थे कुछ. बोलो फ्रैक्चर के टाइम की बात है, काफी टाइम हो गया जब से खेला नहीं मैं इसके साथ. क्या लगता है कौन जीतेगा टूर्नामेंट यार? पता नहीं, ऑन पेपर तो PRX ही लगता है, बट चाहते तो बेजी भाई एक ही टीम को है. नहीं, मुझे जितना प्यार फनेटिक से उतना ही PRX से भी है. जितना प्यार डरके से उतना प्यार फोर्सेकन से भी है. एज एन इंडिविजुअल तो फोर्सेकन डरके से भी ऊपर है भाई. इस गेम मिटियोर भी इतना कर नहीं पाया, बेचारे को मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने. मरा, ये मरेगा पता था. क्रेजी है यार, ये मेरे जैसा ही यूं खेलता है जी भाई. मेरी बस यही सुनना बाकी था. जो इतना अच्छा यूं खेलता हूं मैं. वही तो कह रहा हूँ. अब मैंने गलत थोड़ी बोला. चलो मोने भाई का केडी तो आ गया एक का. मोने भाई जज करो आप. एक और प्लेयर है रेस पे जज चला रहा है तभी किल होते हैं. मोने भाई आप वेजी भाई की स्ट्रीम देखते हैं. वो भी पिस्टल में मार लेते हैं, उसके बाद गेम को पता. अरे वो Gen.G फैन की तरह चैट में ये कुछ बोल नहीं रहा होगा. भाई मैं हूँ Gen.G फैन. अरे कटरिंदु भाई कैसे हो एपेक्स भाई? अरे रोहित भाई अभी तो यहीं थे, मैच जीती है तब तो बराबर बोल रहे थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए. रोहित शर्मा किधर हो भाई? शर्म आ गई होगी ना. नाइस. 13-5 हारे और 13-4 जीते. भाई यहाँ से कमबैक हुआ तो यहाँ से नहीं देती, PRX नहीं देती भाई. हाँ ये लोग किसी एक राउंड में मिड पुश करके जीत जाएंगे. देखो अभी समथिंग की अल्ट आ जाएगी, 4 सेकंड की अल्ट है, मोनी एक किल पे अल्ट है. वही है ना, मोनी का किल का वेट करना पड़ता है. नहीं डेथ से भी तो. अरे हाँ भाई ये देखो आप टॉक्सिक हो रहे हो. Just one more round is all they need. ये अभिनव भाई मेरी ओपनिंग के लिए क्यों टॉक्सिक हो रहे हैं? अभिनव भाई आपके जैसा तो नहीं हो, 3 किल करके बोलूं देख लेंगे फर्स्ट ब्लड किसके ज्यादा है. मुझे 3 किल पे एटीट्यूड दे रहा मुझे. देखो जानबूझ के ऐसा स्मोक कराया, पता है उसने. बेचारे 4 सेकंड को बेट कर दिया.
taken Mind out. Freak Mind ने Freak fighting one, Maniac getting the other. TP in the backside. Shows हाँ up ये again, जी Maniac जी blowing Karen to दवाई भाई पे smithereens. रीड तो है That's the kill. अरे Maniac on the हल्दी rope somehow winning out that fight, but he's now got to rotate all the way चलो around his spot and he doesn't get the ये opportunity. दूसरी टीम का क्या नाम है We'll finish him off. अरे यार ये फिर आ गया 13 to लेम जोक्स 4 करने in यार response to the 13 and 5 loss on Ascent. Ladies and gentlemen, we have a और series ले लेगा on our टॉक्सिक हो hands. रहे मॉडल 1 हार्ट No स्टक trios. अरे 2 किल वाला रेना बोल रहा है ब्रीज पर रेना इंस्टा लॉक दो And I love the confidence 2 of किल both कब करे teams. भाई? तीन थे तीन थे तीन थे तीन थे भाई झूठ तो मत बोलो, 1 किल तो कम मत करो। दिव्यम भाई खाना क्या ऑर्डर करूँ बताओ बुखार के तहत आप भी आलू के पराठे मंगा लो बेस्ट। मुझे लगता नहीं आलू का पराठा खा पाऊंगा मैं तो फिर दलिया अरे चुप यार सूप लिख रहे हैं राहुल भाई। सूप अरे यार सूप वेजी भाई सबवे वब्वे कुछ मंगा लो हल्का हो जाएगा यार सबवे फिर वो कोल्ड होता है ना अंदर से नहीं यार यार ये भी है लेकिन सबवे लगता बढ़िया है। लगता तो हाँ है तुम्हें तो बढ़िया लगेगा जहाँ पर अच्छा सब सबवे में तो मल्टीग्रेन वगैरह भी आ सकता है तो आप काउंटर दे दोगे अभी चाप और रुमाली रोटी मंगा लो। बस देखो देखो आगे अनिल दिखाने पे आगे ले देख हेलो कंटेंट रूम अच्छा ये वाले फोन में चैट अपडेट हुई मैंने यहाँ पे देख लिया मुझे लगा मैंने आपको वेजी भाई आपने मॉनिटर एक लगाया ना राइट साइड? हाँ लेफ्ट में हाँ मतलब वो इधर से मेरे को राइट ही लग रहा है ना हाँ, देखने में। हाँ। तो वो आपको दूर लगाया काफी जस्ट साइड में ही है तो जस्ट साइड में पर ऐसा गर्दन पूरा 90 डिग्री टिल्ट करना पड़ता है रूम में हाँ वही ऐसा देख के लगता है कि आप बिल्कुल दूर वाले एक मॉनिटर पे चैट पढ़ते हो। हाँ कहाँ मैंने सोचा था आज पूरा दिन सोऊंगा ना नींद आई ना कुछ। भाई देखो सोना तो हराम है मेरे हिसाब से। जी भाई थोड़ी बहुत देर तो सो लेना चाहिए क्योंकि सिर में दर्द हो जाता है और जो होने लगा मेरा थोड़ा थोड़ा। पूरे 5 मैप तक उठा के रखूँगा। नहीं उठा तो वही हूँ उसकी तो कोई तो या दिक्कत तो नहीं। दुआ कर लो PRX 3-1 जीत जाए फटफट एक मैप आपको PRX कम जीत देखना गई है मैं बता रहा हूँ मेरे को बहुत गंदा फील है PRX जीत गई है। नेक्स्ट मैप कौन सा है? वो था ना सनसेट लोटस। लोटस है क्या? लोटस यार रुको जेनजी ना, का। back अरे करके नहीं लोटस है। लोटस जेनजी का बहुत अच्छा है यार। अरे ने बोलो $5 इसलिए। अरे दिक्कत वो है ना फिर ये रेस अपना मॉर्निंग रेस खेलेगा ना इस पे। हाँ अपने रेस के थोड़े किल रुक जा रहे हैं बाकी तो मैच जीत जाए। कोई पूछे भाई आप हारे क्यों? भाई हो तो सब रहा था बस रेस के किल नहीं हो पा रहे थे बाकी सब हो जा रहा था। भेजी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूरे 5 मैं उठा के रखूंगा। वाइट सॉस पास्ता मंगा लो। अरे पास्ता मैदा वैदा अभी कुछ अनहेल्दी नहीं खाना। अरे लोटस पर 4 सेकंड खेलेगा साइफर। अरे उससे क्या होता है लोटस पे तो वो बोर्डिंग भी चलाएगा अभी देखना। यार साइफर प्लेयर तो मैं ही हूँ भाई असली। अभी देखो आप ये 5 मैप खेल रहे हैं ना लोग। 5 मैप पे अलग अलग एजेंट खेलेगा 4 सेकंड। देखो उस पे खेला पहले फेड अभी ये खेला है योरू। लोटस पे खेलेगा साइफर। बाइंड पे वो खेलेगा वापस योरू खेलेगा शायद और ब्रीज पे भी शायद योरू खेलेगा। ओहो बाइट आज में तो मेरे को यूरो बहुत ओवरपावर्ड लगता है। अरे 4 सेकंड का यूरो आपको पता नहीं है कितना क्रेजी है अभी। और हाँ वही तो कह रहा हूँ 4 सेकंड से बढ़िया यूरो नहीं खेलता कोई भी स्पोर्ट्स में अभी। और रैंक में मेरे से बढ़िया। बात तो है। थैंक यू। बातें अच्छी करते हो बस करा मत करो। माइक म्यूट करके करा करोगे भाई ये सेम बात है। नहीं ये फुद्दू जोक नहीं मारता मैं इंटरनेट वाले। अरे आप मेरे को एक बात बताओ आपने क्या बोला था मुझे हाँ सूप पीना चाहिए क्या मुझे? देख लो मेरे को तो अच्छा लगता नहीं। आपको अच्छा नहीं लगता सूप? नहीं। आपको हेल्दी चीज़ें और खाने से पहले ये सब चीज़ खाने वाली चीज़ें कहाँ पसंद होगी? फिर जो है मैंने सोचा है पता है क्या जिम विम शुरू कर देता रहने दो जिस दिन जाओगे उस दिन बोलना। सोचने में तो मैं भी बहुत टाइम से बहुत कुछ सोच रहा हूँ पर हो नहीं रहा है मेरे से। तो आप भी करोगे ना उस दिन बताना मेरे को। सोचने यार वाली भाई आप टॉक्सिक क्यों हो रहे हो? सोचने वाली बातें मत करो कह रहा हूँ। तो टॉक्सिक क्या होता है भाई? देखो अब मैं कल से जिम शुरू कर रहा हूँ। आप अभिनव दिव्यम भाई एक ऑनेस्ट बात बता दूं। बताओ जिम तभी चालू करना जब मिनिमम 1 साल का पेशेंस हो आपके लिए तो वरना चालू मत करना। हाँ वो तो पता है भाई थैंक यू।
क्योंकि आपको पता है ना, आपका शुरू में तो वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आपका वो वाटर वेट जो होता है पूरा वो हाँ पहले वाटर निकल वेट जाएगा। वो पहले भी मेरा 8-10 किलो गिर गया था हाँ, एक तो साथ। वो फिर वो बढ़ता भी वापस ऐसे ही स्पीड में, जितनी स्पीड में कम होता है वो। हाँ वेज भाई 2 महीने लगा के गिराया था और 3 दिन में बढ़ा दिया था। तो वो हुआ क्या ना वेजी भाई, पूरा मेरा 7 को बर्थडे होता है, मेरे भाई का 3 को होता है। हाँ, तो तो दो 3 बैक से टू बैक 7 बर्थडे की सेलिब्रेट हो गए थे क्या? हाँ तो 3 से 7 की ड्यूरेशन में इतना खाया था, मतलब सुबह को छोले भटूरे, दोपहर को चाइनीज, शाम को केएफसी और रात को सबवे। कीबोर्ड पे आप बैठे वाले सोचो। जिम की बातें नहीं छोड़े। अबे चल बे 12वीं के बच्चे, भोसड़ी के 4 दिन जिम क्या गए बहनचोद, ज्ञान देने लग जाएंगे। और मैं तो चेस देखता हूँ ना भाई, मैं तो इंटेलेक्ट हूँ भाई। हंस रहा है बेशरम, अब देखो चैट में। हेल्थ वालों का होता है वेजी भाई, थोड़ा गाली खा के खुश हो जाना। अब दिव्यम भाई, अब मैं एक बात बताऊँ आपको। बताओ ना। 6 फुट 2 इंच के आदमी से मसल कंपैरिजन करते हैं 4 फुट वाले। सच्चाई है, और जैसे मैं 6'3" का हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए जितना ज्यादा मुश्किल है ये स्क्वाट करना, उतना ही 4 फुट के लिए आसान है। क्यों? क्योंकि उनका डेप्थ इतना कम है, मेरे को नीचे जाने में मौत आ जाएगी। मेरे लिए पहाड़ की चढ़ाई है, डेप्थ तुम्हारे और लिए क्या भाई, है? और भाई है ही क्या भाई, इतनी से तो बॉडी है तुम्हारी। हाँ, नीचे हुए नहीं तुम्हारी हाइट खत्म हो गई। हाँ भाई, नॉर्मल मुझे स्ट्रीम नीचे कल से उतरना होगी इतनी मुश्किल दिव्यांश है। भाई। 12वीं के बच्चे के भी ओपिनियन सुनने पड़ेंगे भाई। भाई अब अरे एक दिन क्या हुआ, एक बच्चा एक लौंडा आके चैट में ज्ञान दे रहा था। हम्म अब एक पॉइंट तक सुना मैंने, देखो या 4 सेकंड यूरो पे आ गया, देखो फिर अच्छा नहीं है तो पुराना दिखा रहा है। बोलो बोलो। फिर मैंने बोल दिया 16 साल के बच्चे से अब मैं टिप्स लूंगा क्या भाई। चैट में हंस पड़े सब भाई, पर बात तो रियल है भाई। अरे एक दिन हुआ था ना, जब अभिनव भाई मतलब अभिनव भाई को पता है, तो एक बंदा आके वेजी अभिनव भाई भाई फुल वो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, वो भी कम थोड़ी है। सुनो तो सही, वो बंदा आके पता है क्या कर रहा है चैट में? वो ना मेरे मैच में आया था बंदा, मैच में, तो मैच में आने के बाद चैट में आके अपनी अमीरी दिखा रहा था। हाँ, मेरा पीसी $2000 का है और मैं बहुत रईस का बच्चा हूँ, ये वो करके उसने बड़ी ही अपनी अमीरी पेली मेरे सामने, बहुत ज्यादा। ठीक है समझ अब गया। अभिनव भाई आके चैट में लिखता है, अबे सुन, जितना तू और तेरा बाप पूरे साल में कमाते होगे ना, उतना एक महीने का प्रॉफिट। देखो ये देखो, ये पैसा फ्लेक्स करता है अभिनव, कितना गंदा आदमी है भाई। वही भाई, फिर मैंने भी बतरा की घड़ी दिखा दी। बतरा की CR7 की कोई घड़ी है, डेप्थ वेजी भाई रेंज ऑफ 13 मोशन लाख बोलते की। हैं उसको। ठीक है, आप समझ गए ना शो टाइम यार, हर कोई नर्ड नहीं होता ना, कभी वो उतनी जिम करते नहीं, तो उन्हें अभी उतना पता नहीं है। जब धीरे धीरे करेंगे तो उन्हें ये भी सीख जाएंगे टिप और टर्म्स सारे। वजी भाई आप आईआईटी में थे क्या? आईआईटी में होता तो ये कर रहा होता क्या अभी, उतने की मेंबरशिप गिफ्ट कर देता हूँ। नहीं नहीं वेजी भाई, IIT वाले भी यही करते ऐसा है क्या? हैं। IIT समोसे भाई खाएंगे। मेरे से ज्यादा दिव्य भाई ने गेंद मारी थी, दिव्य भाई आपने ज्यादा गेंद मारी थी बोल रहे हैं दिव्य तो, अभिनव तो। वेजी भाई, मेरा मानना तो कब पर अभिनव के नाम पे बिल फाड़ रहे हो आप, देखो ये आ गया। मैं तो स्ट्रीमर हूँ, मैं तो मारूंगा। ले भाई मैंने तो रेना, इसका समथिंग ऑन रेना इज गुड, समथिंग ऑन जेट इज नॉट गुड, समथिंग ऑन रेना इज गुड। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। I mean, why रेना not? Yeah, रेना or आई when लाइक you दिव्य go भाई, for आप तो खुश होंगे रेना देख के। you're trying to play वेजी off भाई the device flash. क्रेजी प्लेयर ही लेना खेल पाते हैं सिर्फ। Right? Like, you're trying to बराबर set up kind बराबर। of those staggered, you know, Lear एक्चुअली में जो क्रेजी होते हैं ना flash. दिमाग से, जो सटिया Really can, you know, make बदतमीजी मत things करो। work really nicely for the side. ये वाला मैच तो We've जीत seen it गए। on a set before. And, आसपास भी अगले खेला था, मैच पता है की तैयारी आपको? लाउड में आसपास नाम का प्लेयर है, जानते हो? change versus हाँ हाँ last वो time. तो पता है यार। हाँ, इतना उसने भी आइस बॉक्स में खेला था, लाउड का लेवाइथन में है अभी, Really good on this map उसने last भी time. रेना खेला था। और कांग भी खेलता है बाइंड पे, समथिंग बाइंड पे भी खेलता है, समथिंग असेंट पे भी खेला था लास्ट सीजन। रेना, हाँ वो देखा था। रेना तो ई स्पोर्ट्स में पिक रेट 0 था, मैंने देखे देखे। 0 किसने बोला है भाई? Very much. Here we are. 0 थोड़ी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। The Reina, but यूरू का जैसे बहुत गूदा चाहिए भाई, गूदा चाहिए रेना लेने के लिए, बस और कुछ नहीं है। still not जब तुम्हारे पास समथिंग जैसा प्लेयर हो, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये कुत्ता बना के मार ही देगा, Hey, you know what? तो फिर दे दो उसको। Why not? आसपास ने लिया था तब मैं सरप्राइज हुआ था I भाई। think one of the ways they were able Very to brave of have, Leviathan you know, to take decent that success decision. against Gen.G's Lotus the first time around was with the बाकी double कांग duels भी and खेल ही Gen.G सकता है, बाकी had just चाइनीज और अपने really एपैक वाले तो won है ही seasons. दलेर A भाई lot of एकदम, other teams have वो been लोग तो having लेते ही trouble है। with that. Now with the Reina, you basically have to send Monyet in on an island again if you want to go into that site. But of course, again, lots of flashes, lots of projectiles. कास्टर ने तो बोल दिया कि मोनी भाई फिर से बेट होने वाले। Okay, looking for the creep across, but they do get the reveal there on a Munchkin, but he and Meteor together gonna be
ले दोनों की बुस्सी भर दी। आ गया ये। ओहो हील हो जाता थोड़ा यार पहले तो। हाँ ये बॉय अब हुआ ना प्रॉपर 3v3 विद मंचकिन डाउन टू 6-3। लेट्स गो। वापस बी चले आते तो मजा आ जाता यार थोड़ा सा। क्या बोलते हो दिव्यम भाई, कहाँ जा रहे हैं ये राउंड? अभिनव भाई कल रात को खेला है योगेमो डेडलॉक खेला है कल, आईसो का 0 है। कल रात को योगेमो खेला है डेडलॉक, मेरा मन तृप्त हो गया। है ही नहीं ऐसा एजेंट। आईसो ऐसा नहीं आप रेना खिला सकते हो तो फिर आईसो भी ले ही सकते हो, रेना से तो ज्यादा ही अच्छा आईसो। अरे नहीं रेना ज्यादा बेटर अरे है। रहने दो अरे रहने दो भाई, उसका वल्नरेबल जब मिलेगा ना साइड पे एंट्री के टाइम और दीवार के पीछे पीछे भाग के जब घुसेगा आपका एक प्लेयर। वेजी भाई आपने उसका स्पीड रन करा, आपको अच्छा लगता है? मेरे को आईसो ट्रैश लगता है, उससे खराब मेरे को डुअलिस्ट नहीं लगता कोई। अरे यार जो प्लेयर रेना खेलता है वो आईसो के बारे में बुरा बोल सकता है, फिर तो कितना दोगला इंसान है वो, क्या ही बोलूं मैं। मेरे को आईसो अच्छा ही लगा, आज तक खेला ही नहीं गया, एक गेम खेला मैंने आज तक आईसो में बस। अरे यार जीत गए, PRX वाले जीत गए। डॉग बढ़िया लगा मेरे को। अब ये पॉप फ्लैश करके डबल पुश हो जाता। हाँ पैरानोया अच्छा यूज हो गया। जीत गए, PRX वाले जीत गए, मैं बता रहा हूं। अरे जल्दी मारो इनको, पीछे से आके ना भुस्सी भर दे। देखो ये आ गया, देखो ये सारे इन्वेस्टेड है उधर ही। कैमरा तो लो, तुम्हें नहीं पता है दिव्यम भाई स्पोर्ट कैसे चलता है, अभी आप रैंक प्लेयर हो। सॉरी डब्ल्यू दबा देता। वही तो बोल रहा हूँ, जल्दी मारना था सीटी वालों को यार। What a monster! I thought PRX had everything set up. They had the trip, they had the क्या चाय kill to बनाई make sure मम्मी ने, they मजा आ spot, गया। so you गलत don't ट्रिप have हो गया someone मेरा। who's sneakily यार trying to मैंने go भी for the सुबह key पी है fuse. अदरक वाली It चाय। was good. It was meant to keep Karen at bay, मैं तो but दूसरी बार पी Munchkin रहा हूँ। is just able to push through the मुझे तो smoke पसंद at नहीं the है तो right मेरे को time, सब वो हो catches रही है ना, set up कोल्ड for हो रहा है Zayden अभी at तो the इसलिए last minute. मैंने मंगाई। Picks him off through the बस मुझे तो smoke, चाय feeding पसंद off the energy है। of the डिस्कॉर्ड पे crowd बैठे हो here. क्या? आना है आप आ जाओ यहीं पे, चलो आ जाओ आ जाओ। कॉफी वाले आदमी हो आप तो। हाँ पर बेकार चीज़ें लत नहीं लगनी चाहिए कॉफ़ी की। मैं चाय की ना लत लगाने के लिए कॉफ़ी की लगा दी और अब पता चला कि एक ही ट्रैप, उसी ट्रैप में फंस गया हूँ। वेजी भाई मेरे दोस्त को दिक्कत है बीपीवीपी की। वो दिन की 13 से 14 कॉफी पीता है और उसके लेजिट नाक से खून भी आ जाता है। हाँ तो आएगा ही ना भाई, इतना वो करेगा तो एंजाइटी भी होती होगी फिर उसको। होती है एंजाइटी? हाँ तो बस होगी फिर। और उसे मैंने गाली दे दे के मना करा पर वो पीता है। मतलब डायरेक्ट कम मत कराओ उसको, बोलो कि 13-14 तो बहुत ज़्यादा है यार, कम से कम 3-4 पे आ जाए एक बार। धीरे धीरे ही कम होगी क्योंकि डायरेक्ट तो छूटती नहीं है। बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। क्या ब्लैक कॉफ़ी पीता है कि क्या पीता है? अलग अलग फ्लेवर की करके रखी है, मेरे को इतना कॉफी का नॉलेज। तो मतलब विदाउट मिल्क वाली पीता है ना मतलब? हाँ क्योंकि मिल्क वाली तो इतनी पी भी नहीं पाएगा। समझ गया मैं, वो फ्लेवर वाली जो आती है। मैंने कभी पी नहीं फ्लेवर वाली। Texture a little scared. He's a little trapped with only 10 HP. लिंक भेजो। वाह वाह वाह, अभी आज तक आपने मेरा डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन कर रखा। एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्कॉर्ड लिख दो, चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्कॉर्ड लिखो या फिर डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है। Just the one kill is all it's going to be as Gen.G taking the first 2 rounds here on Lotus. पिस्टल राउंड निकालना था। नहीं यार भारी पड़ेगा वो राउंड, क्योंकि अपने को दोनों पिस्टल चाहिए भाई अगर Gen.G को हराना है ये मैप तो। मोनेट भाई ने नहीं मारा ना, ये क्लीन तो एक ही है। Surely PRX will reconsider that in the future against other teams, or maybe even if they face Gen.G once again. As this is a map that Gen.G has felt very कितना क्यूट है भाई confident लाकिया, बहुत on क्यूट throughout है this यार, entire kickoff. छोटू सा एकदम। Pseudo-Fi लग Sharp रहा eye है। coming in here from PRX. Paranoia Pseudo sent का their लग way. रहा Paint shells just driving them out and over towards Meteor. ले भाई। He's got the outlaw in hand. Finds 2 kills, just the classic for the backup here. भाई कोई इसको बचा लो थोड़ा सा। Munchkin now arriving, but खराब लगा भाई already मेटियोर managed to भाई। push forward and take him down. Weapon is grabbed. Munchkin finding him, looking for more. Forsaken swapping back over to the Sheriff. Gonna be good. Just pick up yet another kill here. दो मैप तो Gen.G जीत गया। कॉफी से गेम प्ले में कितना परसेंट फर्क होता है? कुछ नहीं होता है। But Gen.G's movement around the map have been very quick. The moment they get contact, they are able to shove अरे मैंने ऑर्डर तो किया ही the नहीं। other side of the map and just tighten the जब से आप अपने ऑर्डर के वेट में बैठे थे डिसाइड नहीं हो पा रहा ना कि क्या खाऊं। approaching these sites at all in these 2 rounds. ये तबीयत तो हो जाएगी ठीक, जो बना है वो खाओ। नहीं तबीयत तो ठीक हो गई है, वो गला ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ और खाऊंगा उल्टे से तो फिर वापस बिगड़ जाएगा वो। आप तो घर पे रहते हो ना भाई, मम्मी कर देती है भाई सब। यहाँ दवाई भी लेने का खुद ही गया था, चला नहीं जा रहा था फिर भी।
turret, the nano swarm, यार आप whatever बता needed, देते the आपके लिए alarm उससे bot ऑर्डर कर assisting देता for those मैंने one-shot kills. क्या नहीं, पास में ही यार, हर चीज़ ऑर्डर भी नहीं She's करनी ready for चाहिए। this. Something trying to rush in. Does mention catch count by surprise. Gets the kill on the Textures. समथिंग का ये बढ़िया लगता है जो डिस्ट्रिक्ट लेके आता है ना, Covering fire, comes up with 2 more, and suddenly it is just मेरे जैसा Meteor by बिल्कुल himself. पड़ेगा। बराबर बराबर। It is nice to see the और dismiss be a हेलो work कॉस्मिक of art बरेटो, once 4 again. सेकंड भाई बेस्ट फ्लेक्स प्लेयर है, सब खेल लेता है बंदा, तभी तो मेरा फेवरेट है। Right up here against the smoke here. आई हेट वन ट्रिक्स। Run forward. Instant headshot from Meteor, but एक और हेडशॉट हो जाता है मीटियर भाई तो। no. अरे यार, Now pull back. स्मोक कर दिया। Wait आप for the स्क्रीन reload. पीछे जल्दी और रिफ्रेश कर लो। आपके में टाइमर बताओ। Sheriff in hand. Spike प्लांट now हो गया, planted. स्पाइक प्लांटेड 3-0 डॉग कर रहा है। Trailblazer at the ready. डॉग चालू कर दिया। हिलजॉय के पास पहुंच On गया the डॉग। hunt, seeing what he can spot. So far, it's just the turret. ये थोड़ा सा पीछे करो, राउंड के बाद रिफ्रेश You're करो। managing to avoid getting detected here. He's gonna push downstairs. The double swing could be brutal for him. Spots लो one. कर दिया। Work down at 12 HP. Solo snaps over, finds him. Looks for अरे the डर shot. क्यों गया? Barely misses. इसको पता नहीं ना Four इसने bullets वॉल remaining बैंग in मारा। the Sheriff. Time dwindling. Meteor, can he do the impossible? यार ये थोड़ा सा जस्टिस चाहिए मुझे स्काई वालों के लिए यार, प्लीज यार, एक क्लैश तो चाहिए लेट राउंड यार, कुछ बचता ही नहीं है भाई, Stays still, कुछ gets नहीं the बचता kill. लेट राउंड यार। But good lord, so much damage dealt ऐसा क्या there. इनिशिएटर है भाई? सोवा का रिकॉन और ओमन के फ्लैश स्मोक भी रिफ्रेश करने बंद करो फिर। Man, I was worried when he stood still for a second there because Meteor's goal was clearly just take down all the weapons because we will continue to stride ahead. I'm real scared when Meteor got the first shot, but this is why you use Arena. If you're able to get those first kills, Mind field में create मारा। that aggro, and then the rest of your team can follow up once. Hunt for something like the Reyna anymore. टेक्सचर भाई 0, मोनिया भाई भी 0। देखते हैं कौन सा रेस पहले खाता खोलेगा। लेट्स गो। ये लोग पता है अच्छा नहीं कर रहे लाइनअप। मैं बताता हूँ आपको, कल जो टीम्स खेल रही थी ना, वो लोग बी से लाइनअप कर रहे थे फेड के वो उसका रिवील का, वो बहुत अच्छा लैंड हो रहा था वो ऊपर। Downstairs, smoke about to dissipate, pulls back around the corner as वो Texture रिवील ज़्यादा बढ़िया था comes इस up on a वाले से। very deep angle, टेक्सचर बहुत बढ़िया पुश करके गया। knowing that this is everybody stacked up on the A side वो here. हर राउंड सी पुश जो कर रहा है, पिस्टल में भी तो सी पुश कर Damage रहा on है। Divide through the wall there as he tried to take that orb. Spamming. Caron now sitting on that. अरे ये लोग बिल्कुल ही अंधा डब्ल्यू करते हैं ना, तो इसलिए बैक स्टेप जल्दी होते हैं, ऊपर से सेंटिनल भी नहीं खेलते हैं, और इस मैप पे तो है। अल्ट भी कर दी ना, फुल ले ली। पर वो ट्रैप भी तो लगा नहीं रहा है 4 सेकंड बैक स्टेप का। आप ये तो देखो क्या डब्ल्यू दबा रहे हैं 3-3 बंदे। हमारे मोनिया का तो खाता खुल गया। टेक्सचर भाई आप, वेजी भाई आई कांट सी योर वॉइस चैनल। आप किसी में भी ज्वाइन कर लो, मैं आपको ट्रैक करता हूँ, किसी में भी ज्वाइन कर लो। एपेक्स भाई मैं आपको ट्रैक करता हूँ। With the Reyna now, you've got 3 agents on the side of PRX who don't really rely on their ultimates too much. You're not really looking at those ultimates ये to मेरे को तो turn बस an इस मैच को entire जीतने के round, बाद ना you know, दवाई on भाई its के head. चेहरे पे एक Sure, स्माइल Neural देखनी Def है। does help a lot if you're able to get the first kill. But outside of that, and yes, the Reyna with मुझे the लग रहा है burst भाई can मेरा go for some जिंदगी सफल हो insane जाएगी इसके clutches, a चेहरे lot पे of एक स्माइल aggro. देख के। Again, not things चैट that में really लिख रहा हूँ simple as ड्रैग मी well. ड्रैग मी I ड्रैग was मी curious that they're using that What to do you know load about a spree Sorry, and sorry, try to sorry. greed for those ult orbs on the attack. Maybe just trying to say that we want मैं to हाथ go धो up के आया भाई, slowly एक up मिनट। to the आ जाओ, site आ just जाओ। like they did on A. Ignore that C हाँ, site. ब्लूटूथ That's में difficult to break through. वेजी It भाई is मैं Gen.G ब्लूटूथ setup. Continue to खाना खा work रहा था around भाई। that revolving door with अच्छा, things अच्छा, like the ठीक Leer. ऑप्शन नहीं आ रहा। मेन वेटिंग रूम, नॉट, नो यू आर नॉट अलाउड। आरियोस बाद में आता, आ जाओ कंटेंट रूम बाद में आराम से। भाई ये टैक्स से पीएस के नॉट है तो ऑफ लेके टीम को बाय करा पूरी टीम ने। अरे ऐसा भाई यहाँ पे किसी प्लेयर के अगेंस्ट हेट नहीं सुनूंगा मैं। मैं हेट नहीं, मतलब ऐसे एक वो बता रहा था जनरल असेंडेंट 1 तो ना ही ज्ञान दे। असेंडेंट 3 है तो रहने असेंडेंट 1 Least one way or another. 3 ब्रो। Make sure you आपका don't क्या go है, दो rounds कभी back कभी to मटके में back to जीत back. जाओगे, Just trying to save it. वापस आ जाओगे असेंडेंट 1 थोड़ी देर में। वेजी भाई ये इंडिविजुअल गेम नहीं ना, Yeah, the showstopper this time. It can सोलो be क्यों even ना quicker. नहीं कर सकते, Going ये in मैंने through देख tree. लिया। At the ready, Lakia. Tap here. Oh, what a great headshot. Finds one. ओह टेक्सचर भाई को भी ऐसा ही डिलीट किया जैसे मोने भाई डिलीट हुए हैं। Find any value. जी भाई मैंने आते ही मोन डिलीट होता हुआ देख लिया खड़े खड़े। मैं बता रहा हूँ बेचारा आया ही बेट होने, एक गलत फायर कर दिया रे भाई भाई। अब चप्पल देगा ये, हाँ बोला ना अब चप्पल देगा ये। उसको टाइम दे दिया ना रीसेट करने का। Any additional damage here? And he can. ओहो चप्पल से इसने भी दी है। कैरन भाई By
हाउ टू गेट परमिशन। मेरा बताओ जी भाई। यार सिंग्स गेमिंग मेरे हिसाब से आप उसको वो क्या करते हैं यार, आप यंग लोग हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए भाई। क्या? अरे वो उन्होंने रिमूव डिवाइस किया ना लॉजिटेक का माउस, अब वो वापस कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो ड्राइवर इंस्टॉल वापस कैसे होगा? वो ऑटोमेटिकली करता है विंडोज यार, वो ड्राइवर इंस्टॉल जो अरे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं जब। उसमें सुनो नहीं जीएफ में नहीं जाना, डिवाइस मैनेजर में जाओ और वहाँ पे डिवाइस मैनेजर में ब्लूटूथ वाले ऑप्शन को अपडेट ड्राइवर पे दबा दो, हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर में जाओ, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन को अपडेट ड्राइवर दबा दो, हो जाएगा। ऐसा दिव्यम भाई बोल रहे हैं, ट्राई कर लो। बाकी मैं समझ गया हूँ आपकी तकलीफ, क्या बोलना चाह रहे हो आप। खाना क्या ऑर्डर करना था? मैंने ब्लूटूथ में लॉजिटेक रिमूव कर दिया और अभी आ नहीं रहा। बस अपडेट ड्राइवर कर दो, अपडेट ड्राइवर। सैलेड नहीं उतना हेल्दी भी नहीं, वरना रिफ्रेश आता है ना ब्लूटूथ में ऑप्शन। एक सेकंड में बता देता हूँ देख के। अरे ये देखो ना, अरे ये देखो वेजी भाई, सबसे इन्हें बोल दो सबसे ब्लूटूथ ऑन करे और सबसे ऊपर लिखा होगा ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस, उस पे दबा दो, वहीं से हो जाता है। सुन रहे हो ना दिव्यम भाई जो बोल रहे हैं, वही कर लो बस। ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेज ऐसा कुछ तो वहाँ पे कर। डिवाइस मैनेजर से भी नहीं हो रहा, कब से 5-6 वीडियो देख ली। अनइंस्टॉल करके रिकनेक्ट कर लो। हाँ ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वो ड्राइवर उसको अनइंस्टॉल करके फिर रिकनेक्ट करोगे ना, तो वो वापस वो इंस्टॉल करेगा विंडोज ऑटोमेटिकली, फिर हो जाना चाहिए। बच गया। बूमबॉट भी दे दे बेचारे को सपोर्ट के लिए। भाई ये अल्ट करके आया है क्या? ओ और देखो डिटेक्ट नहीं हुआ। क्या करा है इसने? अरे यार ओ यार ये किल ले गया भाई वो 2 HP पे। ये तो सी आ गए, उन लोग भी रोटेट कर ही गए। टैगिंग में आप निकाल दी वेजी भाई। किसने? टेक्सचर? अच्छा समथिंग ने, अब कर ही तो रहा था पिछले मैच भी। टैगिंग में निकाल दी ना। अरे पिछले मैच भी कर रहा था अटैक में। स्प्लिट पे याद है जब आपने बोला था इसके जैसे ऑफ सीख जाऊं पिक्सल पीक वाली, वो अटैक में तो मारा था उसको। यार ऑफ तो अल्फाजर कर रहा था। अल्फा तो भाई फनाटिक की बात तो अलग ही है भाई। बहुत क्या क्रेजी ऑफ कर रहा था वो, जंप पिक कर रहा तो पिछला मेरे जैसा है। डुलिस था पता है अल्फा भी पहले। हां पता है मेरे को, रेस खेलता था। फनेटिक जो है ना अभी तक की सबसे कंसिस्टेंट टीम है। अच्छा पहले VCT से। अच्छा और बस दक्ष भाई यार आप मेरे साथ कब खेलोगे ये बताओ, और तो चलता रहेगा। आज पर आज तो मैं खेल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है तो कोई बात नहीं, whenever you are free my Veggiebuoy खेलूंगा आज, ठीक है आपको मैसेज करता हूँ। फनाटिक का मैच कब है? अच्छा फनाटिक का तो अरे ये तो सीधा प्लेऑफ में खेलेंगे अब यार। देखो PRX मेरी फेवरेट टीम है, पर उसके बाद जो सबसे कंप्लीट टीम तो फनाटिक ही है, और उसमें देखा जाए तो drawing them all the way over because of the from the shadows. Him getting that kill onto Lakia really sells it all the way to the end. Forces Gen.G to have to come in. हाय हेलो ऑक्सीजन, वेलकम टू द स्ट्रीम। दिव्यम भाई आपने जो बोला वो भी मैंने करके देख लिया, वहां से ही नहीं आ रहा ऑप्शन कनेक्ट करने का। सिंग्स गेमिंग नया माउस ले लो। आओ यार आप एक काम करो ना, वेजी भाई के डिस्कॉर्ड आ जाओ, एक बार लाइव करके दिखा दो, मैं दूसरे पीसी में आपको ड्रैग करके देख लूंगा। आ जाओ। हेलो मक्सिदी, वेलकम टू द स्ट्रीम। इफ आई कैन हेल्प देन आई विल हेल्प। सिंग्स गेमिंग ये बोल रहे हैं कि आप डिस्कॉर्ड आ जाओ, ये आपकी हेल्प कर देंगे। डिस्कॉर्ड आ जाओ, एक दूसरे पीसी में बैठा के आपको स्क्रीन शेयर करा के आपको हेल्प कर देंगे। आ जाओ। लो मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक आ जाएगा लिखा, ज्वाइन कर लो, आप आ जाओ, दूसरे पीसी में मैं ड्रैग कर लूंगा। एपेक्स भाई ज्ञान दे रहे हैं। सेंटिनल्स कौन सी एरिया की विसिटी खेलती है? अमेरिकाज आता डीसी भाई। मैं तो सेंटिनल्स फैन हूं भाई, मेरे को एक ही पता है सेंटिनल। Wondering if he will enter Valorant, if he'll enter as a pro, if he'll come back as a coach. He had a very brief stint as a player and then a disastrous first year as a coach last year. On the भाई आपका चैनल इतना स्लो क्यों ग्रो कर रहा है? ऑक्सीजन भाई ये कैसे पता लगता है? चैनल ओनर को कैसे पता लगता है? कैसे डिसाइड करेगा? भाई आप प्रमोशन कर दो उनका जाके, हो जाएगा अच्छा ग्रो। क्या बोलो एपेक्स ने सेन फैन? अरे सरकास्टिकली बोल रहे हैं भाई। सरकास्टिकली नहीं भाई, मेरे को बस एक ही टीम पता है सेंटिनल्स, ठीक है ना, और एक ही प्लेयर पता है वो। ले भाई कर दिया पुश तुम्हारा। इसको सर्वर म्यूट करता हूँ।
वही है ओहो हो पुश कराया, देखा पुश कराया जो देखा, शॉर्टी से मार के आ गया। देखा बिल्कुल पॉप फ्लैश मार गया। भाभी कैसी है? भाभी बढ़िया है भाई, आप बताओ। ऑक्सीजन में स्लो हो रहा है कि वो तो फास्ट कर दो। अभिराम ने वीसी कब ज्वाइन कर ली? अभिराम ने वीसी ज्वाइन करा है क्या? ये कल के अच्छा सेंटिनल वाली बात के लिए कह रहे हो क्या? एक मैच जीत जाते हैं तो वो बात भूल जाते हैं। अरे ऑक्सीजन भाई स्किल से मोनेट की मूवमेंट अच्छी है पर बेचारा मूवमेंट की करता रह जाता है। यार ओपनिंग तो मेरे जैसी कर रहा है। नावी ने पेल दिया टीम लिक्विड को बस। यस टीबैक कर दिया। थोड़ा थोड़ा करता है ये, बकचोद कम थोड़ी है। रेना प्लेयर है, ईगो तो आएगा ही थोड़ा। भाई लेकिन बेस्ट पॉइंट था भाई ईगी और PRX। तो मजा आया था देख के, दोनों तरफ से चल रहा। वेजी भाई ऐसा भी है क्या इनमें रूल की टीबैक कर दें ये लोग तो बैन वैन का हो जाता है? कोई बैन नहीं होता, वार्निंग मिलती है। अरे लौड़े की मतलब घंटा वार्निंग। PRX अरे वो कुछ अलग सीन पे मिली थी, टीबैक पे नहीं मिली थी। टीबैक और बॉडी पे उन्होंने डाला था, उसने बोला था कॉन्फ्रेंस इसने 4 सेकंड में बोला था, वो सामने वाले कर रहे थे ठीक है हमने कर दी तो हमें वार्निंग दे दी। जोर से फॉलो करता हूं मैं, ठीक है। आपका भी वेलर अकाउंट होगा फिर तो भाई टीबैक पर वार्निंग नहीं दे सकते। अरे पिछली बार मिली तो थी फॉर PRX वालों को, बात तो सही कर रहे हैं। मतलब उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं ये लोग टीबैगिंग, थोड़ा बहुत चलता है। आप ये बताओ इतना VCT देखते हो, जब भी आप ऐसा फ्लैट प्लेयर क्यों हो? कौन? अभिनव भाई। मतलब ज्ञान अभिनव भाई दुनिया से ज्यादा का पेल देंगे गेम का। हाँ डेड बॉडी पे शूट करने से होता है ऐसा कुछ है, टी बैग करने पे नहीं होता है। कुछ तो सीन है भाई, मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली टी बैगिंग पे नहीं करते। ओह बढ़िया 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 राउंड पलट दिया भाई, सही अल्ट की उसने। क्या बोलते हो दिव्यम भाई, क्या सीन है? मेरे को लग रहा है ये दवाई मार देगा, लेकिन कैरन है ना अच्छा मार रहा है काफी, बोला था मैंने। अरे इंस्टेंट हेड मारना था रे। यार मुझे उससे पड़ेगा क्या? ये अभिनव भाई बोल रहे हैं प्लेट को इमॉर्टल होकर 3 किल तो नहीं कर रहा, ऐसे तो आप फिर ये मोनेट भाई को वो कर रहे हो टारगेट। अरे देखो ना जिवेन भाई, जिसको कुछ नहीं आता ना, जिसको कुछ नहीं आता वो ले दे के किल्स की बात पे आ जाता है फिर लास्ट में। हाँ वही, ये तो है ही है। कर रहे हो आप यार, ये राउंड इम्पोर्टेंट था यार। ऑक्सीजन भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर साइन हूं, एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं हूं मैं ई स्पोर्ट्स नहीं खेलता अभी। अभिनव भाई तोड़ दिया। ओहो हो क्या ही बढ़िया एग्जीक्यूट कर दिया, मेरे तो मजा आ गया। अब मोने भाई अल्ट मत कर देना प्लीज। अरे भाई क्या पुश यार, बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा। Just like that, PRX say, okay, you want to stop our win streak, we're just going to hound you down. It's just unfair that PRX has this hit. टोमेटो सूप ही मंगा लो क्या, मन तो कर रहा है पीने का। बस फिर मंगा के पी लो, इतना क्या वेट कर रहे हो, खा लो। अरे यार फिर पेट नहीं भरा तो दवाई तो दवाई है रे। मोनेट भाई अभी क्लासिक से मर जाते ना, मेरे को इतना बुरा लगता। अच्छा वो वल्नरेबल नहीं था, वरना मर भी जाता हेडशॉट में। बाकी तीनों तो वल्नरेबल थे। I watch VCT, I play VCT Asia player। स्ट्रीम लाइक कर दो सब लोग। कहाँ से मंगाऊं लेकिन? क्या मंगाना मुझे बताओ ना। टोमेटो सूप। अच्छा टोमेटो सूप, अरे बना लो यार। स्ट्रीम छोड़ के जाता हूँ बनाने। उनके भैया नहीं आए। आदमी का थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, आदमी को भूल जाता है भाई, क्यों ना बोले पैसा चीज ऐसी है। अरे इसको किसने बोला, मना किया ना ये, इसके टाइम कोई आना नहीं चाहिए बीच में। अरे वो लौंडा आ गया ये बताने के लिए, अभिनव भाई सही बात करिए, आप आए तो सही चीज के लिए। अरे अब फिर ये अभिनव भाई ये लौंडे को मेरे को ही किक कर दिया क्या? Look to see sight once again. I mean, they always start to try to shake things up. The problem is there's just so much utility to try to get through before you sell the fake. But now they know it's a weak buy. You don't need to sell it. You can just commit to it.
अरे किधर भाग गए? सबसे क्रेडिट मेरी है। अरे रहने दो। अरे यार अब ये परेशान करेगा यार। हेलो आवाज आ रही है एपेक्स भाई? आ रही है। ठीक है। गलत आदमियों को शक्तियाँ दे दी है। Now suddenly it's just Mindfreak and Forsaken. Mindfreak still rotating over. The cam goes in. Tries to get the dart भाई out. चैट दिखा दी लम्बा मतलब। Comes up onto the box. Finding the one elimination. Mindfreak now put into a 1v1. Meteor. अच्छा औतार दिखा दी। Down so low. 7 HP from him. औतात में। Kind of toying around with Mindfreak, who's now going to drop down off the box. Meteor so low. Mindfreak has to know this. I mean, he knows exactly where he is. One bullet. The fadeaway shot finally will find him. The damn close. शेर नहीं खड़े थे अभी। 1-1.5 महीने पहले मैंने सोचा वीडियो बनवा लूं Veggiebuoy। I was going to just be blown out of my mind if they got that thrifty once again, because this was again very targeted execute onto the C site, and it's just a classic flood, even with the nanoswarm, like you said, just fully confident that they can overpower him. But it wasn't as easy as PRX thought it would be. Certainly not. फिर से बीटी दी तो नेक्स्ट टाइम वेजी भाई गिव अवे टूर्नामेंट खेली आपने? नहीं यार। आज आरबी का भी मैच है टाइटन स्पोर्ट्स वर्सेस ड्रैगन रेंजर्स। ओह यार इन्होंने बहुत बड़ी गलती की आरबी को निकाल के दिया है इस वाले ने। फॉक्सी 9 को हटाओ भाई, मेरे को तो देख के उसको वो जहाँ दिखता है मुझे गुस्सा और आता है भाई। टीम बिगाड़ दी भाई जब से फॉक्सी 9 आया ना पूरी डीआरएक्स की बुंड मर गई है भाई, कसम से बता रहा हूँ। नहीं पर Gen.G अच्छा खेली इस बार। अरे यार वही तो बात है, आप पता ही नहीं लगता यार। पहला वाला मैच किस्मत पे जीते हैं Gen.G वाले। वो जो 1v2 थ्रो कर दिया था ब्लाइंड में। Just gotta hope that the Empress comes in big for something. खेलोगे अगले मैच? नहीं। मोने भाई आप तो सैटल ही करते रहो पूरी देर। चलो सूप ऑर्डर कर दिया मैंने। And this is where the trouble is going to begin for PRX, because sure, when you're on the attack, you can throw all those blinds. जेस्ट की जगह फ्लैशबैक एक्सेप्टेबल, लेकिन आरबीजी का फॉक्सी 9 नहीं। बिल्कुल जेड गेमिंग सही बात कर दी आपने। फ्लैशबैक तो बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, फ्लैशबैक तो ओपी प्लेयर है भाई। अरे वो भी तो बढ़िया खेल रहा है वो काइको। ओ केको भी तो सोलो कैरी करना पड़ता है ना, पूरी टीम कहाँ रहती है वो अकेला कहाँ रहता है। और डेमन वन भाई को तो फर्क ही नहीं पड़ता, टीम कहाँ भागा चला जाता। आई डोंट केयर तो बोलते रहता है, कल इंटरव्यू में बज रहा था। पर भाई डेमन वन बेस्ट है क्या बेस्ट? एमर नहीं या नहीं, लेस है, सुगेत्सु है। नहीं अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अरे लेस से बढ़िया एम किसी का भी नहीं है भाई, किसी का भी नहीं है। लेस से बढ़िया एम किसी का नहीं, सुगेत्सु और लेस से बढ़िया एम किसी का नहीं। अल्फा यार लेस और सुगेत्सु, फिर डीमन 1 4। अल्फा तो अलग लीग में आ जाता है ना। अल्फा यार ईट्स 5 डीमन फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ नहीं देखो अल्फा से तो बेस्ट प्लेयर अभी तक देखा ही नहीं मैंने कोई। वो तो हर चीज में टेंस भी नहीं यार वो नहीं। अरे टेंस तो है यार, टेंस तो ऊपर कोई टेंस के ऊपर तो मैं सेंटिमेंट फैन हूं। इनको फटीग नहीं होता क्या भाई? हो लेस शेरिफ नंबर 1 है कि हो गया सूडे। फटीग क्या भाई, काम धंधा ही यही है भाई इनका। होता भी होगा तो क्या ही करेंगे, तभी तो किसी टाइम जब परफॉर्मेंस लो होती प्लेयर की तो उसी रीजन भाई जब आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा ना। 1 लाख कम बोल रहे हो अब एपेक्स भाई। मैं वैसे बोल रहा हूँ मिनिमम। Turret noting one meteor trying to break line of sight, makes it around the corner just in time. Now re-swings. Yeah, should have caught sight of multiple as well. He's going to continue. Hold decently close here. किसी का शौक पड़ी है अपना पूरा दिन इसमें डाल। डीमन 1 को हम्बल करना पड़ेगा इस सीजन। अरे कल इंटरव्यू में अच्छे से ही तो बोला वो, उसको पूछा था ना ऑक्सी के बारे में, तो फिर उसने ट्रैश टॉक नहीं किया, बोल दिया ही इज अ गुड प्लेयर, ऐसा कुछ तो बोला। ट्रैश टॉक नहीं किया परसों वाले मैच के बाद। कल इजी कैसे जीत गए मुझे समझ नहीं आया। इजी तो
डेडलॉक खेल लिया बस, बाकी मेरे को और कुछ मतलब नहीं है। यही तो मजा आता है यार, मेरे को यही इसलिए तो PRX अच्छी लगती है, 3 बुल्स ले लेते हैं, क्या बढ़िया मजा आता है देखने। वही बंदे नहीं तो वो लेंगे, इनिशिएटर लेंगे, 2 स्मोक 2 लेंगे, एक ड्यूलिट है। We will meet them right here on Rubble. A very different look of the Rubble fight, but a Rubble fight nonetheless. ओहो नाइस राउंड। And good shots from Munchkin. He's feeling that confidence once again. Back on फेवरेट top of प्लेयर the कौन है scoreboard as the IGL फॉर for सेकंड? Gen.G. ये साले ये भी दोगले हैं, टेक्सचर वैक्चर साले ग्लोबल मिन खेल इतना अच्छा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। वो ये जे खिलवा देते टेक्सचर, तो ये बात नहीं, जेट भी तो खेला ही है। अरे ये एजेंट से कुछ नहीं होता भाई, अल्फा को देख ही लो ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई। यार एल्फा ऐसा है बस, वो एक साइड तो भूल जाओ जहां पे वो खेल रहा है, 2-3 तो निपटा ही देता है भाई। तो मतलब उसके जगह साइड नहीं होल्ड करता यार कोई, या तो वो ऐसा एम को मारता है। लेस भी करता है यार, लेस भी उसके जैसा ही होल्ड करता है। इस गेम में नहीं, पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अल्फा, लेस, सुगेत्सु, डर्क, फॉरसेकन, ये 5 मेरे फेवरेट है। यार PRX की कैप्सूल लेनी यार, वेजीबॉय थोड़ा फंड्स अरेंज करवा दो यार। बस करा देंगे। कितना करना है? इक्विटी कितनी दोगे ये बताओ? 50-50 तो फिर 1000 VP आपको एज एन इक्विटी दे दूंगा और 1000 VP एज डेट दे दूंगा 12% इंटरेस्ट पे। ओके अंटिल आई रिटर्न 2500। नहीं, रॉयल्टी थोड़ी मांग रहा हूँ, रॉयल्टी कुछ भी नहीं। डील डन। यूनिट इकोनॉमिक्स बता दो। तो आपका क्लासिक कितने की आएगी ये बता देना, और प्लेयर कार्ड कितने का आएगा? वर्किंग कैपिटल चाहिए भाई। वर्किंग कैपिटल चाहिए क्या? कितने साल के लिए दोगे? 2 साल के लिए डेट, 2 साल के लिए 12% इंटरेस्ट। कैन यू मेक इट 8%? हाँ कर देंगे, इंटरेस्ट खाने थोड़ी बैठे हैं यहाँ। हाँ वो हो जाएगा। ऐसा कब बोला था बताओ किसी शार्क ने? पता नहीं, यही तो बात है। इतना डेडिकेटेड। एक्चुअली मैं कल ही एक एपिसोड देख रहा था सीजन 2 का, उसी में ये हुआ था, इसलिए मुझे याद है। पीयूष बंसल का स्कूल का दोस्त आया था एक, उस चॉकलेट की कंपनी में। और थैंक गॉड डेट तो बैंक से भी मिल जाएगा। यह गलत फहमी आपकी कि डेट तो बैंक से मिल जाएगा ये वाली। PRX FTW, पहले आप ये बताओ कि ये सब अकेले कर रहे हो कि मेंबर्स बोर्ड है? कैप टेबल में कौन कौन है आपके? दक्ष भाई, क्या कैप टेबल में कौन कौन है? आई एम द सोलो को-फाउंडर। सोलो को फाउंडर हो क्या? लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करेंगे फिर तो ये टीम बनानी पड़ेगी, बाद में आपको वो प्राइवेट लिमिटेड से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ तो होता है ना भाई। एक्चुअली अभी मेरा प्लान्स थोड़े बड़े हैं। इन फ्यूचर VCT कह रहा हूँ, फनेटिक को टेक ओवर करने वाला हूँ। बराबर, पर मैं दूंगा ही नहीं तो आप टेक ओवर कहाँ से करोगे? क्या? पर फनेटिक में दूंगा ही नहीं तो आप टेक ओवर कहाँ से करोगे? आपके ऊपर ईसो की अल्ट मार के अगवा कर लूंगा। क्या? ईसो की अल्ट मार के अगवा कर लूंगा। मैं तो KO की अल्ट में रहूंगा, लेकिन पूरे टाइम कहाँ से करोगे ईसो अल्ट मेरे को? यू नो मैं दिल्ली से जबरदस्ती करवाता हूँ। ऊपर से उसमें भी गाजियाबाद स्पेसिफिक। वो वाली भी रील बनेगी अपनी। He must be thinking about other girls, play boys. सपनों का शार्क टैंक बना रहे हैं ट्रैप यार। देखो फॉर सेकंड, रुक जा। अच्छा अपना खुद का ही ट्रैप है क्या? सामने तो साइपर ही नहीं है, भूल गया था। क्या ये राउंड निकल सकता है? राउंड तभी निकलेगा अगर समथिंग 2 मारेगा तो ही।
Moniette as he pulls away. Something starts swinging in behind over at Baby Door, which now is going to be broken. अरे तू पीछे नहीं मुड़ रहे भाई Where the spike is at, but it doesn't even matter. Karen finds दिव्यम भाई उसकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं Gen.G tie it up at 8-8. Gen.G, I don't know if they calmed it ahead, if it's just built in to their protocols, whatever it might be. They did not all turn to shoot down the leader. They knew exactly what each other's jobs were. And this is where this team starts to कर दी एन की बात कर दी फिर जेड भाई फिर एन की बात कर दी भाई भाई 10 क्या तो कोई नहीं है ठीक है ना मैं तो भाई वो मत करना भाई 10 और D1 1 भी D1 1 भी नहीं D1 1 नहीं भाई only I know only I can love 10s yeah बस I can के बारे में कुछ नहीं कहूँगा भाई पाली को दोस्त दे दूँगा For the life of me, I mean, Munchkin is right in the line, standing right outside that door, trusting in Karen to be able to get the kill. Yeah. Ends up working out. Guys, please like the stream. 78 votes and we haven't reached 50 likes yet. ये भी भाई लाइव अपील हो जाएगा लाइक अपील हो जाएगा भाई कर दो यार लाइक कर दो यार वेजी भाई का भला हो जाएगा यार तुम्हारा क्या चला जाएगा कर दे लो मैंने भी लाइक कर दी मैंने लाइक नहीं कर Gen.G trying to get the win here, take this all the way up to that match point. Wonder if Gen.G is going to suspect a different default setup here. PRX वाले शो कर दें फाइनल मार्च कर देते हैं ने काई के लिए तो फाइनल के लिए Of course, I guess this one's going to be an eco, but outside of it, will be to try to really push out from one side, hold entry points with two people, and then go for the retake with something like the spy cam. We'll see if it comes to fruition in the next buy round, but for this one, just the singular outlaw. ये सच में PRX वालों को फर्क नहीं पड़ता कोई कॉम्प पे चल रही है वैसे ही रैंक की तरह खेलते हैं Behind the box, Haunt not going to get the reveal there on a Forsaken. No fucks given. And oh, shots go flying. Extra low, swaps over the classic, easy to confirm the kill. Munchkin, however, finding one. Heron situated forward. Trying to hold the line. I mean, it's another blink and you miss it around. लाइक मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लो भाई जोक कर दिया आपने भाई ने Dealing with what limited firepower PRX had. भाई एटलीस्ट ट्राइंग ना अरे आपको नहीं जेड गेमिंग की बात अच्छा लाइक मांगने के लिए कह रहे हो क्या प्राइंग वाला नहीं ना भाई हेटर दे सारे going for those pre-fires. That's how he's so snappy. A lot of times he's correct. That's how he gets these 17 kills so far in the 17 rounds, leading by example. भाई मंचकिन भाई आईजीएल बोलते भाई आईजीएल हो तो ऐसा हमारा आईजीएल कैसा हो मंचू भाई जैसा हो यार जब सी पे अच्छा ये लोग सी भी पुश कर रहे हैं ओह 4 सेकंड ओडिन निकाल लिया क्या 4 सेकंड आजा यार इधर PRX is not PRXing भाई आप तुम्हारा बैठ के नहीं बोलो just off to the side and now the pin is going to be invested as well from Gen.G. Seekers are on the way. Something gets a nice opening kill through the door though. You're gone. Left right हो गया Trying to hold things close. something भाई यार oh nice one Moni nice one gets one before giving up his life Gives this advantage over to PRX. अरे मंचकिन भाई आपने तो हक दिया पिट से बाहर निकल के इसको बोलते रीटेक Nicely. Will tie us up once more at 99, just trying to stay inseparable. I cannot imagine having to play against PRX in any capacity. Not that that's ever going to happen in my career, but the chaos that they bring, just the way they use the Odin, and you see this with a lot of teams that use the Odin often, is that more often than not, it's not even suppression fire to keep them kind of zoned in. It's just this distraction in the audio, really muffling everything. मटका जो लगाया ना लास्ट में एक बुलेट आ ये मजा आया They can't find the other tracers, and you just don't know where else you can move. You keep them pinned in, frozen like deer in the headlights, and that's the retake for PRX. That's a retake. अरे मोनिए कोई बात नहीं अरे रे 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 हक दिया अरे अरे भाई finds the elimination. I cannot believe my eyes. Something now. अरे give him the ace now. Ace. Won't be able to get himself an ace. Munchkin. रो दिया बेचारा.
good God, it feels like Texture just failed Gen.G at the start of a round. They had no. तीसरा किल बनता नहीं था वहाँ पे टेक्सचर का यार. And that's the composition coming to play once again against PRX. I mean, if you're going to have the Reyna, ideally you want something like the Lear that can really help you push up against that screen. But without that, Monyet. Oh no, not again. That's deja vu. Just give this man his ace, man. Happened yesterday on mine. It happens here today. Again, I mean, Texture is just. He just is a content mill. It's just GIF reactions. दोनों टीम ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो खेल रहे हैं. ऐसे ही मजा आ रहा है. Good morning, man. Good morning. It's got to be something that he's hearing the comms, right? Reactions like that, knowing that your players are kind of feeling good, able to joke with each other despite it being a very tight game, and knowing that your players had the right read in that last round to bounce back. I mean, Solo looked so nervous coming into kickoff, and I can't imagine with the PRX की jersey कहाँ as a player, में तो लगा people रखी है. globally looking at you as a legend for Asian FPS, and then Haters will say it's edited. your stocks quite a bit as a coach. कितना You started over on D+, now saying I'll take one more shot, be the figurehead here. यार ले लिया यार गणपति बप्पा प्लीज जिता दो यार. Really इनकी guide मर्ज these कहाँ से players who are मिलेगी? just looking for PRX one की more मर्ज. chance to prove themselves. हाँ होगी. एक वेबसाइट है वो भेजता हूँ मैं आपको, वहाँ पे मिलती है जर्सीज. Now another absolutely broken by a judge for अच्छी something लगती है इनकी वैसे डिजाइन भाई. Sure, it's the Reyna. You can always kind of try to rely on that half armor, but the Outlaw is in the hands of Meteor. Don't know if something's going to account for that. अरे वो थॉमस भाई आए ना बेचारे को बुली करते हैं थॉमस को. मास्टर्स कब है इनका? मास्टर्स कब है? इसके बाद ही चालू. मास्टर्स में मार्च में है. Now Gen.G taking things very cautiously. Spamming boxes, checking corners. And it's just going to be a stack. No यार early मार्च rumble में fight. बैक के पेपर है. PRX just saying देख नहीं this is पाऊँ. the best shot we got. Again, you got to take your chances when you're on these broken buys, these ecos. Tap on the door, something on the opposite side of the box, not going to be spotted. As Meteor, he's pushing into this one, but he's got the Outlaw. Something says hello. Now he can open the door. Snatches up the weapon. He's going to look for it, gets the shot there in the Yeah, Munchkin, down 10 HP, but Munchkin again with a nice headshot. अच्छा उसको मारा He's उसने. trade this बढ़िया one है. back with the door getting opened once again. PRX reading a rotation. How far forward do they want to try to push here? Looks like Forsaken. एक तो मेरा 10-15 सेकंड लेट चल रहा फोन, तो मुझे उससे आना पड़ेगा लैपटॉप पे. यार वेजी भाई ये PRX वाले हक गए हैं. Yeah, they don't spawn anyone B main. अरे मैप यार इनका ही है भाई. Shot, but it's a little shaky. वो देखा टेक्सचर को जो 4K दे दिया फ्री में. Inside to Munchkin's legs. अरे Cannot जी. find अभी देखो 10 HP वाले को नहीं मारा यार. Munchkin somehow still in this fight. करा दिया मैंने उसका. Cross backside हो गया? back, free चलो kick बढ़िया by है. that for now. उसका मतलब वो तो माउस कनेक्ट तो करवा दिया, वो नहीं हुआ पर जी हम में वो शो नहीं कर रहा. इसने अल्ट क्यों मारी लेकिन हाँ लेकिन प्लांट नहीं मिला, वो मिल गया. यार दिव्यम भाई आपको पता है ना कमजोरी कहाँ पड़ रही है. वही दिक्कत है, बाकी तो यार निकल जाता है गेम अभी भी. It's a Hail Mary from PRX, but one that was worthy just because सब of the हो रहा है बस timer. वो नहीं हो पा रहा. Mindfreak had gotten just one kill up into that tree. 10 HP था यार, Really मंचकिन को earlier, मार really देते. shut that down. But Texture's just so fast with the reaction, peeking back out right at the 4 5 सेकंड ना mark. गाए रहा हूँ. So Munchkin had a little bit more to share just to make sure they can close out this map. हक तो कोई और रहा क्या है. मतलब असेंडेंट ट्री वाले तो नहीं बोले हो. नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो इसमें क्या है. Smoke down, aggressive push out of B. मैं तो बोलूँगा मैं तो Return for now. अब टेक्सचर की अल्ट है. Aggression as Munchkin इतनी बढ़िया फैंटम चला रहा है ना टेक्सचर, मजा ही आ गया देख के. सही में. quite a bit of The space Phantom over बहुत A. reliable gun है, Wants to बहुत see अच्छी what gun the rest है. of the team can report as far as the setup here on दिला B. रहे हो क्या प्राइम फैंटम आई है वेजी भाई. ठीक घटिया. Both of those now on cooldown. नाइट मार्केट में आया. बढ़िया तो नॉर्मल चला लो. You just have the double. Thank you दिव्यम भाई. RGX है. वाह बहुत बढ़िया भाई. तो फिर क्यों लेनी है? RGX फैंटम है आपके पास? हाँ RGX. मेरे को कैप्सूल दिलवा दो. वो भी तो पैसा वेस्ट ही कर दिया आपने. दिलवा दो. सबसे अंडररेटेड फैंटम लगती है मुझे ग्लिच पॉप फैंटम, एकदम मस्त. Oh man, it was a double for jump. I thought it was one above, one below, but you really want to take down the shot. Second has a read that थैंक यू वेजी. आपने भी थैंक यू दिव्यम भाई क्यों मिला वेजी भाई. वो सिंग्स गेमिंग ने लिखा ना, पढ़ रहा था बस मैं. Finding it across the rest of the team, and there it is. The trap wire coming through has the reveal, but the Haunt also finding Forsaken. He tries to backpedal, get himself
about the safety. Rocket, it goes too deep. Water. Still not going to be found. Meteor. अरे समथिंग बाबा पीछे देख रहे भाई. Space here on the side. Lockett able to shut it down. Forsaken creeping back out the waterfall, but angle watched. Karen finding it. अरे सब सोलो फाइट ले रहे हैं यार. भाई मेरे नमीन. Heal rolling. They हो interrupt जाए again. हो जाए. इधर टाइम नहीं बच रहा है. स्पाइक पास कर रहे हैं और वो लो एचपी वाले को जिंदा रखा है भाई. वाह. Puts him low, puts him down to 21. अरे Spike planted. No leers. No अल्ट होती तो dismisses, निकल no गया होता nothing. 100%. So the Haunt goes out. Something now revealing himself. अब तो हार गए. Another smoke invested. He's looking for the उसका cross. smoke He's आते ही trying to हार get गए. the headshot, but he cannot. अरे 4 सेकंड और दवाई दोनों ने सोलो पुश कर दिया Stands यार. tall. 12 to 9. Gen.G now at map point. Lockio अरे with the नहीं, mind अरे मैं games, बताता हूँ. running अरे across the screen भाई, one last time ये before राइट being वाले to make फुल sure स्विचिंग that करते something हैं doesn't have the फाइनल opportunity की to 5वें disrupt the मैप तक plan. ले जाने के लिए. And yeah, it's back to भाई back ऑन rounds स्ट्रीम where ऑफिशियल वॉच पार्टी चल रही है. Tyson फालतू एलिगेशन मैं नहीं सुनूंगा. Gen.G keep their है ना. calm. मजाक कर रहा हूँ यार. नहीं मजाक नहीं भाई. लोग सीरियसली ले लेते हैं यार. प्लीज ऐसी बातें ना करो. Not able कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स से दूर रहें प्लीज यार. ओके माय बैड. चलो कोई बात नहीं. आप दोस्त हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा. Call to shift that spike over as well. So few seconds left. Want to make sure that they can try to get it planted down, but now ये PRX कोई is भी gonna अच्छा है fire फ्री with के fire. थ्रू Something वाला. finding one. Mind Freak getting texture. As, I mean, it's just a quintessential PRX round. ओह थैंक गॉड We now समथिंग find गुड. ourselves in a 1v2. Yeah, you still have all your setups कैसे for बिखर गया on सब the ये? other side, so just stay doubled up. वो That's the last game भी plan low for है. PRX. Surely लो those तो are है some पर एकदम rubble. से 4 उसको मारा नहीं क्योंकि कोई साइड नहीं खेल रहा था ना. उसके बाद अल्ट थी तो कोई मारने जाता भी तो ट्रेड हो जाता. Wanting to go to B. अल्ट से मार देता Wire मतलब is वो there. इसलिए. Destroys it. Just going to be a plant here into the open. Doesn't get to read that this is going to be approached from main. No bites to speak of. Just way in the top B. Chat monet meaning is Flushing against the gorillas. He's gonna want to pop that poison cloud. Yeah, try to इसने act पता like he might be hiding पोजीशनिंग the सही smoke as करी है well. पर ये बहुत Switch to एक्सपेक्टेड नहीं कर दी. distractions. We'll see if it works. Smoke comes down. एक्सपेक्टेड तो क्या अब उसको फायर करना पड़ेगा. एक्सपेक्टेड सब निकल ही Poison जाएगा now वैसे coming भी. down, and they're just holding for this one. 40 है. Spray. Gets बस him off the defuse for a हो moment. इसने दोनों को लो कर Back दिया. out of the smoke. लैगिंग एक को नहीं. 120 मार दिया और दूसरे को 69. Hanging on by a thread. As they decide who wants अरे to बैक साइड में अल्ट हो जाती है अभी ना भाई. इसलिए वो Try to वाटरफॉल खेल recover. रहा था. PRX, they keep themselves in this फ्लैट वाले game. भी बताएंगे 2 क्या? rounds to try to take us into overtime. भाई You आप just know इतना it's a तो good match so far when we हर have बात पे back-to-back these देख rounds करते हो where भाई. the double left खुद से भाई जो just बन रहा है. really good teamwork. You see भाई the ऑब्जर्वेशन Forsaken pop, गोल्ड वाली की अच्छी sticking हो it, सकती है and भाई. then goes for the ये spray क्या भाई first, ये क्या gives the बात chance for होती है. Mind लेट Freak to वाली pop out बोलेंगे. as Munchkin is distracted trying to fire back against the Tracers. क्या करूँ Small यार. things अगर like अपने that भाई really को make ही the ऐसे difference ट्रोल नहीं between a करूँगा तो फिर clutch मजा नहीं and आएगा. just a standard 2v1 अच्छा फिर victory. ठीक है भाई को औकात Now दिखाने the की Odin जरूरी for है. Lockyer really trying to bully their way and punish PRX for pushing out aggressively. Seekers at the ready here from the buy as well. Once again, I mean, they're looking to take the fight again over at A, but Gen.G saying, we didn't like how that went for us. So we're not going to try to challenge into it again. But that's all of Rubble. Cleared AB, यार, he's cleared just- Gen.G भाई You अब just leave 240 one हर्ट्ज person का holding here and मॉनिटर you have the चाहिए था entire जरा map figured भिजवाना. out. मैं पैसे बस. भिजवाता हूँ आपको. अरे बिल्कुल बिल्कुल खुद नहीं लेता हूँ. आपको पहले दे देता हूँ. ठीक है बताओ एड्रेस दो. Trapwire still set up. एड्रेस इंस्टा पे भेज देता हूँ एक बार दिखाना फिर मैं भेज. अरे अभिनव भाई. अरे अभिनव क्या बोल रहा है आपको. 5 स्टैक मॉडल पढ़ लिया मैंने लेकिन मैं तो खेला ही नहीं. मैं तो खेला ही नहीं. देवेन भाई बिग बॉस आप बिग बॉस से जिस दिन ये possible जिंदगी रे आपने चालू कर देना अनफ्रेंड कर दूंगा आपको. सही बता रहा हूँ. Prowler to check. ईमान मत भेज देना. सही बता रहा हूँ प्लीज यार. Himself safe for now. Now Montec going to be ठीक है taken जी. down. Tucker to the corner. Meteor trying to survive, but cannot. तो आदमी जब तक जिंदा है जब तक उसका ईमान जिंदा है. सही में भाई. Now taken away वो है from जो him, but if Gen.G gets to the side, मेल अपना मेल ईगो पे ही तो जिंदा है इंसान. Munchkin can invest. और क्या. है ना. Gonna be looking to use those seekers. अरे रोहित शर्मा आ गए. जैसे ही Gen.G जीतती है बंदा चैट में कैसे आ जाता है भाई. Through the pit. Death risk, 25% अभिनव ने साले ने गंदा तोड़ दिया. ऑटोमेटिकली आ सुअर गया. कहीं का. ओ कैरेट. ओह एक और डिसमिस. एक और डिसमिस. हाँ ये लेट्स गो. जीत गए. Oh my god! I लगता है रोहित भाई फिर से ऑफलाइन होने वाले वेजी भाई. अरे मेरा अभी PRX को जिताने का मकसद ही है कि एक इंसान की बुस्सी भरनी है चैट में. अरे वो तो ठीक है. यस यू रोहित शर्मा. ये PRX वालों को नोटिस में जब ये हार रहे होते हैं ना वोट ले जाने के लिए बहुत सारा रिटेक करते हैं. ये ऐसे ही रैप करते हैं. पहले 2-3 बार भी देख रखा है मैंने दूसरी टीमों का. चैट मिस
nothing more to be done. कौन से वाले चैट वापस लिख दो Now called and I am with Rohit it bhai. is going to be from the Gen.G. भाई राजस्थान में कहाँ से हो? Rohit bhai, I am with उदयपुर। everyone. Very much up in the air as far as who could be. Veggie bhai, हाँ? if everyone is against Rohit bhai, I am with वैज everyone. भाई उदयपुर से हो आप? मैं तो अभी उदयपुर घूम I thought के they still आया had one. हाँ। PRX, yeah, I think they used it a little bit early बताया on नहीं in the तुमने। second half, but अच्छा तुम तो but पुणे it's रहते been हो। tough from both sides. Veggie bhai, गा दो रोड पे The जाके real चिल्लाओ। crazy part here मैं is I think राजस्थान if में that उदयपुर had से been हूँ। off the उदयपुर seekers, जो आए मेरे से just मिलके kinda जाए। keeping track of that. 2-3 बोतल पानी लेकर Whatever गया it था was मैं वैज on भाई one के tap, it's दो just तीन बोतल पानी खाली लेके गए थे क्या उदयपुर में भरने? पानी बहुत है उदयपुर में क्योंकि maybe give them this chance for the overtime. यार वेज भाई मेरा एक दोस्त रह रहा है अभी उदयपुर में, उसने वहाँ के मंदिर दिखाए, इतने प्यारे प्यारे, मजा आ गया देख के। तो है अरे ही यार। मैं Letting go as Meteor was taken out on the प्यारे flank, प्यारे बना and रहे that's उदयपुर में तो ऐसे आंख बंद करके कहीं भी फोटो खींच लो प्यारी ही फोटो आएगी मतलब। the lurk nice and early. मेरे दीदी जीजा जी So जा I रहे wonder if हैं। Gen.G, do they just go for a rush राजस्थान this में time नॉनवेज around? फूड You का have the मिलता है Nightfall as क्या? well, हर just जगह push मिलता है through and then नॉनवेज put up the lockdown एक्सेप्ट on the coast अयोध्या, plant. It's an option. और मथुरा में भी नहीं मिलना भी मिलता नहीं चाहिए नॉनवेज। वहाँ पे, मिलना भी नहीं चाहिए Looks वहाँ। like it will be in. Immense amount of options here for Gen.G. And one that, you know, if you jump कोई बी के लिए होगा जो अपने आप को राम भक्त बोल के नॉनवेज खाता into होगा। a round and end up going into overtime. सही बात है ना दिव्य भाई? A bit tilty. वेज भाई चुप रहो यार। On top वो for now, up BKL over में the हूँ। top, the check towards Mounds. Nothing gonna be वेज वैज spotted. भाई Losing मेरे को again. नॉन वेज पसंद नहीं है पर मैंने Sun गलती से Solo 3-4 with बार that खा in रखा। hand. वेज भाई पसंद मेरे को भी नहीं है, पर मैं Could be गलती से locked, हफ्ते में locked 3 out बार now, खा could be लेता हूँ। invested, looking to shove नहीं, that हफ्ते में down. नहीं दिन में बोलो। See something. हफ्ते में नहीं दिन। तीन चार बार Actually खा। inching their way forward. Paranoia gonna be दिन में sent नहीं in. वेज Launch भाई। it. Not gonna वेज be भाई caught मैं by सच it. बोलूँ, They're मेरे जो one in the पैर kill. में दिक्कत हुई थी ना, आपको बताई थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी थी। तो या तो उसने बोला था सर्जरी या फिर वो होता ना खरोड़े का जूस, वो नॉन वेज में बोलता वो सब लोगे तो उससे शायद ठीक हो जाए। तो इस वजह से जब खाना शुरू कर दिया था। Over towards Texture. अच्छा पहले आप नहीं खाते थे क्या? Just to clear it out, नहीं, trying to पहले hold the door. Then I never First went one back. yet. नहीं मैं तो मजाक में बोलता हूँ भाई, मेरे को दूसरों से मतलब नहीं, जिसको जो खाना है खाए भाई। Comrade push through that सही बस बात मेरे को मत बोलो बस खाने के लिए। अरे भाई ट्राई करना अच्छा होता है, एक बार तो ट्राई, वो बकचोदी मत कर मेरे साथ भाई। तेरे को खाना है, नहीं यार, मैं भी तेरे को खाना है खा भाई, मेरे को Decided self, I should say. ओ ये तो बहुत रीटेक बढ़िया कर लिया। मॉन्टेड भाई। Another one. Mind freaking of eye. नहीं, The last one नहीं। standing. अरे रीटेक क्या मतलब, ये तो होल्ड कर लिया इन्होंने। Now it's all हाँ। on GG the हो गया। Sultan trying to get it done. He GG finds हो the second गुड kill. है, गुड गेम And not get the third. 13 to 11. भाई पसंद तो मुझे भी नहीं है, बट अभी मैंने चिली चिकन ऑर्डर सबसे बड़े खेल तो मेरे को वो लगते हैं, सैटरडे खाता हूँ, संडे नहीं खाता हूँ, मंडे खाता हूँ, ट्यूसडे नहीं खाता हूँ। वेज भाई वो होते हैं सबसे बड़ा गांडू जो ये बोलते ना भाई, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे नहीं खाता मैं, भगवान की पूजा करता हूँ इन 3 दिन, बाकी मैं पूरा हफ्ता खा लेता हूँ। चल मार भाई रोज खा ले भाई, रोज खा ले भाई। ये देखो रोहित शर्मा कह रहा, हाँ भाई कैसी लगी आगे रोहित भाई, स्प्लिट वाले मैच में कहाँ थे आप? अरे 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 रुको ना, जब तक तीनों मैप में रोहित भाई देखो, या तो Gen.G तीसरा मैप जीत जाए तो आप बच लेना, हाँ जी, या फिर तीसरा मैप PRX जीते फिर मैं आपकी बजाऊंगा। ये वाला मैच तो PRX जीतेगी, लिखवा के भाई मेरे घर में तो हर दिन बनाते नॉनवेज। अरे भाई ठीक है, इतनी कोई प्राउड वाली बात नहीं है भाई, ठीक है फ्लेक्स मत करो भाई, नॉनवेज खाने में कौन सा फ्लेक्स है भाई, एंड करो इस टॉपिक को भाई। थोड़ा महंगा आता है तो क्या हुआ, कुछ भी बोलोगे? पनीर ज्यादा महंगा आता है चिकन से सही। वेजी भाई किस गलतफहमी में रह रहे हो? हेलो देख, अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाके देख लो। हाँ देख लो वेजी भाई, जितने का आपका 1 किलो पनीर आएगा, इतने में चिकन की 1 टंगड़ी आएगी आपकी। अरे कौन सी दुनिया में रह रहे हो वेजी भाई, जैसे गलत पनीर मंगा रहे हो आप, किसके दूध का मंगा रहे हो? कितने का आता है बताओ आपका, किसके दूध का मंगा रहे हो बताओ पहले। कितने का आता है आप भी बताओ। यहाँ पे आता है 200 रुपए का आधी किलो। 200 रुपए का आधे किलो ना? हाँ। तो सेम मेरे यहाँ पे 200 रुपए किलो पनीर, 200 रुपए का आधा किलो पनीर भी मिलता है। हाँ तो पनीर ही तो कह रहा हूँ मैं। लाइट चली गई फिर सेम हो गया। नहीं महंगा है चिकन, 1 किलो चिकन लेने जाओगे तो महंगा 500 रुपए का पड़ेगा, 500 550 का। 550 का 1 किलो और आधा किलो 200 रुपए का। वाह ये तो बेचने वाले की मैथ्स बहुत अरे तगड़ी है रुक जाओ भाई। ना, 1 सेकंड रुक जाओ, सर्च कर लेते ना 1 kg चिकन प्राइस। चिकन 1 किलो 210 रुपए का। हाँ पनीर सर्च करो आप कितने का है। बोनलेस 250 रुपए का। अरे बोनलेस कर लो तुम, बोन क्या उसमें प्रोटीन लेस कर दो तुम, बताओ फिर अब पनीर चेक करो कितने का है। पनीर है अमूल मलाई पनीर 435 रुपए का। निकल गई पूरी हवा एक साथ, वाटर वेट निकल गया होगा पूरा आपका। वेजी भाई नेट में गलत दिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ।
नेट पे हाँ गलत दिखा गूगल रहा तो है। ऐसा ही है, जरा सी बीमारी को हाँ कैंसर बता देता है। हाँ वही। कर दी। आई डोंट अब ईट। अगली बार मेरे सामने ज्ञान नहीं चोदना, ठीक है? इस ये चिकन और अरे वेज का टॉपिक अब एंड कर दो यहीं पे, बस अब हो गया। बंद कर दो यार, जिसके हाँ नाम में वेज हो उससे क्या ही लड़ना अब। हाँ, मैं तो लड़ ही नहीं रहा भाई, मैं रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं वेजिटेरियंस के, मैं तो पहले ही बोलता हूँ भाई। मैं एज एन इंडिविजुअल स्टैंड करता हूँ, अपना खुद का स्टैंड लेता हूँ, बाकी अपने लोग अरे अपना भाई अभी स्टैंड ले। 12 पीस चिली चिकन ऑर्डर करे हैं 420 का। अभिनव भाई का अलग चल रहा है, ये बेंच तो अलग चैट में हाँ भाई मैंने अभिनव ये भाई को तो मंगा लिया 12 है। लगते भी होंगे, जितना वो है साइज उसका, उसको 12 पीस तो लगेंगे। लेकिन तो वेजी भाई, लेकिन वेजी भाई अभिनव भाई का साइज है, लेकिन इनकी हाइट भी तो छोटी है, ये तो ड्वार्फ नहीं लगते होंगे। अरे ओ यार, रुको ओ, रुको रुको रुको, ये नहीं दिव्यन भाई, जिस दिन वॉच पार्टी हो जाएगी ना उसके बाद करेंगे ये सब, अभी ऑफिशियल ऑफिशियल स्ट्रीम पे नहीं है। नो अच्छा अच्छा ठीक है। नो नो हेट नो हेट नो हेट नो ठीक हेट। है, नो एट भाई, नो एट, नो एट। अभिनव भाई रात में व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर भाई, अभिनव भाई वेजी भाई इतना बदतमीज है, एक दिन मुझे गाली वगैरह, और बाद में मैंने फोन करके बोला, मैंने कि अभिनव भाई बदतमीजी क्यों कर रहे हो? कहता है अरे दिव्यम भाई मैं नहीं हूँ, वेजी भाई के पास मेरा डिस्कॉर्ड का आईडी पासवर्ड है, वो आपसे मजे ले रहे हाँ होंगे। हाँ, मेरे पास यही काम है कि मैं दूसरों के डिस्कॉर्ड आईडी लॉगिन कर दूँ, उसमें भी अभिनव का, ना ना ना। क्लोजिंग टू योर डोर स्टेप नाउ, चलो भाई मेरा सूप आने वाला है। अभिनव भाई दो क्यों लगा दी? मानस ज्यादा मोटा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी दो लगा दोगे आप, एक में भी समझ जाता मैं। पर दिव्यम भाई आप अभिनव के सामने खड़े रहोगे, अभिनव की फट तो जाएगी लंबा चौड़ा आदमी देख के, क्या बोलते हो? अभिनव की हाइट ही बराबर नहीं। है ना, इसके ऊपर मत बैठ जाना किसी दिन। वेजी भाई अभिनव भाई बैठाना तो किसी और को चाह रहे थे, वो अमेरिका। मैं तो ना सहता भाई, मैं तो ना सहता अभिनव भाई। भाई पर चिकन खाना गलत तो है, सही बात है सार्थक भाई। भाई गलत क्यों है भाई? क्यों गलत है ये बताओ, क्यों गलत है? अरे छोड़ो भाई, चिकन नॉन वेज वेज छोड़ो भाई, जिसे खाना खाना चाहिए खाओ, भाई, नहीं खाना दोबारा मत खाओ। नॉन वेज दोबारा खाना चाहिए, जिसे खाना है, और जिसे नहीं खाना उसे नहीं खाना चाहिए, बात खत्म। वही। अभिनव भाई लेफ्ट था चैट हो गया एकदम हेलो से वेजी भाई। अभिनव भाई यू वर नॉट हार्म इन दिस वीडियो। गाली गलौज नहीं देखो होनी आप चाहिए कैसे दूर चैट का, में। थोड़ा सा आगे हो गए ना भैया। अभिनव भाई गाली गलौज नहीं सहूंगा मैं बिल्कुल भी, एटलीस्ट रात में घूमने नहीं का तो मर जाना पड़ता मुझे। अभिनव भाई हम पे तो आई नो, ओमनी हम पे तो आई नो। कोई बात नहीं अभिनव भाई, काश उस दिन आप भी ओमनी लेके चले जाते, तो आज अमेरिका जाने की नौबत ना आती। एटलीस्ट रात में ओमनी लेकर तो बाहर जाना नहीं पड़ता मुझे लड़की देखने के लिए। देखो फिर पैसा फ्लेक्स कर रहा है, कह देगा मेरे पास तो ऑडी BMW है। लेकिन अभिनव भाई काश आपके पास भी ओमनी होती, तो उस दिन आप ओमनी यूज कर लेते, तो आज आपको अमेरिका ना जाना पड़ता। अमेरिका कहाँ जाना पड़ रहा है ऐसे, इसे कौन भेजेगा, मैं कौन वीज़ा देगा इसको? ये भी दिक्कत की बात है, नहीं पैसा है ना, क्या पता पैसे अरे से कर कुछ नहीं ले होता, कोई जुगाड़। अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता पैसे से। होगी भी कैसे, तुम ओमनी में उम्र फिट निकल कहाँ जाएगी, वेज होगे। नॉन वेज का डिबेट ना खत्म होगा। हेलो रूपम, कैसे हो भाई? होगी भी कैसे, ओमनी में फिट कहाँ होंगे? दिव्यम भाई आप ओमनी में फिट नहीं होते हो क्या? हो जाता हूँ वेजी भाई। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसा लेफ्ट राइट कर ही घुसना पड़ता। अरे नहीं नहीं, सीधा आ जाता हूँ यार वेजी भाई, वो अरे थोड़ा हाइट पीछे की डिक्की वजह से से घुसते दिक्कत हो क्या? आती है। अरे वो सड़े मतलब थॉमस टेसन लिख रहा है, शक्ल देख के भगा देगा जब वीजा लेने जाएगा। कह रहा, अभिनव कह रहा है मेरे पास तो वीज़ा ऑलरेडी है। अरे जिंदगी भर थोड़ी होगा रहेगा वो। हाँ, पापा के नाम पे वीजा ले लिया, अब एटीट्यूड दे रहा है। हाँ वो तो ख़त्म हो गया आपका वीज़ा, जब वापस अप्लाई करोगे तब नहीं मिलेगा। और मुझे तो लग रहा है आप एयरपोर्ट जाओगे तो वीजा पुलिस वाले ना, अरे बिट दे रहा, वापस जाना से ओमनी में। 2 पैसे में दिलाऊं US का वीज़ा? हाँ वही 2 पैसे वाले लोग ना जिनसे मेंबरशिप नहीं ली जाती है। कौन नहीं है? बड़ी बातें चोदने से कहा बच्चे होते, प्रीमो के आज 15-20 होते।
अभिनव भाई टारगेट कर रहे हैं काफी सारे लोगों को एक साथ वेजी भाई। काफी सारे लोगों को अभिनव भाई ने एक साथ टारगेट करा है। अरे अरे अभिनव भाई गाली क्यों दे रहे हो? वेजी भाई नहीं है तो गाली दे रहे हो चैट में, सो टॉक्सिक। डू इट अगेन। भाई रिमूव भाई आपको नहीं बोला, गुस्सा मत करो आप भी ऐसे गाली दे दो हंस दूंगा मैं। अभिनव भाई ने टाइम आउट मारा तो उसके लिए आई कांट डू अ शिट। एक सेकंड रुकना भाइयों, अभी चैट पढ़ता हूँ। अगर अभिनव भाई ने बदतमीजी करी मेरे लिए तो अकेले बोलूंगा तो पेला जाऊंगा। अभिनव गॉड बुलेट लाइक अ बोल। रहने दो अभिनव भाई, अकेले यू वांट टू सी अ बोल, फक यू। ये बंदा कितना फेंकता है भाई। भाई प्लीज मुझे रख लो, नो गिव प्लीज भाई प्लीज ना, लड़ा रही बहुत भयंकर। अरे छोड़ो अभिनव भाई, छोड़ो यार, जो बोल रहा है छोड़ो ना। आपके इतना सीरियस ले गए, हंसी मजाक ही तो था। लेट देम से। थॉमस भाई फ्लेक्स करने के लिए होना भी तो चाहिए, उसके पास है तो वो कर रहा है। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? लीव करो भाइयों, लीव करो, इस बात को लीव करो। उस पे है, वो फ्लेक्स कर रहा है। वो ही ना, पता नहीं क्यों मुझे टारगेट कर रहा है। भाई तेरा नाम तो लिया ही नहीं, लेकिन उसने कहाँ लिखा थॉमस चैसी, नहीं है तो बताओ। वॉच पार्टी चल रही है, वॉच पार्टी की तरह लो, एक दूसरे से लड़ो मत। थॉमस भाई छोड़ो, आप भी छोड़ो, अभिनव भाई आप भी छोड़ो, लेट इट बी। आप गेम पे ध्यान दो, गेम कितना बढ़िया चल रहा है। इतने इंटेंस मैचेस जा रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हो। वैज भाई को बोल देना केएफसी से। रोहित भाई आराम से आओ, ये वाला मैच जी ये हार जाएगी जेन जी, फिर आप आना। वैसे भी हारने वाले मैच तो आप देख ही कहाँ रहे हो, आप तो चले जाते हो जिस मैच में जेन जी हारने लगती है। भाई मैंने फ्यूचर देख लिया है ब्रो, 3 ठीक है भाई। हेलो। Way, and then all आगे of a हो जी sudden, भाई। like you talked about earlier, Vic, like it's that one moment, that one clutch, ऑर्डर सीधा लेने खड़ा का। right? That one सीधा clutch, खड़ा हो रहा था and then चैट में, all of a sudden, अभी सो all the momentum was gone for DRX. All their mentality seemed to just kind of leave them. Mako started kind of visibly having a hard time at his desk, and that completely shook them. And from there, it was just
you know, Gen.G has shown, again, tremendous mental resilience. That's my biggest takeaway from them so far, is that even though this is, you know what's fascinating to me is this is a team with players who have kind of a reputation of maybe being tiltable, but it hasn't shown so far this year. Yeah. Not too much. Actually, we did see like Texture start to like. Well, not cry, he is the one I'm talking about. He is a little bit tilted. Yeah. कैमरा ऐसा कैसा हो गया भाई? Especially when his ace was Blue हो गया. taken away from him, but not fully tilted yet. कौन सा कैमरा आपका वेजी भाई? Lenovo. Off cam. Lenovo का वो जो K300 करके आता वो? K है कि नहीं वो नहीं पता पर 300 जरूर है. And you know when you have a tiltable. ये वो 2-2.5 वाली रेंज में सारी चल रही है Logitech का C310 Lenovo का ये. The missing piece. And we were talking about Munchkin. Munchkin was absolutely crucial. What I really liked in the last map is he started using his util again. Yay! I was calling for it. Like sometimes I don't know what has gotten into some of our Viper players in Pacific this year, where they're just not willing to use their Viper's pit, and I'm not exactly sure. एक गाना सुन लेते मैच स्टार्ट उससे पहले कि हो गया स्टार्ट. नहीं माइंड पे एजेंट सिलेक्ट हो गया फोर्सेकन ने यूरो लिया है और मोनिएट ने रेज ये मोनिएट वो है क्या वन ट्रिक एजेंट Similar to what DRX does. मोने को तो रेज ही खेलेंगे लोग क्योंकि जिंग रेज खेलते हैं ना फिर. Yeah, exactly. True. So second duelist in the form of Monyet. Forsaken's you're a little bit different from Buzz here perhaps. But then again you got to look at that double initiator. भाई रेडी भाई मैच स्टार्ट होगा तब कुछ नहीं आएगा टेंशन मत लो. Go again. This is so funny. We were just talking about the difference between the regions and how मैच तो स्टार्ट होने दो. Sentinel heavy and clearly here at Pacific. We don't believe it. Especially PRX. Look at them. They're just like, I don't want to use Sentinel. I mean, they're the team that makes the most sense, really. Like, it's like they don't really play like they need one anyway, so whatever. All right, we are going to go into our fourth map, Bind, and we know this is going to be a hot one. Let's go back to our casters, Achilles and William. Thank you very much. Here we go. Bind for map number 4. We'll load up and see if PRX can rally back on yet another one of their map picks. Extend this or this is going to be Gen.G walking away with a 3-1 scoreline. Become champions here at kickoff. Oh, that would be one heck of a storyline. What a bounce back for Gen.G as a team and all these players individually. But my eyes for now Hello, Shrisha on bhai. this Bind is onto that PRX having just one controller. This is something that a lot of us talked about being such a weakness of the composition that Global Esports brought out at the very beginning of this tournament, saying how are you going to play this map with a singular controller of Brimstone? PRX says, well, we have our own ideas, this time putting in that Yoru alongside, so it's really feels like triple initiator alongside the Raze. ये single smoke कर. It's going to be a huge fight here for Showers तो double duelist खेलता है. Sure. Will find two something. Does take down the enemy Raze. TP's now coming in around the back with Meteor holding in that cyber cage. Able to find one, toggles over onto the cam. Dart going through, swings back out. 1v4. Fly now, drop something. Something ने clutch करा तो Veggiebuoy 5 gifted. Some damage into Munchkin's. Turns his sights back over to Showers, but Munchkin just re-aggro swings. Takes him down, Gen.G. Get the first pistol here on Bind. And it starts to feel like the fans feel that they're close, that we're close to bringing that title back to Korea, but PRX, they're no strangers to this. Had to play in front of a massive crowd last year against TRX at the Junction Stadium for the Pacific Finals, and they overcame it. And they reverse swept out. Yeah. But of course, Texture feeling it too. They're one step away. Just a sheriff for Davai. PRX का AGL forsaken करता है ऐसे but उतना ज़्यादा AGLing करते नहीं वो लोग अंधा पुशी करते हैं बस. Oh, yet. Greedy Orb wanting to get this. And TP coming in to try to bail him out. Munchkin just भाई Munchkin ने पीछे से पेल दिया TP वाले को. Good lord. Something trying to hold here for the Orb. Will be able to get Lakia. Nice reply fire from him. Does the winner get any prize money today? Mindfreak and Davai. VLAD.gg पे जाओ थोड़ा दो खुद भी रिसर्च करो भाई. Spots one, takes him down, saw the other. He's gonna re-swing aggressively, but Mindfreak does punish him for that. तो निकाल दे जो राउंड भी निकल सकता है. Can be recovered. Mindfreak है भाई. Texture not looking to try to guard things. वो तो कुछ भी सकता है. दो पे अभी भी क्लासिक घोस्ट है उन पे. Three people buying up from Gen.G. This could actually be a bit of trouble. And a lot more damage that PRX can do. Now, of course, that does mean Gen.G can also buy up to match in the next round.
But right now, Mindfreak has a good opportunity alongside something. Launching smoke. On the trap wire, something still making his way over. Oh. The setup, Texture looking to take those hopes and dreams away. Your Munchkin can also rotate over to try to grab that Bulldog. Here at the end of the round is something hearing. Toggle on the camera. It's a trigger there, and Meteor just swings. बढ़िया राउंड निकाल यार इन्होंने. Catching him in the back. 3 गोस्ट पे. They lose 2 players, but widely, you know, some of the weapons recovered here. अब ओहो ऑफ निकाल ली. 2-0 ना start ना for नहीं them निकाली. on bind. सेल कर दी. फट गई. लॉल. And a good read Sell too कर दी, that sell it कर could दी. be the split just to try to take away more weapons. You know, having that Cypher utility set up across all the different ways that they could get taken out. मार तो रहे हैं भाई Gen.G वाले, मार तो रहे हैं. Yeah, just keeping calm. They know they're close. You don't मतलब लिख रहा है want to textured overheat है. just yet on the 4th map. You haven't won it till the very end. Neural Theft nearly online already. Meteor just 1 charge off of that. It's Forsaken getting darted. शीर्षा भाई क्या करे यार, PRX तो खतरे में नजर आ रही है मुझे अब. We're seeing this a lot with the teams that are experimenting with Yoru. That again, with the sky gone, you know, not able to just constantly cycle through utility to check B long. You have to kind of invest 2 people there alongside the flashes. Now they've been pushed back. What? Okay, Meteor. Neural Theft now online. Big Hill goes rushing forward. Forsaken swinging out. Sprang does get quite a bit of connection there. मर गए 4 सेकंड भाई. But now, yeah, is getting flushed out. Quick turn on the flash. The Neural Theft going to be invested. Waiting to see if they can try to take him down. Karen able to find it in the end. Drops down on the top of Hookah. Monia. मोनिया भाई आखिरी बार कह रहा हूँ जाग जाओ वरना टीम डूब जाएगी पूरी. As Blast Pack sent forward. Volley out from something. Will be able to find the elimination, but now it's all on Monia. He takes Meteor so low. मेटेरियल हिल ले गया. Now the heals come in. You have to save. You don't have anything to work with. मुझे लग रहा है इन लोगों को एक प्लेयर का रिप्लेसमेंट तो मिल गया Veggiebuoy. And not the start that PaperX was looking Texture, welcome to PRX. Haven't shown it this year. They've been known to be the leaders of the Yoru compositions on Bind. Really brought it forth for the entire world to see last year. Just going to say tucked right alongside this trap wire. Doesn't want to give them any inkling in case they come. Veggiebuoy जो ये प्लेयर की बिटिंग होती है इनको पूरा पैसा मिलता है क्या? मतलब होता है ना ये खरीदते हैं जैसे मोनियट को नहीं कुछ अमाउंट में खरीदा होगा 1-2 नहीं वो सब टीम को जाता है. अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले खरीदा तो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद खरीदा एज ए फ्री एजेंट तो प्लेयर को सैलरी मिलती है खाली बस. और अगर कोई साइनिंग बोनस वगैरह अगर दे रहे हैं तो बात अलग है. Just the ghost in hand carries over one of those rifles, so it's only 1 weapon lost for the side of Gen.G. खाने में क्या है टोमेटो सूप यार, ये गलत स्पैम खा गया यार. बुलडॉग से कितने का मिला आपके यहाँ पे Veggiebuoy टोमेटो सूप? अरे इन दो स्ट्रीम पे नहीं बताऊंगा नहीं तो कोई चैट में बज लेगा कि अरे भाई खर्चा कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो. तो एक दक्ष भाई तो टॉन्ट मार के गए. व्हाट्सएप पे भेज दो. यप इन्हें मिल गया इनको. Somebody off guard there with that carryover rifle. Successfully backed away though is Gen.G. Now turning their sights once more over. कुछ हो ना हो मोनियट भाई की मूवमेंट अच्छी है. Catching a glimpse of Divide before he makes his way back over towards elbow. मूवमेंट ही करता हूँ किल लेना भूल जाता हूँ. Taking him out, spray as well, softening up Monia. बेचारा ना चाहते हुए भी लो हो जाता है ये तो अपने आप ही. ऐसा लग रहा है गोली इसको नहीं ढूंढ रही Veggiebuoy, ये गोली को ढूंढ रहा है. बेकार कर दिया. Meteor not getting caught by it, swings around, will finally be felled, but not before finding Mindfreak. Scoreline continuing to build up for him. Forsaken trying to find something with the Sheriff in hand. Can't make it happen. It's now once again on to Monia. ये तो PRX का मैप पिक है. He was the one that saved. दिक्कत वहाँ पड़ रही है ना, लेकिन टेक्सचर तो मार लेता है लेकिन अब. So far, obviously, you know, 2 rounds with some iffy purchases on the side of PaperX, but what we're really seeing here is Gen.G aware. मोनिया भाई आप ओमन एस्ट्राई खेलो, उस पे ही मारते हो आप. With these Yoru defaults, it's a Yoru on B, trying to gain इनको ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मुझे लग रहा है दूसरे एजेंट पे. Just to throw a bit of a curveball, but oftentimes you're going to need some other support. So the Fade is there with him. They try to pressure it. They try to push it back into the site as fast as possible. टेक्सचर भाई मत जाओ फालतू में आप मार मोड़ दो. Meteor's ready for it. He's watching for that teleport, for that showers control, so he's not giving it up for free. It's a strong default from Gen.G, and quite frankly, one that PaperX खाता तो वैसे 4 सेकंड भाई का भी नहीं खेला. Yeah, Meteor's so
वो तो IGL भी है ना. So far here in this map, the movement there, dodging out on the thrash into the cyber cage, being able to trade one before getting taken down. Dangerous signs for PRX, which is why we see the timeout again being forced out very early on. Yeah, and you're not even on the attacking side right now, so you can't even just say we're going to rush one site anymore. That's not going to work. जिंग की कमी मत पूरी कर, थोड़ा तो कर ले यार. Could rush out of one site. We have seen that before for PRX. अपनी कमी को हमें महसूस मत catch them off guard, but I just feel like this map right now, Gen.G is ready for it. And the thing is Gen.G showed one iteration of their bind yesterday against DRX, who also was running a Euro composition. So PRX, they, not much time, but they had some data to go off of. And this time, Gen.G is just saying, let's try to get a read on PRX first. So let them make the first move. They're going to be antsy for it, and they would have identified that absolutely. PRX तो गए, लेकिन लाइक करना मत भूलना. लाइक कर दो सब लोग. We'll see what the call is going to be here. ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, दोनों टीम क्वालिफाई तो हो ही गई मैड्रिड के लिए. सही बात है ना दिव्यम भाई. हाँ वही. दोनों टीम क्वालिफाइड है भाई, क्या ही फर्क पड़ता है. Even being down in the series and having Gen.G be at match point, Something's impact has been impeccable. Yes. Tied for top fragging alongside Karon, both of them dropping 50 kills so far in the series. They're 16 and 5 in first kills, first deaths. Jeez. The start of the value here, something that's been amazing. But Forsaken now trying to get it first kill of his own. Does so, but now something pushing forward, trying to take that deep, hard angle outside of B. Just gets punished. Yeah, and he just thinks because of the hard push that they're going to be holding further back away from Fountain, but Meteor's just up close. मैं तो बस एक ही प्लेयर को देखना चाह रहा हूँ. This is how it feels. To be scoped in and instantly done. ये राउंड बेचारे मोनेट भाई मारने की कोशिश भी करते तो ये माइंड फ्रीक ने 3 मार दिए. बताओ. कोई तरीका है जी भाई. मिला मोने को मिला. एंड वाला. Able to bail him out, but yet another round loss keeps them alive, gets them on the board. It's great to see Mindfreak performing as he has been the entire kickoff, because he's had some ups and downs throughout his career, obviously very storied alongside the rest of the PRX squad. But when he's at his peak, he's so clean with it. Just the comparisons and the stories we're getting just from this finals alone, right? The controllers, Mindfreak and Karon, you mentioned it. Obviously, there's आगे में आप जीतेंगे PRX. something in Karon. Goblin भाई रहने दो आप. Of course, Texture really trying to continue to be the top of the pack. अरे वो किधर जाता है रे, अब उसकी अल्ट भी है. कर दिया अल्ट उसने. ओह नाइस यार. प्लीज मार देना यार, नहीं तो बहुत भारी. नाइस दवाई. ओह पर अभी भी इसे रिस्की लग रहा है मुझे तो. अरे माइंड फ्रीक की तरह. अरे माइंड फ्रीक बढ़िया निकल गया. They should know that he's trapped somewhere in lamps. He saw a little bit more info coming out from that बहुत बढ़िया निकल गया माइंड फ्रीक. Not going for the teleported play here. Is Mind Freak going to be creeping all the way around over towards short? दिव्यम भाई आप फुरसेकन का वैंडल स्प्रे देखोगे ना, आपको लगेगा कल से मैं भी स्प्रे करने लगूंगा. इतना क्रेजी स्प्रे करता है वो वैंडल से. माइंड फ्रीक टर्न ऑन हो गया भाई. माइंड फ्रीक की किसी ने खुजली कर दी पीछे से. एक सेकंड रुको. ओहो माइंड फ्रीक तो चालू हो गया भाई. माइंड फ्रीक को पता लग गया है कि मोनिया भाई का कमी करनी पड़ेगी पूरी किसी को तो. It's not going to be your crazy duelists that are putting the round wins on the board. Someone's got to do it, and Mindfreak's here to answer the call. Barely bringing them back into this. Forsaken committing to that spray was good, and also the dimensional drift just to make sure they can't commit the plant. Then the orbital strike, and then the flash as well to try to trap some of them with that blinded vision within that brimstone ultimate. I like the entire sequence of it, and it eventually leads to that round win. सही बोला Goblin भाई. So desperately needed. Op still, of course. तुम आ गए हो, नूर आ गया है. Locked out. Lockya actually does swing. Marked by in there. Aaron just holding back to see if there's going to be another aggro push out from something with his op. But that does seem to be the adjustment that they've made since that timeout. Not pushing entirely out, not full W gaming, but they will force the hand a little bit. Make sure that these default setups for Gen.G can't stay the way they are.
getting the read that Gen.G's playing this offense like a defense. The classic Forsaken Yoru. Blown out, jump peek. Not going to be spotting anything here. So for now, PRX still trying to really get a read on what Gen.G's movement's going to look like. This does send Forsaken back over towards this A site. So 3-man stack there, but the operator still posted up from something. They have to be ready for this. There's the dog to lead the way. 1 HP बच गया यार. Yeah, he does get shot through it. Manages to stay alive and lock it. I know exactly. Throw those heals out. Now another neural theft. Second one for Meteor so far here in the game. Coming down. 30 seconds It's going to be a little bit of a bait and switch attempt here with the teleporters, but yet still hovering nearby. Shots Need करना भाई यार मोनी. Comes back in towards lamps. Monyet now stuck in lamps. पहले ही need करना था. TP sound आती है यार. Shot fly. It's actually Monyet finding a kill. Count on going to be taken down. Extra quick on that reply. Texture 1 HP था. Heal ले लिया. Round में निकाल दिया पूरा. Kills come in. The cleanup will be there. 4 members still standing. Gen.G answering back with a fifth round win. That's a really well read round. A quick adjustment to PRX. As soon as PRX starts to pressure the initial default just a bit, Gen.G just cuts all audio, doesn't invest more util, creeps up to the starting line, which this time is a little bit further behind, but it's going to be that entry point into B long. They want to suss out this operator. They get it correctly, and that's what you get when you're not using something like the Razer or the Jet. You just have no escape. And Munchkin following those Seekers, leading him to victory. Wide peek from Texture, just looking to get swung out by hearing a decent amount of noise. Wisely decides to creep back. Just has a stinger, so that range not going to be doing him too many favors. But Forsaken, what a shot! मोने पे ult करो round निकालो. Yeah, finding Texture's head, taking him down, eats a bit of damage here. Spamming through the cyber cage, trying to find the shot. Lockett will be able to get Ulti something. मोने. Ah, nice. Forsaken, still just trying to come up with the goods. Can't Nice. do it, but That's the round. That's the round. Deliver alongside Monyet with a showstopper delivery. They will shut down the Goblin भाई कहीं नहीं जाना जब तक जीतेंगे नहीं PRX वाले. It's an excellent setup from both Forsaken and Divide. Divide, of course, just backing out, holding the cross from elbow. But it's Forsaken who not only gets the first shot, but sends that fake gate crash early on. It keeps him tied up, buys all the time for the backup to come in the form of a showstopper. Great re-entry from Monyet. Yeah. Beautiful. Finally getting a little bit of that shining moment as that raise. He's really been thrown into a couple islands here by PRX. सही बोला. Footing, and it's a push out from PRX. सही बोला. Mosh pit over the top, right off the rip here. As Forsaken goes rushing forward, managing to find one, but the trade back is even better for Gen.G, finding 2 kills. Trailblazer cleared out the volley to try to slow, but Meteor looking forward into showers. As soon as Mind Freak realizes it, he's already dead. One player's alive. Here for Gen.G. Prowler scouting one, and Monyet just bouncing forward. The boot bomb will kill off Texture. Meteor finding 3. Again, just 2 charges away from yet another neural theft as Gen.G locking 6 rounds on this attacking half. Now, again, looking at the competition, as crazy as single controller does sound for either side of Bind, you gotta imagine that all the projectiles they can throw on and execute benefits PRX a little bit more for the attacking side. But all things considered, it does feel like PRX is just not used to losing out on these trades. Yeah, they push out, they lose 2 people to 1. You've already invested a molly, you have to use a second one just to buy time, but after that, you have nothing to delay. Gen.G does not respect it. They just push through from both showers and A short. I must wait a moment. Quick clear on the cam. Dart not found, but looks like Gen.G not looking to waste any time. Teleporter going to be instantly taken here. So Meteor will be watching the back line. TP actually back over towards the defender spawn. Top flash going to be sent out. Texture turned just enough to be able to regain his vision. He shuts it down. ult आ गई अब. Buying something again. Pushing forward, but ultimately may have to just call for the save. You know what's crazy is Texture anti-flashes away from that by looking down because it's the Euroflash bounced up on the pop flash and then flicks right back up. You could have just stopped the sentence after saying Texture. Yes, he is crazy. You are correct. Sometimes a little long-winded on my commentary. Oh, just impressive, this guy. Again, I can't help but emphasize the point that tournament of his life. And he's Hello, always been भाई, great. हम support कर रहे हैं PRX On the hunt attempt will be staved off. Actually, just making sure there's no attempts at some ninja diffusery going on here.
make his way back out to safety here. Damn near flawless round for Gen.G. Now 7 rounds on this attack side. And I agree with you. रेड्डी भाई आपका सेंटेंस फॉर्मेशन मेरे को समझ ही नहीं आया ऊपर क्या लिखा है आपने. Bro whom you are supporting. हिंदी लिख दो ना भाई, मेरे को हिंदी समझ जाती है. उल्टी सीधी इंग्लिश लिख रहे हो, उससे बड़े हिंदी लिख दो. Yeah, and I think that's right here, right now. A little bit left to the ground and it's right back Texture up. full power भाई. Not surprised about this timeout. You want to get these last 2 rounds. And obviously, I mean, the 7-5 score line, is the halfway point as close as you can get without being a 50-50. But really, more than that, as you mentioned, you need something to hold your hope on. And it can't just be, we absolutely have to win the pistol. You need a little bit more than that, especially with a risky composition like this. Just the one brimstone. I mean, that gets so tricky on when and where you use those smokes, because all 3 of those sky smokes have to find value. Plenty to be said here from Alex. His last few seconds. Veggiebuoy मैं बाहर जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ, ठीक है? Okay. Bye bye. Okay. See what kind of impact he's going to be able to have and whether or not they can try to rescue the remainder of this half. Like you said, 7-5. Given the composition, the setup here from PRX, I'd say those are pretty decent odds for them. They need to be able to get these last 2. Showstopper pit available on the side of Gen.G. Another dimensional drift here for Forsaken. भूख लग रही है यार, और कुछ खाना भी पड़ेगा यार. ये सूप से तो नहीं होगा. I feel like sure you get some tricky kills now and then already in this match. He's done it before on अब अच्छा नहीं लग रहा, ठंडा हो गया ना. Outside of the kills themselves, hasn't been that easy to find amazing value for space as Gen.G's been fairly prepared for it. Gate crash back over. Forsaken joining in. Now they hear that Trailblazer coming, and that's going to be the rotation as well. Mindfreak looks to make his way over to the side. Texture just disrespecting the poison damage since the Showstopper out at the fake, however. Now is kind of going to be stuck within that. मुझे लग रहा है Gen.G निकाल देगी अभी. Push out with Vi, able to find the kill. Gen.G जीतेगी भाई अब यहाँ से तो. मुश्किल है. Texture वो full form में है भाई. Seeker rushes in. Looks to just slow him up. Forsaken jumping the corner, however, catching Lakia with util in hand. Takes him down with the shorty. Draws down that Phantom. Finds another kill. Meteor now gone. Aaron forced to the other side. The tap onto the spike. The swing out. Munchkin! But something will be able to clean him up. खाने में क्या है? Wow, Munchkin with the clad too, and then something. अगर ये मैप provides jet, jet गई तो next मैप तो आसानी सी PRX jet जाएगी. ठीक है रेडी भाई. A risky endeavor. अक्षय भाई Gen.G जीत जाएगी यार. Gen.G में लग रहा है मुझे ले जाएगी. Texture trying to find the value here in that Odin spamming through lab. Good covering fire from Devi. सही बोला. Something with those 2 kills in the back end. Whew. Bailing them out when it looked like it was. बोलो भाई बोलो Gen.G जीतेगी. हाँ लग तो मुझे वही रहा Gen.G जीतेगी यहाँ से. Breaks now up to 4. Still have that dimensional drift as well. FNC का next match कब है? अभी decide नहीं हुआ है. देखो भाई निकाल दिया 4-8. 5 हाँ 4-8. Well, speaking of 4s, I believe that's the 4th0 step from Meteor. हेलो प्रतीक भाई. Spot. Meteor की champion से चमक. He swings around the box. Meteor now. Ace. Maybe looking for an ace. Some of the crowd start chanting it. Forsaken sprinting around, trying to identify the positions here of the Gen.G members. Odin in hand, just wants to start slow swinging onto the box. They double face him. Karen will be able to take him down. No ace to be found, but a 4K and a flawless round. I'm sure Meteor is more than happy with that. भाई मेरी हिंदी नहीं समझ है ना. 8-4 in the half. Absolutely nasty double kill for Meteor to open that Gen.G up. को नहीं सपोर्ट करना. पर जीत तो Gen.G रही ना, मेरे सपोर्ट से थोड़ी कुछ होता है. It could have worked in their favor to try to bait out the swing. They had the double. They were already spread out. But Meteor just too quick. I mean, he's not a stranger to having to swing First out match with किसने these जीता? impossible rounds, impossible fights. He is so used to fighting Third these match, 1v1 fourth match चल रहा है. 2-1 Gen.G जीत रही है. He's frowning and smiling simultaneously. Oh no, some of the PRX fans perhaps kind of staring down the end of this match. It's not over just yet, but it is looking tough. And PRX, here's the thing, is that forget, trying to defend the title of Pacific Kings, Champions of Pacific, but they've been here so many times, so close to try to lead and close out a match.
पता नहीं लोग चीटिंग कर रहे हैं इस बार. To do it as soon as they face an opponent that they thought they should beat, and they were challenged, they crumbled in the last leg of it. Well, it all needs to begin right here. A monstrous run back ahead of them if they want to extend this into that fifth and final map of Breeze. For now, I mean, it's just been such a dominant showing. I mean, 12 rounds played, 5 deaths. कि अभी तक पायरेक्सिया हो रहा. हिंदी में लिखो भाई ये पायरेक्सिया क्या है भाई? Impeccable for him. Yeah, such a clean game from Meteor. Has that Cypher, and what a pick against this composition and this team of PRX. Another good example of how to just turn a crazy cracked duelist aimer into another stable role here. See what PRX want to do ultimately for now. But a very fanned out Cypher util set up here on the A site, but Meteor still going to be playing over towards B. Seems like they're very much expecting PRX are going to end up towards the site. तो बुखार के लिए एक वर्ड है फीवर. फीवर नहीं यूज हो रहा था आपसे. ज़्यादा वो दिखा रहे हो अपना वोकैब दिखा रहे हो ज़्यादा. PRX start gathering up, getting ready to attack the A site. Yeah, I mean the A site, even the spy cam and everything set up for a retake. You see that deep tripwire. They just want to know if backside is taken or not. Munchkin will try to get some shots in. He does. Actually, a lot. Oh, spot spawn yet up on top of the box. Still wants to try to send down that bite. He's greeting for it. मोने भाई तुम छोड़ दो भाई. Munchkin able to win out. Goes for the reload. इधर मुझे embarrassment सहनी पड़ेगी अगर हार गए ना PRX मोने भाई. Damage already out onto something. Texture now swinging around from behind. Mind Freak. Tucked away, backing away from that smoke for the time being. Mind Freak पर लाइनअप अच्छा मॉली ही नहीं है. लाइनअप कहाँ से करेंगे? चलो हो गया ये गेम तो. Swinging out to the side. Munchkin now coming up with another one, finishing the job that he started. Comes up with a kill. Meteor, however, getting distracted. The nice little tug of war coming through. His texture falls. Lakia, last one standing by, rushing forward, and he gets it. The half already finished, but either way, he had all the time in the world. Lakia, the last one standing, as Gen.G move up to 9. It's such a good setup from Gen.G. Abusing the fact that Cypher, obviously global utility, sets it up in A, but not to delay. Even the toxic screen, it's not meant to delay, it's just meant to make sure that the retake is easier. I mean, they get the free gift of the early kill onto Manyen. But they have the trip set up, the spy cam set up to make sure that PRX can't find a good post-plant position. And Munchkin feels good about that. What a read, what a call from the IGL. And a good first kill. सही में ये बहुत बढ़िया कॉल था. ये बहुत अच्छा राउंड था ये Gen.G का. IGL यार मान गए भाई. Oh boy. Caron around the corner. There's the push in. There's one. There's basically the collab with the judge. The long range support from the Guardian as well. Just looking to shut them out of this one. Tucks away. The Prowler coming through. Munchkin. He'll get himself a second. Caron gets the third. A flawless anti-eco. This Gen.G now up to double digits. 3 rounds away from becoming the kings of the kickoff. You play enough games on stage, and even a cracked gamer like Caron's going to be using the judge as well. Getting the full Valorant experience. Playing like a cracked aimer, swinging out on those wide swings, sometimes playing like a Rat King, and he'll do it all. I mean, what do you do as PRX? You don't even have many chances here. Just finally the buy run, and you're already down 6 rounds. Not many chances and no timeouts as well to work with. All of them having to be burned within those first 10 rounds. Oh no. Push out, the turn for the flash, but 2 kills now, 3 gonna be found. Some good answer back here, something end of I, find one apiece of I, now finding himself a second, but it's another blink and you miss it round. चलो भाई मैं रेडी हो रहा हूँ अपने इमॉर्टल लॉबी के लिए. वार्म अप कर लूँ. Continue to strive towards the throne. It's just as if that they have switched souls. This is how PRX used to play. Absolute disrespect, knowing that you can win every duel. Look at just how competent Texture is. Oh, bhai, Texture. Oh. This man just does not lose this week. It's like he's constantly playing with neural theft. Just knows every single angle they're going to peek from. I mean, this could be the start to just one heck of an insane year for Texture. Prowler in, but Snakebite to delay. Paint shells. Where those ones went.
Full flash though onto Munchkin. Drop in, Lakia lurking. Outside Garden, managing to find one, something with the Guardian. However, able to get texture, but now Meteor arrives. Forsaken, no HP. Charon. Gonna shut it down. 7 health remaining. The rookie versus the bat, and the rookie stands tall. The odds were stacked against him. Forsaken needed that one. Gen.G now at series point. This squad is building something insane. I mean, यार Monye, you cannot bottom frag constantly while playing Raze on every map. It is going to affect your team in some way. All going the full distance. Not every game यार. I don't think we क्या can say हर that this is game just a फिर kickoff. हारेगी ना I टीम think भाई. they are building towards an absolute monstrous year. And if they get the three Sentinels का championship मैच कब points है right वो off the देखते हैं bat, अभी. going to Masters of Madrid at a higher seed. One step forward, one step back. Things equalized. Forsaken gone. It's a lot of firepower taken away from the team. Oh yeah, monster on the loose. Thrash will lead the charge. Texture hanging back, trying to avoid detection. Orbital strike sent in from Karen, just delaying. Monyet up in front of it. Being decayed down lower and lower. Lamps the target here as Texture tries to make his way out the safety. He barely does. Flash from Lakia. The drag across. Finds one. Munchkin swinging the corner. Finds another. Mind Freak and Monyet fight back. अभी इसमें भी एक मार के जाएगा देखा Texture. The TP is going to be used. Charon, the classic in hand. Surely not like this. He finds one. What in the world? 3 HP separating the 2 remaining players. A paint shell in the hands चक्कू of घुमा ले. the Boombot here for Texture. Planted. The plant comes down. Texture playing it patiently. But we can see Monyet tucking and swinging around through the elbow. And so far, Texture not getting a sense of this at all. But now he will turn his sights over. He spots him. He's got it done. 13-4. The players already on their feet. Texture will get the defuse as arrests start the celebrations. Gen.G, they have controlled chaos incarnate. They have put a Godlike gameplay भाई Gen.G मान गए भाई. They are the kings of the Pacific kickoff. Every single player on this team looking for redemption. See, and they help Monye. lead Charon, the rookie, Monye. to a royal उसमें भी एक kill कमी in है. the VCT Pacific. Monye. This is a इसमें भी नीचे ही tournament आएगा. run to go down in the history of VCT. ये कोई इंडियन प्लेयर होता ना बेचारे को ट्वीट कर जाने पड़ते 10-15-20 Monye जैसे को जस्टिफिकेशन देने के लिए क्यों नहीं खेल पाया. In the opening debut season of VCT Pacific, the GG's. 4-0 start into the cataclysmic fall to obscurity. They came into this season with many a question mark surrounding the roster, the decision making, the decision to pick up a player who had never even had the opportunity to prove himself in any capacity with Charon. And now he himself, this young gun, this rookie, in his debut on any stage, is a royal roader. Fist bumps abound between the two squads. Obviously, for PRX, we still will be seeing more of them. फाइनल कर सेगा PRX का फाइनल में NH हो जाता है क्या? Gen.G as their cohorts from VCT Pacific, but with a lot more pressure and a lot more doubt cast on them, likely than ever before. Absolutely astounding here from Gen.G, and an incredibly well-deserved win. As the home crowd continues to go electric for them, but that will just about do it for myself here. It's been an absolute pleasure to guide you guys through these. अरे क्वालिफाइड ही तो क्या होगा एज अ सीड 1 क्वालिफाई करते हैं ना. To hand it over to my co-caster William, who's getting ready to take to the stage and talk to these players about this absolutely incredible feat of a victory that they have managed to pull off. Because this was not only just confident but absolutely dominant from the side of Gen.G. रोहित भाई मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा आपसे. अब जिंग भी होता तो क्या कर लेगा, वो होता तो पता लगता आपको. Throughout the whole team putting up figures, but now I will pass it over to William. Take it away. Kickoff champions Gen.G. 킥오프 챔피언 Gen.G를 위해서 큰 박수 부탁드립니다.
जिंग आएगा मास्टर्स नहीं आएगा शायद. First up, we've got the rookie, Karon, holding the mic, ready, looking excited. We gotta hear, how does it feel to be a royal roader here in the VCT? 네, 먼저 카론 선수 벌써 마이크를 잡고 계신데요. 네. 와, 이번에 처음에 대회로 나오시면서 이제 로열 로더로서 젠지 선배 형님들과 함께 우승을 차지하셨는데 지금 기분이 어떠신가요? 기분이 일단 매우 좋습니다. 너무 침착하신 거 아니세요? 원래 지금 좀 너무 들뜨셔가지고. 네. 알겠습니다. यार कुछ खाना पड़ेगा पहले एनर्जी नहीं अभी. क्या खाऊं मैं सोच रहा हूँ रेस्ट ले लूँ 6 साढ़े 6 बजे वापस कंटिन्यू करेंगे स्ट्रीम में यहीं से. हाँ रोहित भाई सही बोला. जेनजी की टीम अलग ही है. जिंग भी होता तो कुछ नहीं कर पाता. बात तो सही बोली आप. जी जेनजी वेल प्लेड यार. I didn't know what to do, and all my teammates just said, just please shoot your damn gun. And then I think I finally get it now. I think I know why they were saying that. I think I'm catching on to playing at the pro level. Well, let's hear from the other players as well. Next, it's Lakia. We'd love to hear. 네. 7:30 वापस 7:30 तो बहुत लेट हो जाएगा मेरे हिसाब से. 제가 여기까지 오면서 도와준 형이 이제 좀 부탁한 게 있는데, 샤라우트 인파 많이 이제 인파 형들 저를 도와주신 형이거든요. 그러니까 제가 여기에 아마추어부터 여기까지 오는 데까지의 도와준 형이어서 정말 너무 고마워가지고 얘기를 이걸 하고 싶었습니다. 네네. 너무 훌륭하십니다. 또 이것까지 기억해 주시고. So Karen just wanted to say one thing to a man who's been helping him all the way up to grow into a pro player, and it's Inpa. Some of you who've been following VCT Korea for a long time might remember him. He played in a couple teams in the very beginning, was on the cast a couple times on the Korean side, but a shout out to Inpa as well. Now let's hear from Lakia, a man who is no stranger to the international stage, but it has been a long time coming. Let's hear his thoughts. 라키아 선수, 물론 마드리드 행은 이제 어제 확정이 되었지만 이제 우승까지 차지하면서 다시 한번 정말 오랜만에 정상에 오르는 이 기분이 어떠신가요? 3년 만이네요. 이게 진짜 딱 3년 만인데 일단 너무나도 잘한다는 선수들과 같이 해서 이렇게 우승을 해서 너무나 기쁘고요. 그리고 이 퍼시픽에서 저희가 1등을 했다는 것에 대해서 너무나 감격스럽고, 그리고 진짜 지금까지 응원해 주셨던 팬분들에게 या फिर ये स्ट्रीम एंड करके 7:30 बजे नई स्ट्रीम चालू करूं 행복합니다. with new thumbnail and new title. So it's been 3 years already, but I'm just happy that I could play alongside teammates that have always been so famous for being great players here in the VCT. And really, I'm just touched that we're able to come all the way to the top here at VCT Pacific. That was Lakia, of course, part of this Gen.G squad that just won kickoff. And next, we want to hear from the duelist Texture. Now, this is a man, you heard it on the desk, they've been saying he's got to be one of the best duelists, one of the best. Now he's proven that he is the best duelist here in VCT Pacific. I want to know, Texture, do you have anything to tell all the other duelists out in the world? 텍스처 선수 물론 한국 내에서는 항상 너무나 훌륭한 선수. रियल टेक्सचर भाई बेस्ट तो अभी तो है. 드디어 이제 퍼시픽에서 만나 버리가. 내가 퍼시픽 최고다. 그렇다면 마드리드를 향해서 전 세계에 있는 타격대 선수들을 향해서 혹시 해주실 말씀이 있으신가요? 기다리세요. 그냥 딱 기다리고만 있으면 되나요? 알겠습니다. Just wait right there. I'll be right there. All right. एंडी कर रहा हूँ एंडी कर रहा हूँ. The confidence. 텍스처 선수에게 한 마디만 더 묻겠습니다. 텍스처 선수도 사실 뭐 정상급 선수다 이런 얘기가 많았지만 드디어 이렇게 많은 분들 앞에서 증명할 수 있는 지금의 소감은 어떠신가요? पैसिफिक कंप्लीट हो गया. हाँ पैसिफिक का हो गया अभी. 한 4년째죠. 4년째 동안 이제 우승이라는 것도 생각도 못 해보고 되게 힘들었었거든요. 근데 그래도 저는 이 게임이 너무 좋아서 계속 열심히 했었다가 ओ भाई रो दिया टेक्सचर रो दिया भाई. ये that's my boy. 뭔가
4년 동안 해왔던 게 좀 이제 보상받은 느낌 자잘한데? 아유, 네, 정말 그래서 그냥 되게 기분이 좋습니다. 아, 네, 너무 축하드립니다. 정말 고생이 많았던 텍스처 선수인 것 같습니다. So, Texture just wanted to say, you know, it's been 4 long years. 4 years I couldn't even dream about being a champion. And to be up here finally, you know, as a title holder, as the winners of Pacific Kickoff, I just can't believe it, and I just feel like all that time and hard work paid off, because for me, I've just been playing in VCT because I really love the game. Well, now all that love and passion paying off for Texture, heading to Masters Madrid, of course, as that higher seed here from VCT Pacific. Next, as we give a little bit of time for Texture, we're going to hear from Munchkin, the IGL. Now, Munchkin, I have a hard-pointed question for you. You said in the Emerge video that you wanted to prove that the direction you want to take a team in is the correct way, that your vision was the correct way. Do you feel that that was proven enough today and this past week? 네, 이번 대회 준비하면서 그 이머지 비디오에서 영상에서 먼치킨 선수가 나는 증명하고 싶다. 내가 알고 있는 방향, 내가 믿고 있는 방향과 비전이 맞는 비전이다. 증명하고 싶다고 하셨었는데 이번 대회로 좀 증명이 됐다고 생각하시나요? 일단 चलो स्ट्रीम एंड करो, ठीक है? अगली स्ट्रीम में मिलेंगे. 정말 이겼다고 생각하진 않고요. 제 방향 माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस तू ही छाँव तू ही धूप रंगों के साथ रूप तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे मैं कलम तोड़ दूं और तू स्याही में बसा रहे हंसा रहे जमाने को खुद से परेशान वो पढ़ती थी किताबें मैं पढ़ता हूँ इंसान भी क्या चीज़ है एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है इंसान भी क्या चीज़ है मैं कल गुजरा फिर उधर से तो याद आ गई चीज़ एक तेरा नंबर नहीं है You left the city and you're gone बात करने को है बस ये माइक्रोफोन वही कागज वही कलम लहजे सख्त दिल नरम बदबख्त बस करो उदासी हर तरफ झूठे तेरे भरम किस बात पे तू बरहम